NIDM Invertis University. We are grateful to our Chancellor, Dr. Umesh Gautam, who always encourages us for these kind of things. Sometimes, let me say, he says, must do it. We are very impressed, these kind of words used by him. And also your NIDM Executive Director, Bindal sir, he's even physically present all the time. It is his interest and commitment and his, tuning the career. This is what we are impressed of military people. So we will also learn something from him. Uh, so actually, the stress management, as Dr. Panda has already told that what kind of problems we are facing, and in addition to that, even our family members, they are also like present. Person is there in an enclosure. He cannot move out of that because he feels I will become unsafe, and he is basically. So I remember that when freedom fighting was going on with British period, our great leaders were imprisoned very often. 3 months they will be out, and then 6 months they were in. So through my father, I got the information that Pandit Jawaharlal Nehru, when he was imprisoned, he was using his time first of all to write the word discovery of India, and second important thing he was doing, which is very interesting, you may be knowing it, that he was writing letter to his daughter Indira. And finally, those letters were so many that it came in a book, and it was called पिता के पत्र पुत्री के नाम. और मुझको ये क्वेश्चन इसलिए ज्यादा याद है कि 8th क्लास में मैंने स्कॉलरशिप के लिए कंपटीशन दिया था, तो ये क्वेश्चन आया था और पूरी क्लास में मेरा ही सही हुआ था. क्योंकि ये किताब में नहीं था, मेरे फादर ने बताया था कि पंडित नेहरू ने जो लेटर लिखे थे वो पिता के पत्र पुत्री के नाम हिंदी के टाइटल से हुए थे. तो देखिए उन्होंने कैसे टाइम यूज किया. तो इस तरह का एटीट्यूड बनाना होगा. ये गांधी जी, नेहरू जी, जो भी लोग थे, बड़े लोग थे, ये घबराते नहीं थे जेल से. तो हमको भी इस टाइम में इवन एक गृहिणी को, एक बच्चे को ऐसा कुछ सोचना है दिमाग से कि ये टाइम भी यूज हो सकता है. तो घबराए नहीं और इसको भी मतलब पॉजिटिव वे में सोचें, मतलब कंस्ट्रक्टिव वे में सोचें. क्योंकि मेरी एक सेइंग है, मैं कभी कभी थॉट लिखता हूँ कि ऑल इज नॉट बैड अबाउट एनी बैड थिंग. पूरा कुछ बुरा हो ही नहीं सकता किसी भी चीज के साथ. तो उसमें जो अच्छा बचा है उसी को यूज करें. तो मेरे ख्याल में ऐसी बातें हमारे स्पीकर्स बताएंगे. हमारे आज के स्पीकर 2 हमारे यहाँ से हैं, दोनों अवधेश हैं, मतलब भगवान राम है, अवध के ईश भगवान राम ही हुए, लेकिन एक शर्मा है, एक कुमार है, राइट. लेकिन राम के ही अवतार हैं एक तरह से, और राम का मंदिर बनने जा रहा है. और आपके एनआईडीएम से प्रोफेसर ए के गुप्ता हैं, जो कि वेरी कंटिन्यूस स्पीकर, उनके बिना तो कोई वेबिनार शायद होता ही नहीं है. और दूसरे हमारे पंडा जी हैं, ये तो लेक्चर भी देते हैं, शुरुआत भी करते हैं, एंड भी करते हैं, मतलब ये तो एंकर हैं जैसे हमारे अवधेश जी हैं. और अवधेश जी तो मेरे बड़े सीजनड स्पीकर हो गए. मैं तो ये कहूंगा कि इनको मैं बाहर भेजा करूंगा, जो मुझ पर रिक्वेस्ट आएगी कि वी नीड ए स्पीकर, आई विल रिकमेंड हिज नेम. रियली टेकिंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट, working very hard, looking for all collaborations possible. really impressed by this fellow. And एक हमारे नए स्पीकर हैं, गेस्ट, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी से, जो कि डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स हैं ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में. जिंदल कई जगह है सर. मैं आपके नवीन जिंदल से पर्सनली मिल चुका हूँ एक बार फ्लाइट में. ही बात विद मी फॉर 2-3 आवर्स. तो उन्होंने हरियाणा वाले की बात मुझसे ज्यादा की थी. अच्छा. उस समय वही रहा, 3-4 साल हो गए. ही वाज देयर विद मी फॉर 2 आवर्स. फ्लाइट होगा हैदराबाद से. ही वाज नेक्स्ट टू मी. मैं तो एक्चुअली एग्जीक्यूटिव में नहीं था, लेकिन मैं प्रमोट हो गया था इकोनॉमी से एग्जीक्यूटिव में. तो मुझे उनके पास सीट मिल गई थी एग्जीक्यूटिव. तो मैंने कहा बड़ा यंग लड़का कैसे यहाँ बैठा है. तो मालूम हुआ कि जो जिंदल, नवीन जिंदल पर है. नवीन जिंदल, यस सर. तो लेकिन बहुत अच्छे से बात की, बस सो डाउन टू अर्थ. और मेरी यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा, अपने के बारे में बताया बहुत. लेकिन मैं काफी कुछ जान गया कि काफी. और आपका यूनिवर्सिटी का रैंकिंग भी अच्छा है, मैंने कई जगह देखा है. शायद आप NIRF में भी कहीं होंगे, आई एम नॉट श्योर क्या है अभी जो आया है, लेकिन इट्स वेरी गुड यूनिवर्सिटी. तो कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बताया था. तो आप भी स्पीकर हैं, और सो आई वुड लाइक दैट पार्टिसिपेंट्स टेक इंटरेस्ट एंड रियली गेट समथिंग, कि आप अपना ही नहीं सीखें, अपना सीख के दूसरों को बताएं. क्योंकि ऐसा टाइम है कि इसमें सभी को कन्विंस करने की जरूरत है. कुछ लोग वाकई डिप्रेशन में जा रहे हैं, डॉक्टर्स बता रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट बता रहे हैं कि लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है. तो हम लोग एजुकेटेड, हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम लोगों को कन्विंस करें कि ये समय भी गुजर जाएगा. हमेशा समय अच्छा नहीं रहता है. और मैं तो कहता हूँ यदि बुरा समय ना आए तो सही समय की पहचान कैसे होगी. यदि डार्क नहीं है तो यू डोंट नो व्हाट इज लाइट, बिकॉज इज ऑल द टाइम लाइट. आप पोल पे चले जाइए, पूरे टाइम दिन रहता है, आप परेशान हो जाएंगे वहां.
रात ही नहीं होती, तो रात दिन की वैल्यू ही तब है जब रात भी है। तो एक चेंज है, एक इंटरेस्ट है, तो उसी तरह से लिया जाए, जिसको कि लोग पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं। मैं कहता हूँ कि कहीं भी टोटल नेगेटिव होता ही नहीं है, यू हैव टू पिक द राइट थिंग्स। अच्छे में भी कुछ खराब होता है, उसको ड्रॉप करना है, और बुरे में भी कुछ अच्छा होता है, उसको एक्सेप्ट करना है। विद दिस वर्ड्स आई वांट टेक टाइम बिकॉज आई एम नॉट एक्सपर्ट। मैं, लेकिन मेरा ये है कि मैं कभी भी किताब से नहीं बोलता, आई स्पीक फ्रॉम माई लाइफ। I never prepare from Google or from book what my life is, because now I'm quite years I have passed on this planet, so I have a lot of collections of memories. So I always share those. I never share from Google. You can't find it like that anywhere, and that's what I enjoy. But these lecturers should have collected material from so many places and should have a very comprehensive lecture for you. Okay, thank you very much. Thank you, sir. Thank you, VC sir. Actually, hearing a speaker or inspirational personality like you is just like reading a book. So your entire life is just like a book. So with this word, I would like to thanks and invite our executive director. I would like to take his name with his permission. Executive Director Manoj Kumar Bindal sir. And I would like to tell the delegates and participants about a short intro of sir. Major General Manoj Kumar Bindal sir is presently the Executive Director, National Institute of Disaster Management. He was commissioned in 1985 into the Corps of Army Air Defense. He has held important command and staff assignments within an air defense regiment. He was General Officer commanding of a sensitive sub-area in the Northeast. He has also been posted as Deputy Director General in Directorate of Army Air Defense. Major General Manoj Kumar Bindal sir served as the Provost Marshal in the United Nations Mission in Mozambique. He has been the Director Center for United Nations Peacekeeping, CUNPK, New Delhi for 3 years. He was also the Secretary of the International Association of Peacekeeping Training Centers. I request Bindal sir to kindly deliver his inaugural address, please. Please, sir. Can you hear me, Dr. Avdhesh? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Quite Okay. clearly. Thank you, Dr. Avdhesh. It was lovely again meeting you and your complete team from Invertis University. I'm thankful to Chancellor Invertis University, Dr. Umesh Gautam, and I'm also thankful to Dr. Arya for gracing this occasion, and Dr. R.K. Shukla also, who's present here, for always giving the support required to the staff of Invertis, as well as motivation to NIDM staff who's collaborating with them on such an important issue. And this time we have two speakers, like you said, one from Invertis and one from Raigarh, Chhattisgarh, along with Dr. Ashish, Panda and Dr. Anil K Gupta. So it is going to be a very interesting session, because this topic has been spoken about in many forums in many different ways, and because it is important, not because it is an easy topic, not because it is this topic is a very, very important topic, and every one of us, including us, I'm saying, is suffering from this in some way or other, whether we are ready to acknowledge it or not. Everyone has got a different coping capacity, everyone has got a different reaction to it, the way they react to a certain stress situation and their mental health being. But everyone, we have seen high profile leaders committing suicide in some countries, a lot of people giving resignations from high profile appointments within India, IAS officers also in the Northeast we have seen. So there is a large amount of stress, and which is affecting the well-being of everyone. So here today in my keynote address, I will touch upon the communication, need for behavioral change communication for the mental health being and stress related issues, because finally the link
from the problem to the solution is communication. Communication in various forms. Now, over the course of the past few months, we have it has led to a normal to extraordinary situations, which has increased the pressures, altered our lifestyles, increased the unpredictability of the future. So mental well-being and health during this extraordinary times is very much needed. So we require a resilient workforce, we require specific interventions, we require to provide clear, honest and valid information to the public, which has to be accurate, and that is why the importance of single source of truth is very important, which the government is trying its best to publish through the various websites, through the various apps. Still there are many who try to put in their own interpretation and put it in the WhatsApp university that we call about, and create confusion in the mind of people. So health communication is a necessary factor in saving lives. It has to be accurate, it has to be well developed, which can facilitate how societies can handle uncertainties and fear, and promote and accomplish adherence to a necessary behavior change, and meet individuals' fear and foster hope in the face of a crisis. So communication under such conditions is demanding and innovative, and innovative means are required to reach out and understand the need and the way to deliver it. To reduce the risk of COVID-19, we have seen that in the community, it is critical that we pay attention to optimal methods as advertised, as suggested by the various ministries who are dealing with it, to ensure behavioral change both on individual as well as the community level. Some of these are wash your hands 20 seconds, number of times a day, cough on tissue or in elbow, keep distance of 2 gaj ki duri, clean the surfaces before using them, and main is do not touch your face, like we have a habit of scratching the nose or touching the face or doing something when many people just cannot avoid it, and many of us are also aware that when we want not to touch it, that is the time it itches the most. So this requires changing subconsciously and mindset habits that we have been following. It is a totally altered routine that we're talking about, and knowing is not enough. It is knowing is can you hear me? Yes, sir. So this change that we were wanting to bring about, the sustainability of the change is equally important. Communication strategies, which is the main thing on which I'm going to talk about today, is we have to use mixed strategies and tactics, which can all of them together can ensure that this particular subject is reaches everyone and adequate precautions are taken by everyone. Public communication, media communication, social media, use of social media, mass awareness initiatives, IEC material, health promotions, then social mobilization of the community. Community engagement is very important, because unless they are aware and you give them the necessary launch pad or the I'll say promotional motivation, the things will not work. Uh, then interpersonal communication is very important. Internal communication within yourself, for a man or woman to be
truthful to himself or herself, that is also very important. So the social and behavioral change communication that we are talking about is an important aspect to address the stress and mental health wing due to COVID-19. And it has to be done with partner engagement. It has to be done with multi-stakeholder engagement. And that is the aim. That the NED is trying to sensitize people, what is the issue and how it can be addressed. You can hear me? Because Yes, I'm yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, with this, I will say that today all the participants are requested to understand the issue properly, to take down adequate number of notes, and to show their commitment to this cause by writing good amount of observations and questions in the chat box, and not disturbing others by switching on the video or audio, because that defeats the very purpose. So with this, I once again thank Invertis University for collaborating with NIDM, and I'm looking forward to listening to everyone for the next 2 hours. Thank you, and over to you. Thank you, Odisha, for your insightful and encouraging inaugural remarks for today's webinar. You spoke about different aspects of communication, the need of communication at the self level, societal level, and then behavioral changes that need to be observed by not only oneself but as community as a whole. Sir. Thank you, sir. I will now invite Dr. R. K. Shukla ji, Dean Engineering, Invertis University, to address the gathering today. Dr. R. K. Shukla is Dean Engineering and Technology, Pharmacy and Agriculture in the Invertis University. Has 21 years of teaching and administrative experience, authored many books in mathematics, and contributed significantly at national and international research. Dr. Shukla. Sir, Dr. Shukla. sir, please unmute. Hello. Audio. Yes, I am audible. Yes, sir. Now you are audible. Okay. Thank you, Panda sir, for inviting me and introducing me very nicely. Honorable Chancellor and Mayor of Bareilly, Dr. Umesh Gautam, in absentia, who is our leader. We are working under whom leadership. Executive Director NIDM Major General Manoj Kumar Bindal ji, awarded Basis Seva Medal, who has spoken very nicely. We need to care each and every dimensions. Dr. Avadhesh Sharma, Vice Chancellor, Invertis University Bareilly, a very senior professor and experienced person, Dr. Anil Kumar Gupta, Head of Department, ECDRM Division, NIDM. And today's speakers, Shri Ashish Kumar Panda ji, who is a very active consultant and faculty member, ECDRM Division, NIDM. And we have a new speaker, Dr. Sanjay Singh, Assistant Dean and Professor, Department of Humanities, OPJU Bindal University, Chhattisgarh. And we have Dr. Avadhesh Sharma, Head of Department Education. Basically, he is a physicist, Invertis University Bareilly, and very senior faculty of the Art of Living. He has conducted many training programs in different organizations to educate them. Another, we have second Awdhesh Kumar from our Invertis University, Faculty of Civil, very active person who is doing hard work to organize such webinar. I also welcome the participants from across the country participating in this webinar on COVID-19, stress management and mental well-being. The topic is very important. How we need to manage the stress, that is a big challenge. How we need to balance our mental well-being, that is also a big challenge. Our speaker will also share about this stress management and mental well-being. I am happy to share that in collaboration with NIDM, Department of Civil Engineering, Invertis University had organized 2 webinars and 1 FDP cum training workshop earlier. First one was held on May 15th, 2020. And topic was the pandemic lockdown and way forward. It was huge success. There were more than 150 registrations from more than 40 organizations across the country. And the second webinar was held on May 28, 2020, which was on the topic pandemic and Indian economy. It was also very important webinar, and there were 78 registrations from the more than 45 organizations across the country, and the session lasted for 3 hours. Both the webinars were very useful and they were very successful.
And the third one was the held from June 24 to 26, 2020. And it was 3 days faculty development program, come training workshop on basic disaster management. That is a need of this hour. It was very successful event and almost 400 people across the globe participated. And for this webinar FDP program, I am very thankful to NIDM and ED sir, Shri Manoj Kumar Bindal ji, who has provided the grant of rupees 1,50,000 to Invertis University. And I thanks for this once again. Why I think speakers will talk about the stress management and mental well-being. Our ED sir has spoken about how the person are. I'm audible? Yes, sir. Yes, sir, please. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Please. How the person are becoming the stress and how they are not able to balance their mental well-being. Just I am sharing one article which has been published by All India Council for Technical Education AICT. This July 27, 2020. At least 179 professional colleges, including engineering colleges and business schools, shut down in India in academic year 2020-2021, this academic session. Amid through employment environment falling demand and restriction on the mobility of students because of the COVID-19 pandemic. So, but naturally, the people are getting out of job. The number of closure is the highest in the 9 years. In this session, the number of closures is the highest in the 9 years and is double the number reported the previous academic year, according to the data released by All India Council for Technical Education AICT on this Monday, that is July 27, 2020. 134 more institutions did not seek approval for fresh batches in 2020, highlighting the disruption in the higher education sector. They are creating a lot of problems. There are multiple challenges in the education sector this year. The job environment is tough. The pandemic has restricted mobility and the income of the students and student families have gone down, delaying their fee paying capability. This is the practical problem we all can understand. AICT said 762 institutions reduced intake because of post closure or division closure, affecting almost 70,000 seats in these technical schools, but put together because of the closure of the entire institution. Closure of departments not seeking approvals and punitive action by the regulator against some 44 institutions. The number of technical education, please see how much seats they have reduced. The number of technical education seats came down by the almost 1,53,932, as many as 92 institutions were closed in 2019, compared with 89 in 2018, according to AICT data. Professional education providers and their promoters are worried and look ahead with the apprehension. While some have closed down, some are closing section and departments are where the demand is low. So this, because of these situations, but natural, the person, faculty members or other person are losing their jobs. So, but naturally, stress management and mental well-being is difficult to manage. With this, I thanks to ECDRM Manoj Kumar Bindal ji, Professor Gupta ji, and Shri Ashish Kumar Panda ji, Mr. Awdhesh Kumar Mr. Awdhesh Kumar, Faculty Civil Engineering, Mr. Arvind Kumar, Faculty Civil, HOD Civil, and Mr. Shravan Kumar Gupta for organizing such important and wonderful webinar on stress management and mental well-being. Thank you so much for inviting me and giving me a chance to speak about it. Over to Awdhesh. Thank you, sir, for such a comprehensive presentation of the current situation on education sector, and also encouraging us, and thank you for encouraging us. Now, I would move to, we have Professor Gupta, sir, and he is a disaster mitigation and crisis management professional. Professor Gupta possesses interdisciplinary expertise with institutional development, coordinated several international, national projects, over
over 100 academic publication, etc. He also served NMDC, DMI, NIRI, and CICO on administrative technical capacities. He is coordinator of Technical Advisory Committee of NIDM, member of Governing Council and Academic Research Advisory of several institutions, and high-level ministerial delegation abroad. I will request Professor Gupta, sir, to kindly deliver his opening remark for today's program. Please, sir. Over to you. Sir. Hello. Ji. Yes. Sir. Namaskar. Am I audible? Yes, sir. Good morning. Ji. Namaskar. Suprabhat. Very good morning to all for this very important topic of the webinar that has been chosen for today. मैं सुन रहा था अपने वाइस चांसलर साहब को और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब को, और बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ जो उनका लाइफ का एक्सपीरियंस है हम सबसे ज़्यादा है, और that is also a very important dimension that beside the scientific and technological issues when we talk of the mental health, the real life experience which are very pertinent on the ground in bringing the change, in understanding the issues, are equally important. So certainly we have good textbooks, we have very good reference documents, manuals, but blending the manuals and other things, whatever is written, with the practical experience is very important in bringing the real change. And this time that we have experienced with COVID pandemic, the importance of mental health managing stresses has come to the forefront, because it has become a real household challenge. As the executive director of NIDM, Major General Bindal, was referring to, that each one of us, if we really undergo some tests, we will come out with certain kind of challenges, stresses, anxiety that we are passing through, particularly during this COVID period. And now we have started defining like COVID and post-COVID kind of things. So how we address these things not only during the COVID period, but also while we are moving towards a transition to the post-COVID period, because that is very important. So today's webinar is very, very important. And this is a kind of a beginning on discourse on which this important thing that can help us address the human miseries which are at organizational level, which are at the household level, which are at the societal levels, and also at large, that we say that the human environment. So we have to address this. So I congratulate Invertis University and my colleague Mr. Ashish Kumar Panda, Dr. Awdhesh, and all the team members to take up this this issue. I will be talking during my presentation also on some of the issues. So thank you very much, and best wishes for the discourse. Over to Dr. Avadhesh. Thank you, Professor Gupta, sir, for setting the tone of today's webinar. Now we formally would like to begin with our session. The first talk is about the emotional well-being, and this will be presented by Shri Ashish Kumar Panda, sir. He is consultant and faculty member in National Institute of Disaster Management. He will also briefly inform the gathering about the present status of COVID-19 in our country and do's and don'ts related to it. Shri Ashish sir is also the program coordinator of today's program. Please, Ashish sir. Yes, sir. Over to you, sir. Yes, sir. Am I audible, sir? Yes, sir. Quite audible. The presentation is visible, sir? Sir, right now, not right now. I've shared. It's loading. Ashish sir, I request you to kindly reload it, reshare it.
Just a moment. I'm doing. Yes, sir. I'm Yes, done. sir. Yes, sir. Now it's visible. Yes, sir. Please maximize it. So this maximized version is visible, Avadhesh? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you very much. Very good morning to everybody once again. So National Institute of Disaster Management is the apex institute with respect to providing training as well as improving the capacity development in our country with respect to disaster risk management. And it is our obligatory as well as moral duty to start any program as per our mandate in the Disaster Management Act with some sensitization on the present COVID-19 status as well as some do's and don'ts with regard to that. The first few slides of my presentation will stick to that, and thereafter I will speak on the main topic of emotional well-being. So if we think the global situation across the world, there have been today's figures are 1.69 crore cases have been registered, deaths to the tune of 6.65 lakhs. And recovery has been of more than 1 crore. And if you see the closed cases that put together the recovery and the deaths, this is 96% for recovery and 4% of death. And you may be remembering then that when for the recovery and 21% for the deaths. So we have traveled miles across towards gaining a positive side of COVID. And probably, as the reports say, by August, the peak period will be there, and thereafter we will be reducing day by day basis. If we talk about India, there have been more than 15 lakh cases and 9.89 lakhs of recoveries. 34.5 thousands of deaths have been registered. Active cases today are 5.27 lakhs. We have been seeing cases to the tune of more than 1,000 and per million and 25 deaths per million. But these figures, if compared to the global figure, they are very, very less. So we are in a better position population-wise, we can say. And we have done more than 1.78 crore of tests. And on today's basis, we are doing 12,848 tests per 1 million. Our recovery rate is 64.23% and death rate is 2.29%. Three important states that Maharashtra, Tamil Nadu and Delhi with their respective figures are leading as far as COVID-19 cases are concerned in our country. The worrisome issue is for the first 1 lakh cases of COVID-19, we took 109 days to reach those figures. But thereafter, reaching every extra 1 lakh, we started taking a reduced number of days. For reaching 2 lakhs, we needed next 15 days, then 10 days, then 8 days, 6, 5, 5, 3. Then on 10th of July, we reached 8 lakhs. And today, yesterday's figures, on 29th of July, we have already crossed 15 lakhs. So it took 19 days to double this figure. So we can say the doubling rate today is nearly 19 days. So there are two research studies in this regard, and one study says that by August 21, we will be reaching the peak phase with 6.45 lakh active cases on the most likely scenario basis. And one SEIR model says that 6.98 lakh active cases will be reached by August 23. Thereafter, daily active case counts are projected to decline by mid-October. So easing of mobility restrictions has led to abandoning of safety protocols and significantly contributing to India's peak being pushed by approximately 40 days. If we see this graph about the doubling figures, before and during the lockdown, the doubling rate had been increasing. It started from 10 and then reached up to 18, 19. Presently, it is at 19, but now it is showing some decreasing signs. Starting out slowly, India still has one of the world's lowest testing rates among developing economies. This is a worrisome scenario, and large parts of our country are showing doubling rates greater than that of national average. So if we try to understand the importance of lockdown, we need to understand the factor R naught. It lies between 1.5 to 4. It actually tells us how contagious an infectious disease can be. So for this coronavirus, we normally take this figure as 2.5. It says that if we don't follow the quarantine, social distancing and lockdown kind of measures, one patient has the capacity to infect nearly 460 persons in 30 days time. But if we follow
If we implement such preventive measures, the spread of infection can be contained and reduced to an average of only 2.5%. See the last difference, 406 and 2.5. We have gained environmentally a little. I will show a few of the slides. Air quality has improved like anything. New Delhi was ranked as most polluted city in the world by WHO in 2014, and this particulate matter 2.5 figures have reduced like anything due to COVID. We have been observing flamingos in Mumbai, in the Navi Mumbai areas, which were a rare sight used to be in the past. And this Haridwar Ganga, which used to be very polluted, not fit for drinking, new research have observed that after some kind of chlorination and other things, it is fit for drinking due to this COVID measures. We are also observing dolphins in the Ganga Ghats of West Bengal. This is critically endangered South Asian river dolphins, and they have been spotted back again after probably 30 years of time in the Kolkata Ghats. And because of reduced this pollution, there is clear visibility of Himalayas. It has been observed clearly from distances like 650 kilometers, 850 kilometers, 280 kilometers, like places Saharanpur, Jalandhar, Sitamarhi, etc. because of the increase of visibility and clear clarity in the atmosphere. If we talk about prevention and treatment, there is no particular treatment as such right now for the COVID-19. There is no vaccine currently available in the market. And if you talk about the animal trials, if you talk about the human trials, this is definitely going to take more than 1 year when a common vaccine reaches to the masses in the community. And there is no specific antiviral treatment for this. If you are infected, then you will be receiving supportive care based on symptoms. And for severe cases, there will be treatment for supportive vital organ functions. So basically, preventive action for avoiding exposure is the best social vaccine, we can say. We need to wear masks, avoid close contact with infected people, avoid touching eyes, nose, and mouth. We need to stay home as much as possible when infected, cover while coughing or sneezing, throw used tissues into closed bins, disinfect frequently touched objects and surfaces. And recently, the government has allowed in Delhi for this home quarantine, and other states are following suit. In Uttar Pradesh also they have started observing this. This has got many benefits. It brings less loads on the hospitals. It saves on our huge hospital bills. Then same kind of care, because there is no specific medicinal care as far as COVID-19 is concerned. So same care can be provided at home, and we will be with our near dear, so better care will be there, and also emotional health will be improving, and that is the plus point of home quarantine. AIMS and LNJP hospitals in Delhi, they have asked for volunteers on home vaccine testing can be done, but to find a person who has not been infected by COVID-19 and the person who may be asymptomatic as well. So to find a person who is fit for this kind of volunteerism for vaccine checking, that is a bit difficult job. Also, the government has at least 5 sites already identified for late stage human clinical trials expected by the end of this year for several COVID-19 vaccine candidates. So basically, we have to enhance our immunity by various means. Few means are presented here. We have to improve our diet. We need to take low carb and protein rich diets to help reduce high blood pressure and also keep ourselves, our physicality in a good shape. Then we need to regularly consume vegetables and fruits which are rich in beta carotene, ascorbic acid, and other essential vitamins. Then foods like mushrooms, tomato, bell pepper, green vegetables, they are very good for body resilience. And natural immunity supplements which are easily found in our kitchen like ginger, raspberries, amla, turmeric, garlic, basil leaves, they should be used on daily basis. Some probiotics like yogurt, Yakult also, they can be taken. They improve our composition and quality of gut bacteria in our intestines. And in consultation with your doctors, you can also take vitamin C. It helps prevent the common cold, powerful antioxidant, and protects against damage induced by oxidative stress. Also vitamin D, mild protective effect against respiratory tract infection have been observed. If you take this vitamin, then you can reduce those symptoms or weaknesses. And also zinc is very vital component for white blood corpuscles, which fights against infections.
we need to get good sleep. There is no need to compromise on your sleep. They need to stay hydrated, and also we don't need to skip our exercises. Based on our stamina and capacity, at least 30 to 45% of regular exercise is prescribed. We need to de-stress our whole system. Today's whole webinar is on this aspect. We need to practice meditation, avoid smoking, alcohol, and other addictive substances, because they have got direct correlation between weakened body defenses and respiratory illnesses. It also weakens our lung capacity and destroys the cells lining respiratory tracts, which is very, very crucial to fight viruses that enter our nasal orifices. And also, the people who are using these kind of substances, they tend to suffer from acute respiratory distress syndrome. One caution is, if you are taking these substances, then practice moderation to avoid sudden withdrawal. And also avoid any kind of traveling that can be avoided. So you shouldn't be in public places, shouldn't use public transports for the time being. And COVID-19 strains can stay on surfaces for a few hours to days. So be cautious, take precautions, and use your non-dominant hand. Like I am a right-handed person, so I should be using my left hand for opening doors, opening car doors, or any common place, common public utility place, which people often use to open or utilize. Ministry of Ayush has come up with some certain kinds of basic guidelines which need to be observed. We need to drink warm water throughout the day, practice meditation, yoga and pranayama, increase our intake of turmeric, coriander and garlic, drink herbal tea, a decoction of holy basil, cinnamon, black pepper, dry ginger and raisin. We need to avoid sugar and start using jaggery. This is good for our immune system as well as our indigestion also. So we need to apply ghee, sesame oil, or whatever this coconut oil that is available at our home in nostrils to keep them clean, and also inhale if it's possible, steam with mint leaves and caraway seeds. We need to protect ourselves from the infected person. We need to maintain at least 1 meter, that's called the famous slogan, "Do gaj ki duri," distance with others. We need to make sure that we and the people around us should be following good respiratory hygienes. Then we need to stay home and self-isolate even when minor symptoms are there. And if we have fever, cough and difficulty breathing, we need to certainly seek medical attention. We need to call them by telephone and observe all the precautionary measures they are asking us to do. And we need to keep ourselves up to date with latest information, as rightly said by ED sir, from trusted sources such as WHO or your local and national health authorities. And whatever information we get, this positive information, true information, should be spread in our community. And if we are using alcohol-based hand sanitizer, then we should make sure that we use it properly and store it carefully. At least we should keep it away from the children's reach. And if at all they are using, then we need to inspect them properly. And when they are using, we need to monitor that also. We need to apply a coin-sized amount of sanitizer that is sufficient for doing the job. We need to avoid touching our eyes, mouth, and nose immediately after using an alcohol-based sanitizer, because this may cause irritation. We need to take precautions with respect to accidentally even we shouldn't drink or swallow this material. It can be poisonous. This is also flammable. Do not use before handling fire or cooking, and keep on washing your hands with even soap and water. That is also equally beneficial and equally effective. So this is the last slide. Basically, what we need to do to reach after the peak, to reduce the this COVID cases in our country, we need to flatten the curve. We need to break the chain. We need to observe, keep social distancing, work from home. And when we are working from home, there is every possibility and opportunity to learn many things online. We need to be cautious. That is very okay, but there is no requirement of being panicked. We need to donate and help needy and help stray animals as well, and help stop spread any kind of rumor. The communication should be proper, right, and in adequate amount. That can be trustworthy, that can be relied upon. We need to fight the disease and not the person, the patient. And also, very important, we shouldn't fight the corona warriors. We need to respect them for their services that they are providing to the country as a whole, to the community as a whole. We need to learn to live with pandemic hereafter. This is going to stay for a long time, as has been projected. And last but not the least, we need to pray for others too.
Thank you very much. And I will now upload my presentation with respect to emotional well-being. It is visible, sir? Avadhesh? Not right now, sir. Achha. Should I upload again? Yes, sir. Can you see now? Yes, sir. Visible? Yes, sir. It is visible and you can maximize. Maximize. Yes, sir. It is maximize? Not right now. Hello? Yes, sir. Hello. Visible? Sir, it's visible but not to maximize. I've done it. Maybe coming. Visible? Visible, sir. It's visible. And full mode is there? Not full mode. Now? No, sir. It's not in सर full mode. इसमें ज्यादा नहीं होता. Hello? Hello. In my screen, it is full screen. Okay, sir. You can present it. We can. Okay. We can. It is visible, yeah, na? it is visible. Important. It's visible. We can see the content. Okay, fine. So I start with. We can see, sir. We can see. Okay, thank you. Thank you. Yeah, am I audible now? Yes, sir. Yeah, sir. Right. Thank you. So the topic that has been given to me is emotional well-being. So I will talk a little bit about it. So what is well-being actually? It is, I mean, this summation could be like this: we need to feel happy or contented with whatever we are doing, whichever position we are finding ourselves in. Then we need to work productively, fruitfully. Whatever job has been given to us, we should be involved in those jobs and try to reach the optimum, maximum output that is possible through our participation, through our approach, and whatever is expected from us, from our bosses, our objectives of our organization, that should be met. At least we should try to move in that direction. We should make a contribution to the community. I mean, every time we take things from the society, but when time comes to return back to the society, probably we are failing there. So we need to work on that. We need to realize our own achievements and abilities, and so that on day-to-day basis we can improve upon that, and we can reach optimum levels of success. And also, we need to cope with normal stresses of lives that keep on pounding upon us on day-to-day basis. So if we talk about different aspects of well-being, it can be social, emotional, spiritual. The social well-being talks about sense of belonging to a community and making a contribution to the society. Emotional well-being speaks about feeling good about ourselves, whatever we are doing. We need to be happy. We need to be experiencing positive emotions, like it may be love, joy, compassion, and generally we should be satisfied with our lives. Spiritual well-being is something different. We need to be connected to some higher power. This power has been imagined and put there by ourselves only to guide us, to monitor us, to observe our activities, and probably if we are going somewhere wrong, then to put ourselves in the right perspective. This is a sense of meaning or purpose of our life, and also feelings of peace and transcendence. Emotional health is very important for overall health. It gives ourselves control over our thoughts, our feelings, our behaviors, and if we get this control, then we are able to cope with all kinds of challenges that might be with us on day-to-day basis. And
we can keep problems in their perspective and bounce back from setbacks of any kind. We need to feel good about ourselves. We need to have good relationships. One research says that emotional health is a skill. This can be learned. This can be upgraded. We can improvise upon that. Then there are steps we can take to improve our emotional health and be happier as an outcome. So emotional well-being is basically emotional quality and individual experiences. We all know that we are moving through a very bad phase of our lives, this COVID-19 outbreak, and one research says that this has lowered emotional well-being by no less than 74%. Mental health concerns such as stress, depression, anxiety about self and people important to us, then all kinds of feelings like Edison said that we are probably not acknowledging. Maybe we are shy. We can feel what people हमारे बारे में क्या कहेंगे. Then, but everyone is going through depression, anxiety, stress, poor body image, grief, loss. Then so many news in our lives. Somebody can die in our family. Then we can be having a new child in our family in this COVID stress times. So all kinds of these feelings can affect mental and emotional health and our day-to-day living. And also very peculiar thing about it, sometimes it is very, very difficult to understand that whatever we are experiencing, whether that is depression, whether that is sadness, worry or anxiety, that is very important aspect. So basically, what is good functioning? We need to connect to the society, we need to give back to the society, and whatever we are doing, we should be involved in that, we should be active in that, and in that process, we should be keeping learning on day-to-day basis and improving upon ourselves. At the same time, we should be aware of our pluses, minuses, and the stresses that we are surrounded with, and also the kind of disasters, whatever natural, man-made, or whatever societal, economical disasters that are around us, we should be aware of that. And we should help not only ourselves, but also others. And thereafter, again, that is kind of connecting to the society. So this whole circle basically gives two-pronged benefits. The one is we start feeling good about ourselves on day-to-day basis, and overall happiness in the community. There is purpose and satisfaction with life, and also it develops mental capital with respect to our resilience, our self-esteem, our cognitive capacity, emotional intelligence, and so on and so forth. World Health Organization has defined well-being as resource for healthy living and positive state of health. And it is more than the absence of an illness. Suppose I am physically very, very fit. It doesn't mean I am into a state of well-being. It is something more than that. And it also includes psychologically well-being, physically well-being, emotionally well-being, and socially well-being. And this definition also says that it enables people to develop their potential, work productively and creatively, and form positive relationships with our peer groups, with our fellow community people, and meaningfully contribute to the community in the end. Through all this definition, we should never forget that we are not superhumans. We are still humans. Being emotionally healthy doesn't mean that we are happy all the times. We can be happy, we can be sad, but it means that we are aware of our emotions. It can be plus, it can be minus, and we know how to deal with them, whether they are positive, whether they are negative. If I say that I'm an emotionally healthy person, then I can still feel stress, anger, sadness, but I know how to manage these negative feelings. I can at least tell when a problem is more than beyond my coping capacity. It is talked about coping capacity. Everybody is facing stresses, but different persons have got different coping capacities. So I might be having different capacity, or they should be having different coping capacities. We also know a person who is emotionally healthy also knows when to seek, when this thin threshold has been crossed, and when to seek help from medical professionals, psychologists, and people who know better about these aspects. This is a graph between mental illness and mental well-being. So all the subjects, all the people across the globe, they can be divided in 4 kinds of situations. If you see the x-axis from maximum mental illness to minimum mental illness, the y-axis from minimal mental well-being to optimal mental well-being. So there can be 4 kinds of persons. The right bottom, if you see a person who has no diagnosable mental illness, but who has a very low level of mental well-being, is not mentally strong,
Then there can be a person who is experiencing mental illness also, and also low level of mental well-being. These people are very susceptible to societal kind of things. Then there can be a person who experiences a high level of mental well-being despite being diagnosed with a mental illness. So he can survive, he can deal with these kind of situations. And this is the very ideal kind of situation. A person who has a high level of mental well-being and also who has no mental illness on record. So basically there are 5 ways of well-being. We have already spoken about that. We need to connect with the people. We need to be... Hello, I'm audible? Yes, sir. Okay. So we need to connect with the people. We need to be active in whatever activities we are doing. We need to take notice of minute changes, those positive changes around us. We need to keep learning from other persons, and also in the end, we need to accumulate wisdom and also give back to the society. So there are many ways to improve good emotional health. We need to be aware of our emotions and reactions. We need to notice what are those things in our lives which are making ourselves sad, frustrated, and angry, and need to address those things. And we need to express our feelings in appropriate ways to the persons around us. Those near dear persons should be knowing what is going beneath us, inside us. Our feelings, if we keep the sadness and anger for longer duration, then this is going to add to our stress, and it can cause problems in relationships and at work as well. This is very important. The ways to improve your emotional health. We need to think before we act. There should not be a situation we have to regret on a later position. Before saying anything, before doing anything, we need to think a little bit, give some time upon that, so that we can avoid regrettable situations later. We need to manage the stress through learning relaxation methods. It can be anything different for different persons. Deep breathing, meditation, exercise, reading books, watching movies, music, anything. Take care of your physical health. Exercise regularly, eat healthy meals, and get enough sleep. Do not abuse drugs or alcohol, because if you weaken your physical health, and this is also going to affect your emotional health. Then we need to be connect with our peer groups, our community members positively, and through lunch dates, joining a group, and even talk to strangers. Find purpose and meaning, what is important in your work, in your family, through volunteering and caregiving and other joining NGOs and other services. You can serve back to the community and spend time in doing meaningful things. And we need to find a healthy balance between work and play, between activity and rest, and also find time for things we enjoy, focus on positive things in our lives. Important thing, we need to forgive ourselves for mistakes that we may have done, erred in our decisions in our past, and after that we should start forgiving others as well. This has got proven benefits. It enhances our productivity in the work, and it gives us capacity to cope with day-to-day stresses of life. We realize our full potential. It helps working with others and contribute back to the society. Research shows that there is a link between upbeat mental state and physical signs of good health. And optimism and positive emotions can reduce the risk of even heart attack, one research says, by up to 50%. Also, the people who are happier, they live longer. One research says more than 7 years of life is added to your life, and then happiness and optimism influences other people as well. This positivity can be passed upon to others as well. We become more resilient to adversity and better able to achieve things. And it increases our immunity to infections, lowers mental health risks, reduces mental decline as we get older, and increases our resilience as well. It brings many kinds of behavioral changes in our lives. We are more involved in social activities, community groups, in environmental activities, better family and social relationships, and more productive at work. We are more likely to be working or studying full time and recover quicker from a range of chronic diseases. And in younger people, this has been observed that higher level of well-being significantly influences their alcohol, tobacco, and other kinds of drugs use. So there are 7 dimensions of improving wellness, and one by one quickly I will speak about it. Physical wellness, we need to exercise daily, get adequate rest, and by driving, use seat belts, helmets, and other protective equipment to avoid accidents. We need to learn to recognize early signs of illnesses, eat a variety of healthy foods, control our meal portions, stop smoking, and protect
ourselves against second-hand smoke, and use alcohol in moderation if at all you need to use it. It is required to use. For emotional wellness, we should tune into our thoughts and feelings. We need to learn ourselves that new concept of inner engineering. You should work on that. We need to cultivate an optimistic attitude, seek and provide support, learn time management skills, practice stress management techniques, and accept the following yourself. Intellectual wellness, we can take a course or workshop. We need to learn few foreign languages and literatures, and seek out people who challenge ourselves intellectually. Read not more as much as is possible, and learn to appreciate artists. For social wellness, we need to cultivate healthy relationships. We need to get involved, contribute to our community. We can share our talents. There are many YouTube channels and other social media platforms where we can showcase your talents and skills. We need to communicate our thoughts, feelings, and ideas to our leaders and people who we can trust upon and who trust upon us. So for spiritual wellness, we need to explore our spiritual core, spend time alone and meditate regularly, be inquisitive and curious about issues, the divine self, and be truly and fully present in everything, whatever we are doing. We need to be involved in our works. We should listen to our heart and live by our principles. We need to allow ourselves and other around us the freedom to be what they are, and see opportunities for growth in challenges life brings to us. For environmental well-being, we should stop using our junk mails in our offices. There is no need to do many photocopies. There is no need to print everything that is coming to you in your mails. We can conserve water and other resources, minimize chemical use, reduce, reuse, and recycle is very famous with respect to plastic. But I say for any kind of natural resources, we should apply this mechanism and renew our relationships with our Mother Earth. Occupational level, we need to explore variety of career options, create vision for future. We need to choose a career that suits our personality, interests, and talents. Be open to change and learn skills. I'm just completing my presentation, just 2-3 slides. This is new model of Parma model of well-being. This speaks about positive emotions, engagement, positive relationships, meanings, accomplishment, PERMA. This is being practiced in all management schools of late across the globe. And Ayurveda and yoga, I will not devote much time on it. Many people know about it. These are sister sciences. They practice on rituals, waking up early, and like many issues are there. Meditation, pranayam, then control over diet. This diet is very important. The poor and disturbed sleep is caused by an imbalance of Vata. We all know that our body is governed by Vata, Pitta, and Kapha. So this Vata aspects. So many food elements are there that should be taken to improve your Vata position, and many foods are there which should be avoided to take care of this problem. Similarly, yoga. There is need to go for holistic approach. Both yoga and Ayurveda, they talk about holistic approach in our lives. We need to use the relationships between our thoughts, emotions, environment, spirit to support our physical experience. So spirituality is a connection between inner and outer world. Other speakers are there, they will be talking about it. So this one aspect is very important. Pain, struggles, and suffering serve to give us feedback from our place in the whole. It is how we know we are out of alignment with the intelligence of the nature. This is very important. This is very important that good emotional health can still have emotional problems or mental illnesses. Mental illnesses often has physical causes, and counseling, support groups, and medicines can help. And if we are crossing that threshold, we need to consult our doctors. These are important questions that we can ask our doctors with respect to our emotional health. This is the last 2 slides. We can relate our life to the tree. Tree has got roots, trunk, and crown. Like these roots are invisible, but they are very important for the growth and structure of the tree. They should be healthy, they should be deep, they should be strong, and they should be able to face disasters. Similarly, in our life, this unseen thing that money cannot buy, this is spirituality. We should work upon that unseen thing, that inner development, that inner engineering. If we don't do that, then storms of our lives, they are going to drop down. The trunk part of the tree, that is in our life, that is basically physical and emotional well-being. If it is not strong, then we can get uprooted. Mind can make heaven or hell. So we should
keep on nourishing our mind as well as our physical existence, our body. We shouldn't give remote control of what makes ourselves happy or sad in somebody else's hands. We need to control feelings. Don't give rights to others to make you feel happy or sad. Last but not least, the ground. This is contribution to the world. Flower, leaves, shades, fruits, and other things that tree gives to the community. Similarly, we need to work for others. There is one good saying that life is like ice cream, leave it before it melts. But no, this quotation is about selfishness. We are talking about using the ice cream. So we should utilize the quotation. Life is like a candle, light others before it is gone fully. This is selflessness. So basically, we need to serve others after taking care of ourselves. President Kalam once rightly said that if you really want to look handsome, give your hand to some. If you are beautiful, it is God's gift to you. But if you live beautifully, it is your gift back to God. So basically, 3 C's: roots, connection to the divine; spiritual wellness, work upon it; trunk, cultivation of emotional and physical wellness. Don't give your remote control to others. Last but not the least, the crown, the contribution to the society. The purpose of life should be life of a purpose. So this is end of my right. Smile a while, and while you smile, others will smile with you, and soon there will be miles and miles of a smile around you. So this is demonstration. Life is too short, so smile while you still have teeth. So thank you very much, and thanks for patient listening. We will try to take few questions at the end of the program. Without taking any more time, I will invite Shri Awdhesh ji for the second talk of the day, that is stress and anxiety in the digital age, COVID-19 perspective. Shri Avadhesh ji is assistant professor in the Invertis University and is the program coordinator for today's webinar. Avadhesh ji. Hello. अनम्यूट कर रहा था जी जी जरा अनम्यूट कर रहा था अपने आप को सारा थैंक यू सो मच सारा हेलो बोलिए सर. आशीष सर, एम आई ऑडिबल? हाँ, आप अपना प्रेजेंटेशन लोड कीजिए. ओके ओके ओके, जस्ट डूइंग. श्रवण सर. हाँ सर. Sir, please allow me to share my presentation. Okay. Is it visible, sir? Ashish sir? Coming. It's coming. Sir, visible? Is it visible now? Yes. Kumar करेंगे. Full screen कर दीजिएगा please. Okay. Yeah. Now I have maximized this. So some pictures tell everything about them. So this picture in which a person is sitting in an extremely stressful condition is surrounded with certain symbols, and I think no one is not able to identify these symbols. These are the symbols or the representation of today's reality or virtual world. Different social media platform, different internet platform are there that are surrounded at 24/7. And this is every coin has the two sides. In one side, the technology was invented to aid us in our daily work, and we do the works very fast with the help of the technology. But in the other side, the access of everything is wrong, and it is also proved true in terms of the technology. The slide that you are viewing right now is stresses and anxiety in digital age, a COVID-19 perspective. So this, one second, I'm starting a video. So this stress and anxiety in digital age is now a new challenge.
new COVID-19 perspective is new to our generation because we have never heard about such pandemic that influenced the society on such a large scale before. But right now we are facing the situation in which we are locked down and we are doing our work with the remote places. And this is the constructive, some works are constructive, but some are the garbage that floating on the internet. And that is creating a situation of difficulty for everyone who is associated with this. So this is stress and anxiety in digital age. Before going into this, I'm a professional, belong from the civil engineering background. And in civil engineering background, we deeply learn about the concept of stresses. Yes, we are talking about the concept of mental stress right now, but I think the language of the science is universal. And this is applicable to all the disciplines. So जब भी हम यहाँ पर कुछ डिज़ाइन करते हैं पूरी सिविल इंजीनियरिंग या फिर कोई इंजीनियरिंग को भी हम अगर अडॉप्ट कर लेते हैं तो एक बात का बड़ा ध्यान रखा जाता है कि जो स्ट्रेसेस हैं वो कभी भी परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा ना जाएं, क्योंकि उनके अगर परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा जाने का मतलब ही यही है कि हमारा जो भी कंपोनेंट हमने बनाया है, जो भी हमने डिज़ाइन बनाया है, वो 100% फेल होगा. और सेम चीज़ ट्रू है हमारे ह्यूमन बॉडी के बारे में भी. अब यहाँ पर स्ट्रेस के बारे में हमारे में एक कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रेस में एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, फॉर्मूला होता है, बहुत सारे लोग जानते होंगे, काफ़ी सारे लोग. इसमें इसका फॉर्मूला सिंपली है स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ऐसा लोग मानते हैं, लेकिन प्रेशर का फॉर्मूला भी यही होता है. तो स्ट्रेस और प्रेशर में कुछ तो अंतर होता है. तो यहाँ स्ट्रेसेस क्या है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, एक काउंटर फोर्स होती है जो सही करने की कोशिश करती है, अपने आप को इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करती है किसी भी सिस्टम को. तो जब ऐसा होता है तो इस सिस्टम में क्या है, स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं और उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस उस सिस्टम पे या उस बॉडी पर दिखाई पड़ते हैं. तो जो एंजाइटी हम डील कर रहे हैं, जो स्ट्रेसेस डील कर रहे हैं, उनके फोर्सेस कहीं से भी कहीं तक हों, लेकिन आखिरकार उसका असर जो है एक स्ट्रेन के रूप में हमको दिखाई पड़ता है. तो आगे चलने से पहले सबसे पहले हम इसके एक बेस में जाते हैं, क्योंकि हम स्ट्रेस की बात तो काफ़ी करते हैं, लेकिन शायद हमें उन लोगों के बारे में भी जानना चाहिए जिन्होंने इसको पहली बार देखा और एक सिस्टम के रूप में प्रेजेंट किया. ये जो आप अभी एक पिक्चर देख रहे हैं, ये फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट क्लाउड बर्नार्ड हैं, और इन्होंने सबसे पहले ऐसा डायनामिक इक्विलिब्रियम, जो मैं अभी बात कर रहा था इंजीनियरिंग और फिजिक्स की, तो एक्चुअली ये जो स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट है इसको लिया ही फिजिक्स से गया है. और इसमें एक डायनामिक इक्विलिब्रियम जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या है कि इक्विलिब्रियम जब हो सकता है जब उस पर जो सभी फोर्सेस जो हैं हमारे, कोई भी ऐसा मैग्नीट्यूड ना रखें जो उसको कहीं मूव करा सकें. तो यहाँ पर इन्होंने भी जब इस चीज को देखा तो एक स्टीडी स्टेट, हेलो, इन्होंने एक, हेलो आशीष सर, Yes, sir. Please continue, sir. ओके Please ओके continue, ओके, sir. थैंक यू. एक्चुअली इन्होंने देखा कि ये, क्योंकि जब स्ट्रेसेस के बारे में मैंने बताया कि इंटरनल स्ट्रेसेस होती हैं या काउंटर फोर्स डेवलप होता है मटेरियल के अंदर से ही काउंटर करने के लिए, जो उसको एक्सटर्नली डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे बॉडी में भी होता है. तो ये बात सबसे पहले ऑब्जर्व जो की है, जो क्लाउड बर्नार्ड ने इनको किया, कि इन्होंने कहा कि इन्वायरमेंट जो है या एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो इंटरनल बैलेंसेस को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार हैं. सबसे पहले इन्होंने इस बात को उठाया और हमारे सामने इस बात को रखा, जिसके बाद में इसके बाद आगे की स्टडीज का रास्ता खुला. तो वाल्टर कैनन, इन्होंने इसी को आगे बढ़ाते हुए हेमिस्टैसिस नाम के टर्म दी और इन्होंने फर्दर डायनामिक इक्विलिब्रियम पे आगे काम किया. और इन्होंने पाया कि जो हमारी बॉडी है उस पर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसका कैसा फ़र्क पड़ता है, उसके आधार पे उसका क्या रिएक्शन होता है, उसको इन्होंने डिफाइन किया. तो उससे पहले लोग ये मानते थे कि चलो ठीक है, और आज हमारे देश में भी काफ़ी सारे लोग ऐसे मानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर टेंडेंसी भी है, इफ़ ए पर्सन एज सफरिंग फ्रॉम द डिप्रेशन एंड ही कंसल्ट विद एनी मेडिकल प्रैक्टिशनर और साइकियाट्रिस्ट, so people say that he has some mental problem, वो पागल है, ऐसा करके हम कहते हैं. तो इन्होंने ये बताया कि इसका जो एक रिएक्शन होता है, इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट दिया फाइट और फ्लाइट.
या लड़ो या भाग जाओ का रिएक्शन। जब भी स्ट्रेस आता है तो हमारे जो न्यूरो ट्रांसमिशंस होते हैं, बॉडी के ट्रांसमीटर्स जो सिक्रेट करते हैं हमारे सर्टेन केमिकल्स हो, जिससे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स हमारे अंदर आता है। तो सबसे पहली बात तो एक ये जो चीज़ जुड़ी हुई है कि स्ट्रेस बुरा ही होता है, एक ये चीज़ इन्होंने सिरे से हटा दी। और इन्होंने ये बताया कि रिस्पॉन्स दो होते हैं, या तो स्ट्रेस उसको स्टिमुलेट कर देता है और या तो उसको भागने का, वो रास्ता चूज करने का ऑप्शन उसके ऊपर होता है डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेनिंग। तो ये फाइट एंड फ्लाइट का इन्होंने कॉन्सेप्ट बताया। और इसके बाद इसमें इंटरेस्ट लेते हुए आगे हैंस सेलाई, इन्होंने, जिनको फादर ऑफ स्ट्रेस रिसर्च भी बोला जाता है, इनको क्रेडिट देना चाहिए हमको, क्योंकि आज हम लोगों ने बहुत सारी मनोवैज्ञानिक समस्याएं जो लोगों की दूर की हैं, और पूरी दुनिया में जो ट्रॉमास और वॉर ट्रॉमास, डिजास्टर ट्रॉमास को हम असिस्ट कर पाए हैं, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये वो लोग हैं जिनके नाम शायद हम सुनते नहीं हैं, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। तो इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जो ये बात है कि किसी को अगर डिप्रेशन या किसी को मेंटल प्रॉब्लम हो रही है तो ज़रूरी नहीं वो पागल हो, स्ट्रेसेस का बॉडी पर इफेक्ट होता है। इन्होंने पायनियर अपने पायनियर से अपना नाम लिखवाया और प्रोवाइडेड इन्होंने कन्विंसिंग आर्गूमेंट दिया कि स्ट्रेस का हेल्थ पर भी इम्पैक्ट होता है। अदरवाइज लोग यही मानते थे कि ये जितने भी लोग इससे सफ़र कर रहे हैं वो सब बहाने बना रहे हैं, उन पर कोई भी इस जो प्रॉब्लम है उसका असर बॉडी पे क्या दिख सकता है क्या। तो उनकी ये सोच थी, उनकी ये थिंकिंग थी, जिसको इन्होंने बदला। और जिसके बाद इसके बदलने के बाद इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो स्ट्रेस हार्मोन्स एग्जिस्ट करते हैं बॉडी पे, जिसकी वजह से बॉडी पर असर पड़ता है, और बॉडी पर असर करने की वजह से जो हमारा माइंड है, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कह सकते हैं अपनी बॉडी का, इस पर इफेक्ट पड़ता है और सारे एक्शंस हमारे बदलते हैं, हमारे व्यवहार चेंज होते हैं, हमारे रिएक्शंस बदल जाते हैं चीज़ों पर। तो जिसके बाद इसको करने के बाद इसी दिशा में लगातार रिसर्च जारी रहा आगे। स्ट्रेसेस को जैसा बोला जाता है, जिस तरीके से समझा जाता है, उसमें थोड़ा एडवांसमेंट हुआ। और जॉन मैसन नाम के फिजिशियन थे जिन्होंने एक बड़ा ही अच्छा एक्सपेरिमेंट किया, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग भी था। और ये सब केवल स्ट्रेस को समझने के लिए अभी हम देख रहे हैं। तो इसमें मंकीज इन्होंने दो लिए कि क्या कैसे असर पड़ता है, बॉडी कैसे रिएक्ट करती है हमारी। इन्होंने दो ग्रुप्स लिए थे मंकीज के, और एक ग्रुप के पास खाना आसानी से अवेलेबल करा दिया, और दूसरी ग्रुप के पास उनको फिजिकल स्ट्रेस में रखा, हंगर की उनको नहीं दिया बस, लेकिन एक व्यवस्था कर दी कि ये उसको देखते रहें दूसरे ग्रुप को। तो फिर जब उनका ऑब्जर्वेशन किया गया तो ये पाया गया कि जिनको हमने हायर स्ट्रेस रखा था उनके अंदर सर्टेन हार्मोन्स डेवलप हुए, जिससे वो ज़्यादा परेशान, ज़्यादा उनका बिहेवियरल चेंज दिखाई पड़ा। और इसके बाद यही एक वजह थी, यहाँ से एक कड़ी खुली स्ट्रेस के बारे में कि जहाँ से इसके नाम के साथ में एक बैड नेम जुड़ गया। His observation, it was the beginning of the understanding of why stress, really overstress, can be harmful and why the word stress has earned such a bad name. So this was all about the history of stress, how it is originated, how it comes into the systematic study. Then how our brain react, because whatever the reaction we give or reflect to any circumstance, it depends upon the reaction of our brain. Actually, it control our body and emotions too. So you can see that this is our brain, and here there are three components are there: prefrontal cortex, amygdala, hippocampus, and these are three regions that are basically associated closely with the stress. And this region, for example, अगर हम कभी, और ये बहुत जरूरी है, स्ट्रेस जरूरी भी है और स्ट्रेस एक्सेसिव स्ट्रेस जरूरी नहीं है। तो ये हिप्पोकैम्पस का जो हिस्सा है इसका इन्वॉल्व होता है कि अगर हमने कहीं पर देखा कोई अटैक हम पे हुआ, मान लीजिए किसी शेर ने या कभी भी किसी जगह का हमें थ्रेट मिला, तो हम वो चीज़ याद रख लेते हैं, उस स्ट्रेस को, उस ट्रॉमा को हमारा माइंड याद कर लेता है और उसे याद रखता है कि हम पर कहाँ पर अटैक हुआ था, हम वहाँ पर दोबारा जाने से पहले प्रिकॉशनरी मेजर लें। ये हमारी एक मेमोरी को सेट कर देता है। एमिगडाला जिसके साथ में इमोशनल मेमोरीज जुड़ी हुई होती हैं, और ये फियर को कंटेन करता है, क्योंकि जब
अटैक हुआ था उसके बाद क्या हुआ था इसको याद रखने के लिए वहाँ पर स्ट्रेस हार्मोन जो रिलीज होते हैं उसको एक मेमोरी के रूप में ये सेट कर देता है। तो इसके बाद आता है प्री फ्रंटल कंपोनेंट कॉर्टेक्स, ये भी माइंड का एक हिस्सा होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। इसके साथ डिसीजन जुड़े होते हैं कि स्ट्रेस आया और उसके बाद हमने क्या एक्ट किया था या किस वजह से हम बच निकले थे या किस तरीके से हमने अपना डिफेंस किया था, ये इस चीज की डिटेल्स को याद रखता है ताकि आगे हम इसको यूज कर सकें। एक तरीके से जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं ये हमारे नेचुरली बिल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हिस्सा हम कह सकते हैं। अब इसके बाद में जो पहले बात हुई थी कि किस तरीके से स्ट्रेस का होना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होता है। सो ऑल टुगेदर इफ वी सी द पिक्चर ऑन इन ए whole manner, then it is an essential normal memory function. It is stress hormones are very essential for the normal memory function, and the objective of telling these all the points in this webinar is to first of all remove a contradiction that stress is only bad and we have to remove it at any cost. So because at any cost people try to take the medication, especially the allopathic medication, when they try to overcome from the stresses induced from the various situations in their life. It is a controversy that it correct that is stress cause or not, but it certainly harm their other organs. Then, sir, I have a question, sir. I'm sorry to interrupt you. Sir, we will take that question later on. Okay, sir. Okay, sir. Okay. So kindly mute your mind. Thank you. So this is the inverted U-shaped curve. If the stress is too low, then then the performance level will not come on the optimum nature. Hello. Hello. I would request Mr. Shravan sir to kindly mute the participant. Okay, sir. Okay. Okay. Thank you. So this when the stress levels are low, then people not perform up to the mark, and the optimum performance are not achieved. And if the stresses are very high, we all know its consequences. Other than this this curve, this slide is also presenting an area of the body affected by the stress, where when the stress region is very high for a person when he is not able to handle it, then brain and nerves, muscles and joints, heart and stomach, pancreas, intestine, reproductive system, these all the organs that are very essential for the life are going to hit adversely with the consequences of the induced stresses due to the circumstances, adverse circumstances. Now, moving to the next slide. So this is about the basic of the stress and its impact over the human body. Now, when the disaster outbreak, then we usually access the damage with the help of its social or economic damage, and we often not consider the emotional suffering that the people who are affected from that disaster. So this is also a part of the disaster, that the people who have seen the bad time, they suffer the mental trauma, and this enhance the stress level in them, and they are not able to even perform the daily routine. If the disaster is of a very highly furious nature, then people may come into a state of shock, and after also in the various disaster, death of the close one also involved, and their belongingness got lost, and these factors lead to the psychological vulnerability of the sufferer, such as the displacement of the family, death of a loved one, and socio-economic losses. So disaster is very closely associated with the stresses. It induces the stresses in a large population. COVID-19 is a new type of situation that the world is facing right now. Before that, we have here the name of SARS and Ebola,
viruses, but the consequences of this disaster उनके इतने ज़्यादा नहीं थे कि हमको इस तरीके से लॉकडाउन करना पड़ जाए या हमें अपने वर्क को रोकना पड़ जाए। अब यहाँ पर जब जब कोविड-19 एक महामारी घोषित किया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बाद दौरा, तो शुरुआती दौर में तो इतना ज़्यादा नहीं किया गया, नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा लगा कि इसका इलाज जल्दी ही ढूंढ लिया जाएगा। लेकिन अब काफ़ी एक लंबा 6 महीने से ऊपर हो गया, तो इसके और जो हिस्से हैं वो जो इसके और जो असर हैं वो दिखाई पड़ने लगे हैं। तो जिसमें से कई सारे सेक्टर्स लाइक इकोनॉमी एंड especially the peoples who are serving in certain industries, they are suffering the fear of the job losses and also the similar type of fears they have. और इसके अलावा क्या है कि इस पेंडेमिक ने एक अलग ही तरह की सिचुएशन को खड़ा कर दिया लोगों के सामने। कई सारे के फोबिया बना दिए हैं, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट पे जो लोगों को डराती है, कांस्टेंट सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, वेदर आपके जो जिनको आप जो लव्ड वंस हैं या आपके अपने बारे में भी इनको बना दिया। फियर ऑफ लूजिंग लाइवलीहुड, जो लोगों के आजीविका का साधन है, जिनको डेली वेजेस पे काम करना है, उनके आजीविका के साधन पे एक बड़ा संकट आ गया है। स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है बहुत ज़्यादा उनमें। बहुत सारे एक और है कि अगर कोई कोरोना वायरस से अगर इन्फेक्ट हो रहा है तो उसको ऐसे देखा जा रहा है कि जैसे वो एक समाज का हिस्सा नहीं, उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। उन पर कई तरीके के स्टिग्मास हैं और उसका एक बुरा असर पड़ रहा है यहाँ के रिस्पांस प्लान्स पर भी। लोगों को साथ लोग ऐसे जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स उनसे कटते हैं, उससे एक स्ट्रेस जनरेट होता है जो इससे इन्फेक्ट हो रहा है। इसके बाद कई सारे एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज, एनाल्जेसिक, एंटी एलर्जिक मेडिसिन, फेस मास्क, सैनिटाइजर्स, ये सारी चीज़ें। बहुत सारे लोग हैं जिनको फेस मास्क से भी प्रॉब्लम हैं। Psychological stresses over the growing panic, which compound daily, reinforcing messaging in all forms of media. मीडिया तो जिसका इतना ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन को कभी कभी दे देती है कि बिना बात के कभी कभी बहुत कुछ ट्रॉमा फैल जाता है उस रीजन के अंदर। और इन हेल्थ केयर वर्कर्स, पैरामेडिक्स, वॉलंटियर्स, बायोलॉजिस्ट, मीडिया पर्सन, फ्रंट लाइन, द कोविड-19 कंट्रोल एंड कवरेज, फटीग, बर्नआउट, फ्रस्ट्रेशन एंड फियर, कॉन्ट्रडिक्शन एंड ट्रांसमिटिंग इन्फेक्शन, जो वहाँ एक्टिवली जिनको हम कोरोना वॉरियर कह रहे हैं, उनको काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस आ रही हैं जिसमें फटीग, बर्नआउट, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। वो काफ़ी स्ट्रेस में अपनी फैमिली से दूर हैं, तो उनके अंदर एक स्ट्रेस चल रहा है। और इसके बाद हम अगर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉमन रिएक्शन कोविड-19 पेंडेमिक जैसा कि बताया कि एक अलग तरह की सिचुएशन सामने खड़ी कर दी है इसने। तो इसके बाद अब हो क्या रहा है कि जैसे जैसे ये कोविड-19 आउटब्रेक कर रहा है अलग अलग रीजन में, अलग अलग कम्युनिटीज़ में, उसके बाद जो लोगों की शिकायतें स्ट्रेस से रिलेटेड हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। इनका जैसे कि स्ट्रेस, दे आर फीलिंग कॉन्टिन्यूसली स्ट्रेस एंड ओवरवेल्म्ड, एंग्जाइटी, वरी और फियर, रेसिंग थॉट, सैडनेस, fearfulness, loss of interest in usual enjoyable activities, physical symptoms such as increased heart rate, and this is enhancing the danger for the heart patient for getting the cardiac arrest, stomach upset, fatigue, frustration. These are the medical issues associated with the thoughts and feeling that people right now having because of outbreak of this COVID-19. Now, the digital dimension on which this slide is focused, this presentation is actually focused. We all hear about the medical issues, we all hear about the things, but we have something that is in our pocket and that is continuously generating the stress, and the consequences are really very dangerous. In a survey conducted by Hammerkopf Consumer Survey, they also find that at the prime time, streaming on the platform began at 7 PM the first week of the lockdown. जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ, टीवी प्रोग्राम का जो देखने वालों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। और ये सर्वे हमारा मुंबई, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली और चेन्नई को लेकर किया गया था। इसके बाद amid lockdown, Indians have turned into social media to pass their time. बहुत सारे लोग बहुत सारी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए। 87% इंक्रीज लॉन्च की गई
जो लॉकडाउन से पहले थी सोशल नेटवर्किंग एक्टिविटीज़ थे। इसके बाद ड्यू टू कोरोना वायरस पैंडेमिक मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड ग्लोब आर क्वारंटाइन इन देयर होम्स एंड आर सफरिंग इन द इंटरनेट मोर देन एवर। Perhaps a way to address the loneliness and boredom, many of them spending more time on the internet and getting hooked. लोग एक कमरे में बंद थे, उनके पास एक ऐसा डिवाइस था जिससे वो जुड़ सकते थे, वो लगातार जुड़े। 75% यूज़र्स, इंडियन यूज़र्स ने उन्होंने अपना टाइम सोशल मीडिया पर पैंडेमिक के दौरान गुजारा। ऐसी हमारे पास जो डेटा है वो आया है इस रिसर्च में। 87 प्री पैंडेमिक टाइम से दिस डेटा इज 87% हायर। It means that they spend more time than the real life on the virtual platforms. So this before lockdown, social media usage was average 150 minutes per day, and surprisingly, it enhanced to 280 minutes per day. And this survey also revealed that the 75% people spending more time on the Facebook, Twitter, and WhatsApp compared to the week before. And beside this, the internet browsing and streaming platform also seen a rise in the viewership according to the survey. Internet browsing saw a 72% spike during the first week of the lockdown. You can see that all the data are more than 50%. So it is a drastic change in the behavior in the social networking usage. Then with this सेल फोन एडिक्शन, ये स्मार्टफोन एडिक्शन जिसको हम स्मार्टफोन कहते हैं, वो ओवर स्मार्टनेस की जड़ बन गया। और इससे हमको काफ़ी सारे ऐसे डेटा मिले जिन्होंने जो साइकियाट्रिस्ट हैं या फिर जो मनोवैज्ञानिक हैं उनको चौंकाने वाले नतीजे दिए। 70% लोगों ने अपने फ़ोन मॉर्निंग में उठने के बाद में पहले ही घंटे में चेक करते हैं। 56% चेक उन्होंने जैसे ही रात को सोने से पहले, जो कि हाईली रिकमेंडेड है कि ना किया जाए। और 48% ने चेक किया पूरे 48% चेक देयर फोन ओवर द वीकेंड। 51% कॉन्स्टेंटली चेक देयर फोन ड्यूरिंग द वैकेशन। 44% रिपोर्टेड दे वुड बी फील वेरी एंग्जाइटी एंड इरिटेबल इफ दे डिड नॉट इंटरेक्ट विद देयर फोन विद इन अ वीक। तो ये डेटा में अप्रॉक्सीमेट 50% सारे हैं। और स्मार्टफोन और इंटरनेट एडिक्शन इज ऑल्सो नेगेटिवली इम्पैक्ट अवर लाइफ, रियल लाइफ लोगों की रुइन होने लगी। लोनलीनेस एंड डिप्रेशन इस कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से लोग आए, क्योंकि इतने बड़े पैमाने से वर्चुअल वर्ल्ड पे जुड़े थे, रियल वर्ल्ड से कटते चले गए। और रिसेंट एक्सप्लोजन ऑफ आईफोन, एंड्रॉयड एंड अदर स्मार्टफोन हैज प्रोवाइडेड पीपल विद द एबिलिटी ऑफ एक्सेस द एंटायरली इंटरनेट इन वन गो एंड मोमेंट। आप लोगों को याद होगा कि पहले डेटा इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं था, बट अभी अनलिमिटेड अवेलेबिलिटी की वजह से चलते फिरते कहीं भी वन गो पे डेटा मिल रहा है। तो जिसके नतीजे में क्या हुआ कि एज़ पर मोबाइल टेक्नोलॉजी फैक्ट शीट 2013 December 27, 67% स्मार्टफोन owners have admitted to checking their phone. This was the regular data, and this was the data after the pandemic outbreak and lockdown imposed in all over the world. So need for the cell phone and phone more than often in order to active some desired effect. इसके बाद जब इनके बारे में कुछ ये पॉइंट्स हैं जो साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग जगह पर किया है कि अगर इनमें से 4 में से कोई भी तरह का लक्षण किसी में दिखाई पड़ रहा है तो ही इज़ एडिक्टेड विद द सेल फोन। तो प्री ऑक्यूपेशन ऑफ द स्मार्टफोन यूज़, इसके बाद इन्होंने एक्सेसिव यूज़, जिसके बाद इंसान भूल जाने लगे कि वहाँ पर टाइम हम फ़ोन पर बिता रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसमें टाइम का पता नहीं चल रहा था। एंड विड्रॉल व्हेन सेल फोन एंड नेटवर्क इज़ नॉट अनरीचेबल, जब सेल फोन नेटवर्क जाने लगे तो उसके बाद में लोगों को एंग्जाइटी फील होने लगी, टेंशन फील होने लगी, डिप्रेशंस फील होने लगे और रेस्टलेसनेस फील होने लगी। और ये क्लियर साइन था कि लोगों में जो स्ट्रेस जिसकी हमने पहले स्लाइड्स में बात की थी वो इंड्यूस होना शुरू होगा, उनको स्ट्रेन में डालना शुरू कर दिया। जिसके बाद अब इसके बाद जो अभी की सिचुएशन है, इस इन्हांस सेल फोन यूज़ या इन्हांस टेक्नोलॉजी इस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ने जो बढ़ाया है, उसमें लोग ज़्यादा अकेला, ज़्यादा डिप्रेस महसूस करने लगे हैं, फीलिंग एंग्जाइटी फील करने लगे, इंक्रीज स्ट्रेस को फील कर रहे हैं, एक्सेसरेटिंग अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें लोगों को अलग अलग तरह की दिक्कत आ रही है और कई सारी तरीके से डिमिनिशिंग योर एबिलिटी टू कंसंट्रेट,
कंसंट्रेशन लॉस होता है बिकॉज कंसंट्रेशन का जो हमने अभी ब्रेन का डायग्राम देखा था उसमें 3 जो पोर्शन देखे थे, तो उसमें जो याद कभी तभी किसी चीज़ को रखा जा सकता है जब वो मेमोरी वहाँ पर कोई भी मेमोरी के लिए स्पेस खाली हो। हमारे पास जो मिस इन्फॉर्मेशन का जो कचरा हमारे माइंड में लगातार आता जा रहा है इन सेल फोन और इनकी गलत तरीके से इस्तेमाल की वजह से, तो इससे वो स्पेसेस लगातार कम होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से हमको जो काम की चीज़ें हैं वो याद रखने में प्रॉब्लम हो रही है। इसके बाद डिस्टर्बिंग ऑफ स्लीप, इफ द सिस्टम इज गोइंग टू शेक then it means that the system of human body is going to shake, then it first strike on the sleep. So excessive smartphone use has the potential to disturb the sleep, and we have the serious impact on the overall mental health because sleep is closely associated with the memory and it reduces the cognitive and learning skill. It is a misconception that in the sleep we are not learning, but in sleep our mind is active and he is उसको जो बातें उसने पढ़ी होगी, जो नॉलेज उसको मिली होती है, उसको वो कहते हैं कि पक्का कर रहा होता है और अपनी परमानेंट मेमोरी में डाल रहा होता है। इस तरीके के प्रोसेस कॉग्निटिव वे में चलता है, जो इन सेल फोन की वजह से, इनके एक्सेसिव यूज़ की वजह से, जो डाटा हमने पहले देखा जो 50, 60, 70% बढ़ चुका है, उसकी वजह से ये सामने आ रहा है। इसके बाद इनकरेजिंग द सेल्फ अब्सॉर्प्शन, इसकी वजह से कई सारे और भी चीज़ें मिल रही हैं, यानी सेल्फ सेंटर्डनेस, डिस्टेंस ऑफ योर रियल लाइफ रिलेशनशिप एंड मेकिंग इट हार्डर टू कोप विद पेन. There have the cases observed in which the people are sitting on a one place in whole day and they have not communicated even with their family members, and it is by this the people are losing the ability to interact with the people and they become वो self-centered बनते जा रहे हैं और डिस्टेंस ऑफ रियल लाइफ रिलेशनशिप इससे ruin होती जा रही हैं. Next is these are the warning signs. Again, the warning signs that are suggested that signify that a person is become the slave of his smartphone. This is restlessness, anger of irritability, difficulty in concentrating and sleep problems, craving access to smartphone or other device. If a person is not finding the phone, then he is feeling some difficulty in his routine, like he's craving for it. So these are the sign of the stress-induced strain that is affecting the human life. And leaving behind the stress phone, another thing is also there. People are indulge in the video games also, and video games are designed with the help of the psychological advice that are designed in such a way that the peoples get connected with the various stages with the video game. And these are the name of certain video games that affected the population a lot, and is the adverse effect of this kind of technology. जब शुरुआत में वीडियो गेम बने थे तब इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही, तो कहीं कहीं वर्चुअल रियलिटी की वजह से लोग असली और नकली में सही गलत का फैसला करना भी भूलते जा रहे हैं. इतने एडवांस हमारे इस टाइम वीडियो गेम्स बन चुके हैं. तो ये टीज आर द स्टेज है जिसमें 16 ईयर बॉय ने, एक लड़के ने शूट कर दिया था अपने ही पेरेंट्स को डिसएग्रीमेंट की वजह से, गेम्स बीइंग कॉन्फिस्केटेड, उसके गेम्स को हटा लेने से. दिस इज द stress level in the 16 year old person, and this is not the single case. These are the name of all these cases in which the people's this is a 18-year boy from Taiwan die because he played the 40 hours non-stop game. अगर किसी से हम कहें कि 40 घंटे उसने गेम खेला तो शायद कोई मानेगा नहीं, लेकिन ऐसा हुआ है. इसके बाद इसमें जिस तरीके से एडिक्शंस लोगों को बने हैं, जो इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा खतरा इसने स्पेसिफिकली टीनेजर्स और यूथ को लाके खड़ा कर दिया. तो इसी तरीके से हमारे ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 2000, इसमें 8 साल के लड़के ने लूसियाना shot his 87-year-old grandmother, and this grand theft auto in this case 18-year-old shot their 3 police officers. In this 2014 this was the name of the game, and 11-year-old was stabbed to death in the Philippines by a 16-year-old boy. And this Ghost Recon 2016, this 28-year-old from Philadelphia beat his 17-month daughter. You can see the age and death after the latter total. So this is the result of the stresses induced by these video games and the technology that is implemented in this
in designing these games, so that the people can get connected with this. So lots of examples are there. There is no meaning to read everything. These are all available. But बड़ी बात यह है कि जो एज ग्रुप दिखाई पड़ रहा है वो 12 से लेकर जो ये सारा यंग एज ग्रुप है, तो ये सारा जो इम्पैक्ट कर रहा है, दिस इज नॉट अ नेग्लिजिबल थिंग राइट नाउ. So these are some solutions. So I'm coming to sum up my presentation. These are solutions, self-help tips for the smartphone addiction. If you are observing the symptoms of cell phone addiction in you, then you can recognize the triggers that may make you to reach for your phone. You can आप देख सकते हैं क्या चीज़ आपको वहाँ पर सेल फोन देखने के लिए विवश कर रही है और उसको दूर कर सकते हैं. अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेक्टिंग द पर्सन एंड ऑनलाइन. एंड यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन में लोग अंतर भूलते जा रहे हैं, तो इसका भी एक इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. बिल्ड योर कोपिंग स्किल्स, जैसा आशीष सर ने अपनी प्रेजेंटेशन में पैक में बताया था कि कोपिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी बिल्ड करने की ज़रूरत है. रिकॉग्नाइज अंडरलाइंग प्रॉब्लम दैट सपोर्ट योर कंपल्सिव बिहेवियर. स्ट्रेंथन योर सपोर्ट नेटवर्क. ये बड़ी एक प्रॉब्लम है जो लास्ट अभी पॉइंट मैंने इसको जो आइडेंटिफाई किया है, इसमें लोग कैसे जैसे अपने पेरेंट्स तक से कटते जा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स तक से कटने जा रहे हैं. दे आर इंडल्ज इन द ऑनलाइन एक्टिविटीज़. एज अ रिजल्ट द सपोर्ट सिस्टम इज वैनिशिंग from their surrounding, and they are committing suicide because of these stresses induced by the digital solutions. We can modify the smartphone uses step by step. You can set the goals for that and turn off your phone at night, and all this thing, remove social networking interaction. And these are another thing, that is long term stress is holding. अगर हम किसी भी 1 किलो के अगर हम वजन को भी अगर पूरे 24 या 48 घंटे तक पकड़ के खड़े रहें तो वो शायद हम पकड़ नहीं पाएंगे. तो हम जो चीज़ें ये टेक्नोलॉजी को लगातार हाथ में पकड़े हुए हैं और इसको लगातार यूज़ कर रहे हैं, तो इनका वजन इतना बढ़ता चला जा रहा है कि ये हम लोगों को एंग्जियस, सैड, डिप्रेस्ड, एंग्री, हेल्पलेस, हमारी सोसाइटी को उसकी तरफ धकेल रहा है, जिसका सबसे बड़ा शिकार यंग जनरेशन है. और लॉन्ग टर्म स्ट्रेसेस के इंड्यूस में हार्ट डिजीजेस, हाई ब्लड प्रेशर, वर्सन क्रोनिक हेल्थ डिजीजेस. These diseases can be developed in a person if he has the symptom of the stresses. The importance to reduce stress level due to the COVID-19. These are the 10 ways to sort out this. So limit your exposure to the news. News is also because we have the mobile, and every minute, almost at every minute, we have the interaction with a flashing news, a sensational one. So this can be limited by subscribing the authentic channels, not subscribing the unauthentic ones or the YouTube channels that people are publishing for the sake of their business or marketing. Make sure to get the enough sleep. This is important aspect of the human behavior, because if you're not getting the enough sleep, whatever the reason it is, a mobile phone or some other stress, then it is certainly going to affect the entire your body. Thus, practice self-care. Self-care is also important. So eat healthy and well. Then reframe your thinking. Practice the positively and see the glass as half full, not half empty. Be optimistic. Practice mindfulness. Monitor your feelings. Stay connected with text, phone call, and Skype. So it is very important to stay connected in this tough time, in this challenging time. And this is going to address in our webinar to meditate by Dr. Avdhesh sir in his session. So this is also going to help a lot in reducing the stress level in our mind and perform better in this tough time. And the avoid self-medicating with alcoholic or drugs. This point is, I think, going to raised by every speaker because this self-medicating and alcohol or drugs affect the not cure any stresses. I believe they just suppress the stress, and then it affects the other parts of the body also. And government of India is also, and also global and global agencies also working for providing the well-being facilities to people. This lots of students are also associated with this webinar. So these are some sites that are shared by the Ministry of Health and Family Welfare
for taking care of mental health and well-being of the student during and after COVID-19 outbreak. In my last slide, so it is not the load that breaks us down, it is the way that we carry it. वजन कितना है इससे हम लोगों को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो चला जाता है, क्योंकि एक चींटी भी काफ़ी वजन उठा सकती है, लेकिन उसको हम कैरी कैसे कर रहे हैं, इस पर हमारा जो डिपेंड करता है कि रिएक्शन क्या होगा. जैसा अभी बताया है कि किस तरीके से हम इसको जो लॉकडाउन है इसको किस तरीके से हम जो इसके स्ट्रेसेस आए हैं, जैसे जो टफ टाइम आया है, इसके साथ में जो लोग डील कर रहे हैं उनके साथ कैसे हाथ से हाथ मिला के खड़े हों कि स्ट्रेसेस उनको ना हो, उनके साथ में मेंटल प्रॉब्लम्स उनको जो हैं वो शेयर कर सकें. तो इस तरीके से जो बर्डन सभी पर आया है, शेयर्ड बर्डन आया है, इसको कैसे हम बांट सकें, इसी से आगे सोसाइटी एक स्ट्रेस फ्री सोसाइटी बनने की उम्मीद कर सकती है. और इसी शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ. थैंक यू फॉर पेशेंसफुल लिसनिंग. And now, thanks, Dr. Avadhesh, for your wonderful presentation. You spoke in detail about the dangers of digital age stress, and also offered some doable and which can be incorporated kind of solutions which we need to be followed in our community as a whole. Now, without taking much more time, our next speaker today is Professor Anil Kumar Gupta ji, Head of Department ECDRM Division, National Institute of Disaster Management. I will request sir to give his talk on leadership, spirituality, and middle path. Dr. Gupta. Avdhesh ji, presentation हटा लीजिएगा. वो कैसा? सर. गुप्ता जी. यस सर, प्लीज. धन्यवाद आशीष जी और अवधेश जी आज के कार्यक्रम के लिए. और आज मेरे उद्बोधन में मेरा ये सोचना है कि मैं पूरा अंग्रेजी में संभाषण करने की बजाय मैं अंग्रेजी हिंदी मिलके बात करूं, क्योंकि ये विषय आज का जो है वो काफी मन के नजदीक वाली बात है. और मैं पिछले वक्तव्यों को बहुत अच्छे ध्यान से सुन रहा था. अभी अवधेश जी भी जो बात कर रहे थे उन्होंने बहुत अच्छे विस्तार से बात करी. मोबाइल जो स्मार्टफोन डिसीज है उसके बारे में उन्होंने काफी बात करी. और जब वक्तव्य चल रहे थे तो लोग मुझे भी देख रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ. तो कुछ लोग देख रहे थे कि मैं उसमें कुछ फोटो खींच रहा हूँ, फिर कुछ लोग देख रहे थे कि मैं बीच बीच में उठा के अपना मोबाइल फोन भी चेक कर रहा हूँ, कुछ व्हाट्सएप भी कर रहा हूँ. और ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा था, इसमें करीब 150 पार्टिसिपेंट्स हैं, इसमें से कई लोग ऐसे कर रहे हैं. कहना ये है. और मैं प्रीलूड में ये भी बताऊं कि अभी सोशल मीडिया में 2-3 दिन पहले किसी ने एक चित्र पोस्ट किया था फेसबुक पे शायद, फिर उसके बाद मैंने उसको लिंक्डइन में भी देखा कि जितनी रफ्तार से हिंदुस्तान में कोरोना का इन्फेक्शन बढ़ा है उससे ज्यादा रफ्तार हमारी वेबिनार्स की बढ़ी है हिंदुस्तान में. और अगर ये पूछना है आपको कि वेबिनार की रफ्तार कितनी बढ़ी है, तो मुझे लगता है कि इसका सर्वे हम सब लोगों से नहीं बल्कि हमारे घर में जो हमारे लिए खाना बना के हमको देते हैं उनसे पूछ लिया जाए तो वो बता देंगे कि कितनी बार उनको दोबारा खाना गर्म करना पड़ता है या हमको उठ के दोबारा गर्म करना पड़ता है. क्योंकि हम सुबह से लेकर शाम तक अभी ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पूरी तरीके से चपेट में है, जो अवधेश जी अभी इसका वर्णन कर रहे थे. कल मैं आपको शायद थोड़ा सा आश्चर्य भी लगे कि कल मैं आफ्टरनून में, डे टाइम में तो मीटिंग्स थी ही, आफ्टरनून में मैं लगभग 4:45 बजे जब मैं अपनी कुर्सी पे बैठा घर पे जाके, कल मैं थोड़ा जल्दी गया और मैं अपनी कुर्सी से 10 बजे उठा हूं अपनी कुर्सी से. एक मीटिंग खत्म होने के पहले दूसरी मीटिंग का वो आ रहा था, अलर्ट आ रहा था कि साहब अगली मीटिंग शुरू होनी है आपकी. और तो कभी कभी ये स्थितियां सिर्फ मेरे साथ नहीं, आप बहुत सारे लोगों के साथ अभी हो रही हैं. तो बिल्कुल ये समय ऐसा है कि कैसे हम इसमें एक परिवर्तन लाएंगे
और चूंकि जो रिस्क फेज अभी कोरोना वायरस के बाद आया है, इसमें लग रहा है कि हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, हमारी परफॉर्मेंस कम हो रही है। परफॉर्मेंस या प्रोडक्टिविटी सिर्फ व्यक्तिगत तौर पे नहीं, बल्कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पे। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन सोच रहे हैं कि भाई हमारा रिसर्च आउटपुट नहीं आ पा रहा है। रिसर्च स्कॉलर सोच रहा है अभी मेरे पेपर नहीं पब्लिश हो रहे हैं, जो एडिटर्स हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनकी जर्नल का इशू सही टाइम पे नहीं आ रहा है। जो एंटरप्रेन्योर है वो कह रहा साहब मेरा जो पहले का प्रोडक्ट बना है वो बिक नहीं रहा है। सो इस तरह की बातें बहुत सारी हो रही हैं। और इस पेंडेमिक 4 महीने ने ऐसे सबक दिए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के और उसके साथ साथ मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस के। और ये बड़ी बात है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट पहले बिल्कुल एक अलग विषय होता था, क्राइसिस मैनेजमेंट, इमरजेंसी मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सब लोग अलग अलग डील करते थे। स्ट्रेस मैनेजमेंट सिर्फ साइको सोशल वाली बात करते थे, क्राइसिस मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वाले बात करते थे, अब बिजनेस मैनेजमेंट वाले उसको बिजनेस कंटिन्यूटी के पर्सपेक्टिव में बात करते थे, डिजास्टर मैनेजमेंट वो डिजास्टर मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट होता था वो करते थे। अभी ये हो गया है कि सबको समझ में आ गया है कि नहीं, ये 80% 90% चीजें बिल्कुल बहुत एक दूसरे से मिली हुई हैं। तो स्ट्रेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ऑल्सो। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ योर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑल्सो। एचआर का जो बहुत बड़ा कंपोनेंट है। और अभी मेरे कुछ कलीग्स ने मिलके, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मिलके हैप्पीनेस एंड हाई परफॉर्मेंस का भी मॉड्यूल डेवलप किया है कि अभी कैसे इन चीजों से हम बाहर निकले। तो मेरा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, मैं उसको शेयर करता हूँ और इसके बाद थोड़ा सा चर्चा करूंगा मैं आप लोगों से। मुझे परमिशन दे दें अपना स्क्रीन शेयर करने के लिए। जी प्लीज सर, प्लीज शेयर जी। और मेरा हिंदी में संभाषण ठीक है या अंग्रेजी में बोलूं? नहीं सर, काइंडली सर, ठीक है सर, बिल्कुल जी, मेरा अभी शेयर नहीं हो रहा है अवधेश जी। सर। एक मिनट में देखता हूँ। हाँ सर प्लीज करिए। हाँ, अब हो रहा है जी। यस सर। दिख रहा है सर, इसको फुल स्क्रीन कर दीजिएगा। जी जी। सो आगे सर, आगे जी। थैंक यू। आपको ये टॉपिक लगेगा कि थोड़े दिन पहले भी मैंने इस पे वक्तव्य दिया था, बट अभी जो आज चर्चा होगी वो कुछ दूसरे परिदृश्य को प्रकट करेगी। और मैं यहाँ ये भी कहना चाह रहा हूँ कि मैं जो भी बातें करने जा रहा हूँ उसमें कुछ भी नया नहीं होगा। सारी बातें लगभग हम सबको पता है। हम सिर्फ एक परिदृश्य प्रकट करेंगे बात करके आपस में कि हम जो वर्तमान और सिर्फ ये 4 महीने की नहीं, बल्कि जो साइको सोशल इश्यूज या मेंटल हेल्थ के इश्यूज हमारे इन दिनों पैदा हुए हैं और जो हम विटनेस कर रहे हैं अपने आसपास, उनको हम किन बातों के तहत देख सकते हैं, कैसे उनको एनालाइज कर सकते हैं और कैसे उनका कुछ सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। मैं शायद कोई सोल्यूशन भी इसमें नहीं दूंगा, मैं सिर्फ ये बातें कहूंगा कि कैसे हम उनके सोल्यूशंस ढूंढ सकते हैं, है ना। जैसे कि एक थीम की बात करते हैं, हम कहते हैं चैलेंज ऑफ द बैलेंस। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से बहुत सीनियर हैं, मेरे वरिष्ठ हैं, वाइस चांसलर साहब होंगे, डीन्स होंगे, प्रोफेसर होंगे, कुछ प्रतिभागियों में भी होंगे, और बहुत लोग ये जानते होंगे कि बीच में हम लोग काफी दिनों तक ये बात करते थे कि साहब विन विन सिचुएशन की बात करिए, बैलेंस की बात मत करिए, है ना। और मुझे याद है कि मैंने 1996 में एक मैगजीन एडिट करी थी, और उस समय जो CSIR के DG थे उन्होंने रिलीज किया था, माशेलकर साहब ने। तो उसमें एडिटोरियल में मुझे कहा गया था कि आप अपना एडिटोरियल बदलिए, आप इसमें विन विन सिचुएशन की बात कीजिए। तुमने उनसे बोला था साहब बहुत समय ऐसी सिचुएशन होती है जब स्कैर्सिटी होती है और आप विन विन नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 5 रोटियां हैं और 2 लोगों को खाना है, तो आप 4-4 रोटियां दोनों को नहीं दे सकते हैं, आपको एक बैलेंस करना होगा जितनी उपलब्ध है उसके हिसाब से। और मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी और लीडरशिप के मामले में और जो मेंटल स्ट्रेस के मामले में कहीं ना कहीं ये बैलेंस और एंड ये इसकी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अदरवाइज द रेस इज ऑलवेज एंडलेस, एस्पिरेशंस, ह्यूमन एस्पिरेशंस आर ऑलवेज एंडलेस। जैसे मैं अपने बाकी वक्तव्यों में भी कई बार बात करता हूं कि अभी जो हमारी जनरेशन है उसमें बहुत सारे लोग ये फेस करते हैं कि साहब 2 कमरे का मकान हमें मिल गया, 2 कमरे के मकान के बाद जिस दिन हम उसमें गृह प्रवेश होता है उसके अगले दिन से चिंता होती है कि ये अगला मकान हमारा 3 कमरे वाला कब होगा, है ना। और इसके बाद साहब हम फिर लग जाते हैं
कि अब इधर से उधर से कैसे। इसके बाद 3 कमरे का मकान हो जाता है साहब, थोड़ी सी खुशी हुई, धूमधाम हुआ, इसके बाद फिर प्रयास होता है कि 4 कमरे वाला कैसे होगा। और मैं खासकर शहरों के परिदृश्य में आप देखें, और आप देखें कि दिल्ली, मुंबई, ऐसे शहरों में, बड़े शहरों में, और 4 कमरे का मकान भी आपको मिल जाता है, लेकिन वो होता कब है, जब 4 कमरे का मकान आपको मिलता है तो आपके परिवार के आधे से ज्यादा सदस्य दूसरी जगह जाने के लिए तैयार हो चुके होते हैं, और जब आपको मकान मिलता है तो आप रहने वाले उसमें नहीं होते, सिर्फ मकान होता है। तो ये एक जो डायकोटमी है लाइफ की, शायद ये बहुत जरूरी है इस बात को समझने के लिए कि क्या बैलेंस हमें लाइफ में लाना है, और बैलेंस लाइफ में लाने के लिए अपनी सोच के अंदर एक परिवर्तन लाने की जरूरत है। वो इसलिए भी जरूरी है कि अभी मैंने एक बहुत छोटा सा परिदृश्य उदाहरण के रूप में लाया। अभी हम इसको ग्लोबल परिदृश्य के में देख लें, अगर बिल्कुल इसको स्केल अप कर दें पूरी दुनिया के लेवल पे, तो हम देखेंगे कि शायद हमारी जनरेशन जो है, अवधेश आप हमसे थोड़ा छोटे हैं तो आपने उतनी चीजें नहीं देखी होगी, लेकिन मेरे जो यहाँ पे सीनियर लोग बैठे हैं उन्होंने मेरे से भी ज्यादा देखी होगी। आशीष जी ने लगभग देखी है जी। वो टेलीफोन भी देखा है जो 2 पीस टेलीफोन होता था, है ना, जो आपने कभी गाना तो सुना होगा, मेरे पिया गए रंगून वाला, कि माउथ पीस अलग होता था, ईयर पीस अलग होता था। और आज आप देखिए कि कितना रेवोल्यूशन आप देखें आईटी और कम्युनिकेशन में हो गया। तो शायद इस जनरेशन ने जो टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन देखा है वो इस दुनिया की किसी जनरेशन ने नहीं देखा। इतना परिवर्तन हमने वो देखा जहां 800 मिलीग्राम की टैबलेट खाने के लिए कहते थे, अब हम नैनो मेडिसिन की बात करते हैं कि साहब वो बिल्कुल मिलीग्राम के फ्रैक्शन से आपकी बीमारी ठीक करेंगे। तो आप देखिए कहां से हम कहां तक आ गए। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं कि हम ये सब होने के बाद भी हमारी मिजरीज क्यों नहीं दूर हो रही हैं? अभी भी डिजास्टर्स बढ़ रहे हैं, अभी भी जो अनरेस्ट है, मेंटल अनरेस्ट, सोशल अनरेस्ट अभी भी बढ़ रहा है। अभी अमेरिका जैसे देश में, जिसको हम सबसे ज्यादा कहते थे साहब बहुत सबसे बढ़िया देश है, अमेरिका चले जाएं तो जिंदगी हमारी संवर जाएगी, वहां पे देखिए आप धरने प्रदर्शन, इस तरह की बातें हो रही हैं। और वो धरने प्रदर्शन जो हम देख रहे हैं वो एक्चुअली एथनिक रिलेशन नहीं है, असली चीज अनरेस्ट है। जब अनरेस्ट होता है तो आपको कोई बहाना चाहिए होता है, आप धरना प्रदर्शन करते हैं, तो वो बातें हैं। और उसका असली कारण है इकोनॉमिक अनरेस्ट, जॉबलेसनेस, ये बहुत सारी बातें अभी हैं, सोशल अनरेस्ट, मेंटल अनरेस्ट। तो ये बातें कम्युनिकेशन में भी आपने देखा होगा, इसमें बहुत सारे इसमें पार्टिसिपेंट्स में हमारे टेलीकॉम इंजीनियर भी होंगे, और मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जो आईटी एक्सपर्ट, टेलीकॉम एक्सपर्ट, डेटाबेस में काम करने वाले, जीआईएस में काम करने वाले लोगों ने मेरे साथ काम किया है। बहुत बार ऐसा होता है साहब, जो आपको कम्युनिकेशन पढ़ाता है वही बहुत पुअर होता है कम्युनिकेशन में। आप उसे मैसेज करते हैं वो मैसेज नहीं उठाता, आप उसे फोन करते हैं वो फोन ही नहीं उठाता, है ना। तो एक तरफ अवधेश जी कह रहे थे आप फोन का इस्तेमाल कम करें, दूसरी तरफ जो आपका कोई फोन नहीं उठाता तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं। तो किस तरह से बैलेंस आएगा यहाँ पे? अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरे ख्याल से पिछले 10 साल के अंदर जिस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन आया है, और अगले 10 साल के अंदर क्या आने वाला होगा। कल मैं जस्ट जोकिंगली किसी से कह रहा था, मेरी एक कलीग है, उनसे मैं ऐसे ही कह रहा था कि आपको अभी अवधेश जी ने मुझे लिंक भेजा, आप सबको लिंक भेजा होगा उस पे, ईमेल पे या व्हाट्सएप पे, और आपने क्लिक किया और आप ये जो जूम का प्लेटफॉर्म है वहां पे पहुंच गए, है ना, यही किया ना? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यू आर ऑडिबल। आ रही सर, प्लीज। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे अभी अवधेश जी ने हमको एक लिंक भेजा और हमने उस पर रजिस्टर किया, लिंक मिला, हमने लिंक को प्रेस किया और हम इस प्लेटफॉर्म पे आ गए। मुझे लगता है 10 साल के अंदर ऐसा भी हो सकता है, या 10 साल नहीं 20 साल या 25 साल में, कि हम फ्लाइट की टिकट पे रजिस्टर करेंगे जो, या ट्रेन की टिकट पे रजिस्टर करेंगे और हमें एक लिंक आएगा और हम उस लिंक को प्रेस करेंगे और हम प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएंगे। तो अभी जैसे जूम के प्लेटफॉर्म पे पहुंचे हैं, तो हो सकता है टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाए कि हम उस लिंक को प्रेस करें और एयरपोर्ट के प्लेटफॉर्म पे या ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज से 30 साल पहले जो हम फिक्शंस देखते थे वो अभी रियलिटीज हैं।
पहले वो फिक्शंस होते थे, सबको याद होगा बचपन में फिक्शंस देखे हैं। तो टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से चली है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी सोशल एंड मेंटल मिजरीज हैं वो भी बढ़ी हैं। अभी हमारी रोबोटिक्स इतने आगे से बढ़ रही है, बहुत तेजी से रोबोटिक्स जा रहा है। मुझे याद है पिछले साल एक ग्लोबल सिंपोजियम हुआ था ऑल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स पे, और मैं उसमें एक उद्बोधन के लिए मुझे बुलाया था। तो मैंने उसमें यही बात बोली थी कि इमोशनल इंटेलिजेंस अगर हम ध्यान नहीं रख पाते हैं तो शायद जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका पर्पस पूरा नहीं हो पाएगा। और यही बात पिछले वक्ता भी कह रहे थे कि जो आईटी है उसका यूज है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो इमोशनल जो स्ट्रेस है उसमें भी इजाफा हुआ है। तो इसमें मैं तो बल्कि ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी बहुत जल्दी, अभी हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे थे और ह्यूमन राइट्स में हमने बात करनी शुरू करी, इसके बाद ह्यूमन राइट्स के बाद साहब विमेन राइट्स की बात आई, इसके बाद हम काफी सालों से अब चाइल्ड राइट्स की बात कर रहे हैं कि बच्चों के क्या अधिकार होते हैं साहब, यूनिसेफ उस पर काम करता है, काफी करते हैं। फिर अभी पिछले कुछ सालों में जेंडर, जो थर्ड जेंडर की बात हो रही थी कि अभी थर्ड जेंडर के राइट्स की भी बात आ गई साहब, ट्रांसजेंडर की राइट्स की बात आ गई। अभी मुझे लगता है कि ये राइट्स वाली बात अभी रुकनी नहीं है, अब बहुत जल्दी रोबो राइट्स की बात आएगी कि साहब आप रोबोट से कितना काम ले सकते हैं, और अगर हम उसमें अभी इंटेलिजेंस भी उनका बढ़ रहा है तो ऐसी भी हालत हो सकती है कि रोबो साहब नाराज हो गए और आपको 2 थप्पड़ लगा दिए उन्होंने, आपने उनसे अननेसेसरी काम कराया। तो वो भी पॉसिबिलिटी होगी कि रोबोज के आपके जो वर्क एथिक्स बनाने पड़ेंगे, राइट्स बनाने पड़ेंगे। तो अभी ये भी हो रहा है कि ह्यूमन एंड मशीन के बीच में जो डिफरेंस है बेसिकली वो कम होता जा रहा है, एंड दैट इज ऑल्सो द रीजन दैट डिपेंडेंस ऑन द मशीन इज ग्रोइंग। इवन देखिए अभी फ्रेंड्स के लिए आपके पास ऐसे टैडी और डमीज ऐसे तैयार हो रहे हैं, इफ यू आर मिसिंग ए फ्रेंड आप वो टैडी के साथ बात कर सकते हैं, बैठ करके कॉफी पी सकते हैं साहब, उसके अंदर इट विल बी हैविंग ऑल दैट फीचर्स विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो आपके साथ बात कर लेगा, आपके क्वेश्चंस का जवाब दे देगा। तो अभी आने वाले समय में इसके साथ मुझे लगता है पोस्ट कोरोना पीरियड में ग्लोबली एक वर्क कल्चर में भी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। तो अभी तो जो स्ट्रेस है वो तो है, लेकिन जब ये वर्क कल्चर में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, व्हेन यू विल बी वर्किंग योर काउंटर पार्ट विल बी, अभी जैसे हम बोलते हैं साहब बेल दबाते हैं या फोन करते हैं तो आपके ऑफिस में एक पर्सनल असिस्टेंट होते हैं या आपके कलीग होते हैं साहब, वो उठाते हैं फोन और आपसे बात करते हैं। ये बहुत समय आएगा कि आप बजर दबाएंगे तो आपका रोबो आपसे बोलेगा कि साहब किससे कनेक्ट करना है फोन, आपको चाहिए चाय कॉफी चाहिए, क्या चाहिए, है ना, कितने गेस्ट हैं, कितनी चाय चाहिए। तो हो सकता है कि ये सब भी वर्क कल्चर में ट्रांसफॉर्मेशन आए, एंड दैट विल आल्सो लीड टू ए शिफ्ट इन द रिलेशंस बिटवीन द पीपल। सो ये हमें किस स्थिति में लेके जा रहा है, इसके बारे में हमको थोड़ा सा चिंतन करने की जरूरत है। इसके बाद ये भी जरूरी है कि विद द ग्रोथ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नाउ वी आर मूविंग फास्ट ऑन towards नैनो टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन ऑल्सो। सो 3-4 तरीके की बातें आती हैं, जैसे कि हम राइट्स बेस्ड अप्रोच करते हैं, सब ये इसका अधिकार है। ये भी बड़ी बात होती है ग्लोबली बहुत, इसको वो कहते हैं साहब राइट्स बेस्ड अप्रोच होना चाहिए कि इसका ये राइट है, इसका ये राइट है, फैमिली में बच्चे का ये राइट है, विमेन का ये राइट है, मेन का ये राइट है, कोई डिसेबल्ड है तो उसका ये राइट है। तो ये भी एक डायकोटमी है और ये सोचने का विषय है कि क्या हमें राइट्स बेस्ड अप्रोच रखना है, क्या हमें वैल्यू बेस्ड रखना है कि नहीं राइट्स की बात नहीं है, लेकिन मेरा अपना वैल्यू है, मेरा अपना जो जिसको हम कई बार कहते हैं मन, या अपना जो एक जो अंदर का एथिक्स होता है वो है, वो ये कहता है नहीं साहब मुझे ऐसा ट्रीटमेंट करना चाहिए लोगों के साथ या मेरे कलीग्स के साथ या जो सोसाइटी में मेरे दूसरे काउंटर पार्ट हैं, या केयर बेस्ड होना चाहिए जिसमें हम कंपैशन की भी बात करते हैं। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि एक तरफ लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, मोबाइल टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, बट दूसरी तरफ आप लोग देख रहे होंगे कि वापस से बहुत सारे लोगों का रुझान वापस स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी हो रहा है। ये मेरे फादर का ऑब्जर्वेशन था, उन्होंने एक बार बोला, क्योंकि उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस मुझसे ज्यादा है, वो मुझसे बहुत पहले दुनिया में आए, तो उन्होंने बोला कि अभी लोग टेम्पल्स में बहुत ज्यादा लोग जाने लगे हैं। तो देन आई ट्राई टू एनालाइज
कि इसमें क्या ट्रुथ है, और अगर है तो क्यों है। तो शायद इसीलिए कि लोगों की मिजरीज बढ़ गई हैं, लोग अपनी प्रॉब्लम अपने फ्रेंड से अपने घर में शेयर कम कर पाते हैं। तो उनको शेयर करने के लिए या तो सोशल मीडिया होता है, और या फिर टेम्पल्स होते हैं, या जिसको भी वो गॉड मानते हैं, जिस भी रिलीजन के होते हैं। तो प्रोबब्ली गॉड इज समथिंग विच इज एक्सेसिबल टू एवरीवन, with whom you can share your miseries, your guilt, your issues, your challenges. तो ये कहीं ना कहीं बातें बढ़ रही हैं। तो मुझे लगता है कि spirituality based issues in management are also becoming very very important. Just to share with you that IIT मुंबई में जो उनका मैनेजमेंट का जो कोर्स है, उन्होंने एक मॉड्यूल लॉन्च किया है स्पिरिचुअलिटी इश्यूज इन बिजनेस मैनेजमेंट, और बड़ा उसका डिमांड है, काफी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल वो लोग मान रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए ये कोरोना के साथ कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अभी इंजीनियरिंग के मेरे जो मित्र हैं वो सब एग्री करेंगे कि इंजीनियरिंग में हमारा फोकस सारा जो है अभी चल रहा था मैकेनिक्स की तरफ चल रहा था, ऑटोमेशन की तरफ चल रहा था। अभी कोरोना आने के बाद वापस इंजीनियरिंग के अंदर भी इंपॉर्टेंस ऑफ द बायोलॉजिकल साइंसेज, मेडिकल साइंसेज हैज सडनली इंक्रीज ओवर फास्ट 4 months। अभी लग रहा है कि शायद ये डिसिप्लिन इक्वली इंपॉर्टेंट या ये डिसिप्लिन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है, क्योंकि अभी अगर विध्वंस करने के लिए हमको सिर्फ जो है एक न्यूक्लियर बॉम्ब की जरूरत नहीं है, क्योंकि शायद उसमें डिप्लोमेटिक इशू से हमको इस्तेमाल नहीं कर पाए, बट these kind of weapons, bio weapon, this kind of things are also becoming very important. So certainly, और जब हम बात करते हैं इंटर रिलेशंस की, तो उसमें भी हमें होराइजन बदलने की जरूरत है, होराइजन बढ़ाने की जरूरत है। रिलेशनशिप जो हम बात करते हैं साइको सोशल में, तो शायद साइको सोशल में रिलेशनशिप सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं होता, ह्यूमन टू नेचर भी होता है। और जब नेचर की बात करते हैं, बहुत सारे लोग आप देखिए कि जिनके घर के सामने एक पेड़ होता है, उसके साथ कैसा रिलेशन होता है उनका अपने पेट्स के साथ कैसा रिलेशन होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस चीजों को समझना, मैं अभी मेरे मित्र आशीष पांडा जी से थोड़े दिन पहले बात कर रहा था, और उन्होंने कहा सर ये विचार बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे और भी चर्चा करनी चाहिए, अगली बार हम और डिटेल चर्चा करेंगे। मैंने ये कहा कि हम सब साइंस के विद्यार्थी हैं और हम जीवित और अजीवित पे भेद करते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जिस चीज को हम निर्जीवित कहते हैं उसके अंदर भी एक डायनामिज्म मौजूद है, उसके अंदर भी एनर्जी फ्लो चल रहा है, उसके अंदर एनर्जी डिफरेंट साइक्लिक एंटी साइक्लिक डायरेक्शन में चल रही है। अगर हम थोड़ी सी न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बात कर लें, है ना, तो सबको समझ में आ जाएगा कि लिविंग और नॉन लिविंग के डिफरेंस आपके सब खत्म हो जाते हैं। जिसे हम लिविंग कहते हैं उसके अंदर भी वही बायो मेगा मॉलिक्यूल्स हैं जो इस लकड़ी में या इस बोर्ड में होंगे। तो इसका मतलब जो आपका इमोशनल अटैचमेंट है वो लिविंग के साथ भी होता है और नॉन लिविंग चीजों के साथ भी होता है। तो हमें पूरा इस होराइजन को बड़ा करके देखना पड़ेगा जब हम मेंटल हेल्थ की बात करेंगे। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि जो हम डिजास्टर्स पे करते हैं, डिजास्टर्स के संदर्भ में जो हम इनकी बात करते हैं, तो मैं ब्रॉडली कहना चाहूंगा कि अभी क्या हो रहा है, हम पूरी दुनिया में चेंज महसूस कर रहे हैं कि हमारा जो पर्यावरण का सिस्टम है उसमें चेंज हुआ है, और साथ साथ सोशल सिस्टम में भी चेंज हुआ है, और इसके साथ टेक्नोलॉजी में भी चेंज हुआ है। तो जो 3 चीजों में, तो 3 बड़े डायमेंशन हैं लाइफ के, उनमें जब चेंज हुआ है तो हमें अपने मैनेजमेंट सिस्टम में भी चेंज लाना पड़ेगा टू एडजस्ट विद दैट। यूरोपियन कंट्रीज में चेंज मैनेजमेंट एक नया सब्जेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ाया जाता है, जिसमें कहते हैं कि अगर हमने एक स्विच बोर्ड को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह लगा दें तो क्या हमें पूरे मैनेजमेंट में हमें कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और उसका पूरा स्टडी करते हैं, और चेंज मैनेजमेंट के अंदर ये सब बातें आती हैं। और इसके साथ ये भी है कि हमें अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करना। हम कई बार बड़े बड़े टिपिकल बड़े टिकलिस्ट से, बड़े कॉम्प्लेक्स से मैनुअल्स प्रेजेंट करते हैं। कई अभी मेंटल हेल्थ की बातें कई बार ऐसी होती हैं कि वो बड़ी डिफिकल्ट टाइप की होती हैं, एंड समटाइम्स वी स्टार्ट प्रीचिंग अदर्स। दैट इज ऑल्सो बिग चैलेंज। कहते हैं साहब मुझे पता है कि मेंटल हेल्थ को कैसे मैनेज करते हैं, मैं आपको बताता हूं आप ऐसे करो, बट प्रैक्टिकली क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं वो चीजें भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। कई बार कहते हैं साहब लोग कि लोग 8 घंटे इसलिए अपनी चेयर पे बैठे रहते हैं कि पूरे 8 घंटे वो प्रोडक्टिव काम नहीं करते, वो 8 घंटे में 3 घंटे वो अनप्रोडक्टिव काम करते हैं, वो मोबाइल पे बात करते हैं, वो अपने दोस्तों से बात करते हैं, वो मुस्कुराते हैं, वो पानी पीते हैं या चाय पीते हैं। अगर वो सिर्फ 6 घंटे पूरा दिल लगा के काम कर लें तो साहब 8 घंटे का काम हो जाएगा। बट प्रैक्टिकली
if you ask any senior person, if you ask any student, if you ask any faculty, अगर हम इसको फोर्स करें तो शायद ये मैन को पूरा मशीन में कन्वर्ट नहीं कर देगी। तो ह्यूमन का जो एक डायनेमिक लाइफ है, ह्यूमन की जो ओरिजिनलिटी है, उसको भी बरकरार रखना जरूरी है। परफॉर्मेंस के लिए वी कैन नॉट टॉक ऑफ कन्वर्टिंग ह्यूमन बीइंग टू मशीन। के साथ 4 घंटे आप बिल्कुल मत उठिए, बिल्कुल आंख मत झपकाइए, पूरा काम कर लीजिए, आपका सारा काम हो जाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। प्रोबब्ली इट कैन लीड टू कैटास्ट्रॉफिक रिजल्ट्स। So we have to start discussing together to find the solution. So this is also important. ये जेनरिक बातें हैं। इसके लास्ट पॉइंट पे हम पहुंच जाएं, अगर रेजिलियंस बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं, बहुत उनको स्ट्रेस फील होता है, आपको लगता है कि यार ये तो बहुत स्ट्रेस में, लेकिन दूसरे दिन वो आता है, सुबह आदमी आता है बिल्कुल वो चहकता हुआ आता है। एक आदमी होता है एक मॉडरेट स्ट्रेस में होता है, लेकिन वो पूरे हफ्ते उतनी स्ट्रेस में होता है। तो ये 2 अलग तरीके के सिंड्रोम हैं कि आपकी पर्सनल रेजिलियंस कितनी हो रही है। कई बार आप अप्स एंड डाउन्स आर द कॉमन थिंग, लेकिन हम क्या करते हैं, बीच में एक लाइन खींचते हैं। जब ग्राफ बनाते हैं तो हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, बट ट्रेंड लाइन जो होती है उसके ऊपर और नीचे भी पॉइंट्स होते हैं। तो इस बात को समझना कि वो ट्रेंड लाइन इन जनरल जो है वो लॉक फेज में है या लैग फेज में है, किस तरफ जा रही है। तो अप्स एंड डाउन्स आर ऑलवेज द पार्ट ऑफ लाइफ। हमेशा आपको सक्सेस मिले, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हमें इसकी जो काउंसलिंग करनी है, जो साइको सोशल इश्यूज की, मेंटल हेल्थ की, उसमें हमें ये भी बताना पड़ेगा कि हमेशा हर स्टेज में आपको सक्सेस नहीं मिलती, बट फेल्योर, स्मॉल फेल्योर्स आर आल्सो कंट्रीब्यूटर स्टेजेस टू सक्सेस। सो ये भी बात होती है। इसलिए रेजिलियंस को कैसे आप बिल्ड करेंगे, मेंटल रेजिलियंस को, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अभी जैसे सुसाइड के केस हुए, हम सुशांत की बात करते हैं, ये भी बात, I think there are so many cases we should analyze कि what is the best model, and इसमें भी मैं कहता हूं कि no one model can be the best model. लोग अपने एक्सपीरियंस के बाद कहते हैं कि साहब ये बेस्ट मॉडल है, but human nature is so dynamic that each one has to come up with his own model based on the surrounding environment, working environment. A model that can work within the army condition cannot work within the panchayati raj condition, cannot work with the bureaucratic condition, cannot work with the academic system. आप academic system में आप कहते हैं कि साहब आप जो है 10 बजे से लेके 5 बजे तक काम कर लीजिए, then probably the performance, no one can guarantee the performance, because sometimes your mind works so fruitfully कि आपके दिमाग में बहुत अच्छे विचार कौनते हैं, और sometimes आप मोटी किताब लेके बैठे रहते हैं और आप उसको बार बार पढ़ते हैं, आपके दिमाग में घुसता ही नहीं। इसीलिए एकेडमिक्स में आप पूरे 24 घंटे काम करते हैं। तो इस तरीके से आपका जो वर्क एनवायरनमेंट होता है, आपका जो पर्पस होता है, आप किस तरीके के काम में लगे हुए हैं, उसमें भी डिफरेंट मॉडल्स इजाद करने होते हैं। दूसरी बात है, अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर देखें तो जो स्टडीज होती हैं, हम जो रिस्क स्टडीज करते हैं, उसमें हम 2 तरीके की बातों को शामिल करते हैं कि व्हाट कैन बी द डेविएशंस इन द डिजाइन, what can be the deviations into the functionality of those machines. So इसका मतलब है कि एक पार्ट उसके डिजाइन इंटेंट में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बट जब उसको कंबाइन करते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक बॉल बियरिंग की बात कर लें, उसमें कितने डेविएशन के चांसेस हैं डिजाइन इंटेंट में, बट जब हम उसको फिक्स करते हैं तो जो एंटायर इक्विपमेंट होता है उसके अंदर कितने जो डेविएशंस के चांसेस हो सकते हैं। तो एक बात तो ये होती है, लेकिन जो एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है जिसमें अब हम लोग बात करना ज्यादा चालू कर रहे हैं कि साहब बहुत सारे एक्सीडेंट्स, बहुत सारे फेलियर्स तो ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से होते हैं, और वो ह्यूमन मिस्टेक्स के पीछे उसकी मेंटल हेल्थ कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज दैट अफेक्ट्स योर डिसीजन कैपेबिलिटी, दैट अफेक्ट्स योर रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपको फायर अलार्म बजाना है या सेफ्टी सिस्टम को यूज करना है या टेम्परेचर या प्रेशर को फिक्स करना है, ए माइनर मिस्टेक can lead to a severe deviation in the flow and then can lead to disaster. So एक ये चित्र है जिसमें कुछ स्टेजेस दिए हैं, हम डिजास्टर्स की बात करते हैं, और इसमें आप देखेंगे कि कुछ बातें तो टेक्निकल हैं, लेकिन एक्सपोजर कंट्रोल के बाद जो चीजें लिखी हैं वो सारी ह्यूमन परफॉर्मेंस से रिलेटेड हैं, और ह्यूमन परफॉर्मेंस में मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे वो वार्निंग की बात हो, चाहे वो एडमिशन की बात हो, चाहे वो बिहेवियरल डायमेंशंस की बात हो, और चाहे वो फॉर एग्जांपल पीपीई किट्स की बात हो। तो ये बहुत सारी बातें हैं। मैं पीपीई किट की बात करता हूँ,
एक बार एक मॉक ड्रिल में मैं गया था, बहुत साल पहले की बात है, और साहब मॉक ड्रिल में 2 घंटे पहले या 1 घंटे पहले लोगों को, जिनको फायर रिस्पॉन्डर थे, उनको किट पहना दिया गया, जो फायर किट पहनते हैं वो लोग। और जब एक्चुअल फायर का रिहर्सल चालू हुआ, उसके पहले उनको इतनी स्वेट हो चुकी थी कि बेचारे वो चल भी नहीं पा रहे थे ढंग से। तो बहुत सारी बातें हैं जो आपके हेल्थ को, ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। दूसरी बात है, हम ये सोचते हैं कि हमारे 10 जो फायरमैन हैं वो एवरी डे दे आर मेंटली सो फिट टू रिस्पॉन्ड, may not be true every day. So we need to have a mental checkup, and mental checkup should not be only a mental checkup should be additional to the physiological checkup. So बहुत सारी बातें हैं जो आती हैं। इसके बाद हम कई बार बात करते हैं मेंटल हेल्थ में स्पिरिचुअल डायमेंशंस में साहब की व्हाट इज राइट। समटाइम्स राइट आल्सो चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, है ना। इसमें कुछ बातें कही गई हैं कि यू शुड हैव ए राइट व्यू, है ना, देन यू शुड हैव ए राइट इंफॉर्मेशन, देन इंटेंशंस शुड बी राइट, राइट एक्शन, बहुत सारी बातें हैं। बट दिस कॉम्बिनेशन इज सो आइडियल दैट ऑल द टाइम इट इज not possible to have this perfection, because all people are not saints, all people are not God, people are people. So we should recognize and accept the weaknesses that are possible. अब मैं इसकी बात करता हूं कि कुछ फैक्ट्स हैं जो हम यहाँ पे जिनकी चर्चा करना थोड़ा सा जरूरी है, कि हिंदुस्तान में और साउथ एशिया कंट्रीज में ऑक्यूपेशनल हेल्थ को कभी बहुत हमने इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। परफॉर्मेंस को हमने, प्रोडक्टिविटी को दी, हमने प्रोडक्शन को दिया, हमने सेल्स को दिया। ऑक्यूपेशनल हेल्थ बहुत सीरियसली, कभी आप किसी इंडस्ट्री में जाएं तो आप देखेंगे कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ बहुत टॉप नहीं दिया गया। अब ये जरूरी है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे इसको फोकस आ रहा है, और अभी जो साइको सोशल इशू हो रहे हैं उनकी वजह से जो आपकी प्रोडक्टिविटी भी लॉस होती है उसको देख करके जरूरी है। तो अभी कोरोना फेज में हमने ये बात शुरू करी कि जो हाई परफॉर्मेंस है उसके साथ आपकी हैप्पीनेस जरूरी है, और हैप्पीनेस तभी आएगी जब आपके अंदर होप होगी। एक कहते हैं कि आई बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ ड्रीम्स, ये मैंने अपने पास लिख के भी रखा है और मेरे बचपन से लिखा है, आई बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ ड्रीम्स बिकॉज एज लॉन्ग एज यू हैव अ ड्रीम यू हैव होप, एंड एज लॉन्ग एज यू हैव अ होप यू हैव जॉय इन लिविंग। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। आपको क्या लास्ट में मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन आपको अगर उम्मीद है, और उम्मीद के लिए आपको एक सपना होना चाहिए। तो हमारे कलाम साहब ने भी बोला था कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आप जागती आंखों से देखते हैं। तो इफ ए लीडर कैन गिव यू ए ड्रीम, एंड दैट इज द रियल मोटिवेशन। बट सिर्फ ड्रीम से नहीं होगा, द लीडर हैज टू फैसिलिटेट द रिसोर्सेज ऑल्सो। हमने बोला आपको फोटोकॉपी कर लाओ, फोटोकॉपी मशीन ही नहीं है या फोटोकॉपी मशीन चलती ही नहीं है, then you cannot perform, you cannot bring the outcome. So that is also important. Then mental health की कई भाषण अभी हो रहे हैं। मैं एफएम, जब ऑफिस आ रहा था तो मैं एफएम में कुछ सुन रहा था, लोग कह रहे थे साहब मेंटल हेल्थ की टॉक्स कई बार इतनी बोरिंग हो जाती हैं कि वो खुद ही मेंटल स्ट्रेस पैदा कर देती हैं। तो ये भी है कि मेंटल हेल्थ टॉक शुड ऑल्सो बी लाइवली, वो इतनी इजी होनी चाहिए कि लोग उसको समझ सकें, है ना। इसके बाद मेंटल हेल्थ को भी कई लोग मैकेनिकल तरीके से डील करने की कोशिश करते हैं कि साहब ये पूरा मैनुअल ऐसे के करेंगे तो ऐसे होगा, ये करने से ये रिएक्शन होगा, जबकि इमोशनल इंटेलेक्ट इज हाईली डायनामिक थिंग। वो पूरे मशीन के हिसाब से यू कैन नॉट मॉडल एक्चुअली। सो दैट आल्सो यू हैव टू रियलाइज, बिकॉज ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन बिहेवियर इज डायनामिक, इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट चेंजेस फ्रॉम कंटेक्स्ट टू कंटेक्स्ट। I recall when I was working with the National Mineral Development Corporation 20 years before, and I recall my boss, I was sharing room with him, मैं उनके कमरे में बैठता था, तो वो किसी को डांटते थे, किसी कोई आया उसने बेल बजाई और साहब वो नहीं, वो उसके कमरे में आया और उसको डांटना शुरू कर देते थे। एंड मुझे लगता था कि आज इनका मूड खराब है, आज ये बिल्कुल सबको डांट रहे हैं, इतने सीनियर ऑफिसर को इतना डांट दिया। और वो जैसे ही बाहर गया वो व्यक्ति तो मेरी तरफ मुस्कुरा के कहते हैं थोड़ी सी चाय हो जाए। तो मुझे लगा कि ये मतलब आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिज पर्सनैलिटी। बाद में उन्होंने मुझे एक बार बताया कि यू नीड टू हैव डिफरेंट टूल्स टू डील विद डिफरेंट सिचुएशंस। आई एम नॉट नेगेटिव फॉर एनीबडी, बट आई नो दैट हाउ ए पर्सन वर्क्स। बट आई एम नॉट सेइंग कि हिज फॉर्मूला वाज अप्रोप्रिएट, हिज फॉर्मूला वाज नॉट fully appropriate, it was only partial appropriate. Probably we need to have a better approach, and better approach comes from the approach of nurturing, approach that should have flexible
flexibility, and accommodating the peer views until unless we know the challenges and the problems and the weaknesses of our peers and colleagues, we would not be able to deal with the problem. Then it is also important the leader should enable an environment within industry, within environment, within an organization that should spread the message of love, care, and compassion. That is a fundamental thing. Probably that is the biggest adhesive force. Many times people compare about various groups. Industries की बात करते हैं साहब, Reliance की बात करते हैं, Tata's की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, उसकी बात करते हैं. मैं किसी खास उसका एडवोकेट नहीं कर रहा हूं, बट कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं कि साहब वहां पे 10,000 कम भी मिलेगा तो मैं वहीं रहना चाहूंगा. Probably it is because of the working environment they provide, the culture of care they provide for the people, for their families, for their and security. कि साहब अगर कुछ हो गया तो our company takes care. So that also becomes very important dimension for certain organizations. Then ownership and accountability for happiness. Sometimes people say मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ साहब, मैं तो आपकी तरह नहीं गिड़गिड़ाता हूँ, मैं तो आपकी तरह नहीं रोता हूँ, मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ साहब, आप कैसे दुखी रहते हो, आप क्यों दुखी रहते हो? See, one can remain happy but remain self-centered also. So that is also important. हमारे पुराने historical times में भी हम different kings की बात करते थे. So sometimes a brutal person, sometimes a person who does lot of massacre can also be happy. He can continue laughing, he can continue smiling, but not necessarily that he is a real leader, he is the correct leader, and he can spread the compassion. No. So it is important that until unless the leader owns the responsibility and accountability for spreading happiness in the life of his peers and fellows, he is not the real leader. So that is also important. And finally, I say that growing and sustaining together is important. Some people say that मैं तो हुई, आपको करना है काम, आप करो, नहीं तो चले जाओ. ठीक है? So those are also the kind of things. So with this, I think I will be closing with at this point that growing and sustaining together is the real keyword that brings the requirement of bringing in the spiritual dimensions into the overall management framework and overall crisis management, because that is very, very important to inculcate this culture. So with these few words of thought, I close my remarks here, and I extend my best wishes for the entire discourse. Thank you, Awdhesh ji, over to you. Thank you, sir. आपने बहुत ही अच्छे तरीके से जो स्पिरिचुअलिटी और लीडरशिप की जो महत्व को बताया है हमें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और आप जब भी बोलते हैं तो एक नई डायमेंशन दिखाई देते हैं हम लोगों को. और यहाँ भी आपने जो हमारी जो सोसाइटी के अंदर जो स्टिग्मास बने हुए हैं, जो हमारे यहाँ पर एक ट्रेंड बने हुए हैं, उसके अलग हटके आपने जो बताया, और आगे आने वाली सिचुएशन में जो आपने रोबो का बताया, बिल्कुल सही है सर. क्योंकि आगे जिस तरीके से एआई जा रही है, ऐसा प्रेडिक्शन है कि 2050 के बाद में शायद जो ह्यूमन ब्रेन है उसकी पूरी कैपेसिटी से बाहर निकल जाए. और जो हमारे महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस हैं, उन्होंने भी इसकी आशंका जताई थी. तो बिल्कुल इस तरीके के रूल्स की ज़रूरत रहेगी. अगर हम इंसान ही नहीं रहेंगे, हमें इस तरीके की फीलिंग्स और हमारे इस तरीके की वैल्यूज़ ही ख़त्म हो जाएंगी, तो फिर चाहे हम प्रोग्रेस कर लें तब भी शायद कहीं नहीं जा पाएंगे. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी इस प्रेजेंटेशन के लिए. और इसको आगे बढ़ाते हुए नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर संजय सिंह सर, डीन OPJU यूनिवर्सिटी Raigarh, Chhattisgarh, from Chhattisgarh. He will speak on positive attitude and wellness during COVID-19. Dr. Sanjay Kumar Singh sir is Assistant Dean, Student Welfare, Students Affairs, and Professor of English at Bindal University, Raigarh. Having more than 16-year teaching and administrative experience, his specialization is in the area of Indian writing in English and ELT. He has delivered many keynotes, visiting lectures on IWE, ELT, soft skills, EI, CSR, and human rights. Dr. Singh has organized 1 international conference, 4 national conferences, 3 national workshops, 1 national colloquium, 1 national seminar, national level tech fest, workshop under faculty development, and many workshops for the student. Participate as a resource person and paper presenter in more than 70 international national conferences and seminars.
He has completed a translation project assigned by People's Linguistic Survey of India in 2013, Bhasha Gujarat. He is member of many professional associations. He has edited Quest, a quarterly news bulletin, OPJU, Young Professional, a monthly magazine for youth, Pravat, a literacy tabloid, and 6 books. He is recipient of the awards Dr. SRK National Teacher Award, Vidya Ratan Award for Research Excellence and Distinguished Leadership Award. Welcome, sir. Thank you. Please, sir. Thank you, Avdhesh, and thank you, NIDM, Ashish Panda ji, Invertis University, Anil Gupta sir ji, Avadhesh sir ji, for giving me this opportunity so that I can convey my thoughts. I can communicate whatever I have. And sir, please allow me to share my screen. Sure. Sir, you can share. Please, sir. Yeah. Can you tell me how much time I have to take? 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes? Because we are running. That is okay, sir. You can carry on with your presentation. Yes, 30 minutes slotted time is there with you. Okay. So I'll try to be minimum. I would like to start with a simple sentence which I have thought of. कोविड से आगे जहां और भी है. कोविड से आगे जहां और भी है. We cannot think of only one thing, COVID. Let's go beyond that. Something which is very useful to us. And when we talk about ourselves, please keep in mind that this is not for ourselves. It is for the sake of first thing, that is what our family, then second, society, then state, and then nation and the humanity. So don't think that when we are talking about positive attitude and wellness or anything like this, those our previous speakers, हमारे जो पहले के वक्ताओं ने जिस तरह से बात की है, वो सारी चीजें सिर्फ मेरे और आपके लिए नहीं है, सिंगल के लिए नहीं है, सेल्फ के लिए नहीं है, but it is for the sake of everybody. हमसे होके हमारी फैमिली, देन हमारी सोसाइटी तक जानी है. और इसीलिए शायद हम इतनी मेहनत कर रहे हैं. We all are doing such kind of things so that we can create awareness, we can make people resilient, they can tolerate everything, they can cope up with everything. So here again, I think I am going to tell you something. You have heard something, but maybe different from that one. And that is on positive attitude and wellness during COVID-19. What I feel, and I believe it also, sometimes I think in this particular scenario, you can agree with me that you cannot control what happens to you sometimes, but you can control your attitude towards what happens to you. Yeah, this is the pandemic time. Everybody is facing this particular problem, but each person is facing this one or coping up with this one in his or her own way. And that is the way we are going to define that what may be the best way. I'm not saying this is the only best way, but you, as Professor Anil Gupta said, that everybody has their own way to work with. So here, some guidelines, some strategies through which we can make something positive. So my first question is, why should we discuss? Why should we discuss about attitude? Why should we discuss about positive attitude? Professor Avadhesh Sharma will talk on later after me. But here, really, I have some apprehensions that why. Why it is necessary to talk at this moment? What is here? People think this is not a matter. Like Corona, you cannot see this. Sometimes it is very hidden. जैसा अभी
प्रोफेसर गुप्ता ने कहा कि उनके जो कलीग हैं, उनके जो सीनियर लेवल के कलीग थे, उन्होंने डील करने के तरीके अपने सीनियर प्रोफेसर्स को डांट के उन्होंने अपने काम करने की कोशिश की। तुरंत बात चेंज भी हो गए। तो ये जो एटीट्यूड उनका था उनके प्रति, वो हमको दिखा तो नहीं ना कि उनके हार्ट में कुछ और है और शो में कुछ और है, बट दैट मेक्स सम difference. So when we talk about the attitude, this is really something which sometimes we ignore. Sometimes we do not be conscious of it, but take it positive that this is really, it always makes a big difference. Sometimes because of this only, I think we all have relatives. We do not visit relatives. Some relatives, if somebody asks us to go and visit that particular, we don't want. Why? Because we say that his attitude is not good. He's arrogant. He is something like that. So sometimes it is possible that he is not able to show that kind of thing, but we are feeling. So coronavirus, you cannot see. Here attitude, when we talk about, sometimes we cannot see, लेकिन हम कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं बिहेवियर में दिख जाता है. That's why we need to control something, and that we are going to discuss, because this is the only disability in life. A positive person, maybe anybody, but if a person has bad attitude, means he has disability. कोई उससे मिलना नहीं चाहेगा, कोई उससे बात करना नहीं चाहेगा. And the most important thing, you cannot trust that person. अगर हमारे आशीष सर यहाँ पे हैं, अगर उनके साथ उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा नहीं तो कोई काम करना चाहेगा क्या? सवाल ही नहीं उठता. उनका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो हो सकता है मैं थोड़ा सा नेगेटिव भी हूँ, अरे यार कौन ये करेगा वेबिनार. हो सकता है अवधेश सर ने सोचा है क्यों यार फालतू में फंसना, बट because of his positive attitude, no, it is for the sake of humanity, for the sake of society, for the sake of country, for the sake of ourselves. यार जब दूसरा इतना अच्छा सो सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता उनके लिए? Why can't we? तो ये जो डिसेबिलिटी है समटाइम्स वो हमारे लिए बहुत ही बेकार होती है, और वो है क्या? बैड एटीट्यूड. सो दिस इज द ओनली डिसेबिलिटी. इफ यू हैव बैड एटीट्यूड, प्लीज फ्लश इट आउट. सो जैसे मैंने कहा कि क्यों पढ़ना है, क्यों सुनना है, क्यों समझना है एटीट्यूड के बारे में. सिंपल लैंग्वेज आई विल ट्राई टू टेल यू why we need it. I think we all are getting inspiration from our own people. Sometimes people sitting farthest, sometimes with the help of books, biographies, sometimes our relatives. So these are the people, those who are affecting us. Not the people, but their attitude, their knowledge. That is being inspirational. So when we talk about why to learn attitude, why to try to control, manage attitude, as I started with, we are not talking about you, about me. We are talking about society, family, and others. So you can see here how it works. My attitude affects my behavior, and my behavior affects your attitude. And then your attitude affects your behavior, and your attitude affects, your behavior affects my attitude. It's a chain. Complete cycle is there, and that's why sometimes you can see road racing is there, serial killers are there, sometimes the justice is denied. Again, people are going and doing the same thing. तो हमारा जो बिहेवियर है वो सिर्फ हम तक ही नहीं है. हमने कह लिया ठीक है यार हम तो ऐसे ही हैं. Sometimes what we say, हम तो ऐसे ही हैं. Okay, you are like that, but you don't know how much you are affecting others. हम आपको जो चेंज करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए हमारी तरफ, थोड़ा सा हमारे लिए काम कीजिए. इट मे बी गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट से भी कहेंगे तो क्यों कहते हैं, हमारी तरफ जाएंगे. आपका किया हुआ काम हमें अफेक्ट करता है. We all are sitting here, maximum people are educationists, are related to education. कल हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई.
अगर हम ये सोच के बैठ जाएं क्या फर्क पड़ता है यार, क्या होना है यार, इट इज गोइंग टू अफेक्ट माय नेक्स्ट जनरेशन, और नेक्स्ट जनरेशन जब अफेक्ट होगी तो क्या कंट्री अफेक्ट नहीं होगी, सोसाइटी अफेक्ट नहीं होगी? सो दिस इज व्हाट माय एटीट्यूड अफेक्ट्स my behavior affects your attitude affects your behavior affects at my attitude. Means here we are in a society, and in this society whatever we do, that is going to affect somebody else also. और अगर किसी और को अफेक्ट हो रहा तो नेचुरली लोग घूम फिर के मेरे पास तो आना ही है. मैं एक पोएट हूँ, और कभी किसी ने मेरे से पूछा था कि आप पोएट्री के बारे में क्या कहना चाहते हैं. आपने लिखा उसको, आपने जो लोग कहते हैं स्वांत सुखाए लिखते हैं, मैं बोलता हूँ जब तक मेरे मन में है वो मेरे स्वांत सुखाए की है. द डे इट कम्स आउट इट इज नॉट माइन ओनली. व्हेन आई राइट ऑन माई पेज इट इज नॉट फॉर मी ओनली. जैसे एक बच्चा जब जन्म लेता है, जब तक वो वूम में है हो सकता है वो मदर का हो, फादर का, बट द डे ही कम्स आउट ही गेट्स बर्थ, मेरे रिलेशंस आर देयर. कई लोगों का कुछ हो जाता है, किसी का भाई, किसी का भतीजा, किसी का बेटा, किसी का कुछ. तो ऐसे ही जब हम लिखते हैं यहाँ पे भी सेम चीज है कि एटीट्यूड, डोंट टेक इट इन नेगेटिव वे. डोंट थिंक दैट दिस इज ओनली वन थिंग व्हिच वी कैन नॉट टेक केयर ऑफ. मैं तो जैसा हूँ चेंज नहीं होना, ऐसा ही हूँ. ठीक है, मूवीज में काम करेगा, लेकिन नहीं, हियर यू हैव टू बी समथिंग व्हिच वी शुड be according to the society, according to the people, because your attitude is affecting everybody. और I think आप सबने सुना होगा कि people don't leave the company, they leave the boss. Why? Because of the attitude of the boss. तो जब बॉस ही ऐसा है तो जनरली हमारे मैनेजमेंट फिर क्या करती है, दे थिंक ओके एक बंदे ने छोड़ दिया, छोड़ दो, जाने दो. क्योंकि हमारे यहाँ हमारा तो फीडबैक ले सकते हो आप, वी कैन टेक द फीडबैक ऑफ द सबऑर्डिनेट्स, बट हु इज गोइंग टू गेट द फीडबैक ऑफ आवर सुपीरियर्स? जिस दिन वो पैटर्न शुरू होगा ना कि सुपीरियर्स का ही फीडबैक लेने हैं, तो शायद हम ये जो एटीट्यूड की बात करते हैं ना, बॉस, जैसे सर ने अभी कहा कि हाँ, उन्होंने कहा कि मैं जानबूझ के नहीं करता हूँ, या इट इज टू गेट द वर्क डन. या इट इज पॉसिबल वी कैन गेट द वर्क डन विद द हेल्प ऑफ अदर वेज आल्सो. क्योंकि बाहर जाके वो भी तो वही बनेगा ना. आई हैव सीन माई पीपल, माई फ्रेंड्स, माई सुपीरियर्स ऑल्सो, विद होम दे हैव वर्कड, दे हैव लर्न द स्टाइल ऑफ दोज पीपल. अगर मैंने अपने सुपीरियर के जिसके साथ भी काम किया उसकी स्टाइल सीखता हूँ, फिर उसी को इम्प्लीमेंट करता हूँ दूसरों के साथ. इसका फायदा कई बार होता है कि अगर आपको पता हो कि सामने वाला जो है तो उसने जिसके अंडर मैंने काम किया उसके अंडर उसने भी काम किया, यू नो वेल दैट हाउ टू ट्रीट विद हिम and how to deal with him, and I have done it. So very simply, the objective of this particular discourse is don't take it just otherwise. Attitude matters. It may be very small thing, unseen, but it matters because it is going to affect not only you but the complete cycle of your life and your society. I hope I am on my topic. Wonderful, sir. Please. Yeah, thank you. So, I think you all have heard the types of attitude. Mostly people say positive and negative. Yeah, negative may be bad one, because when we talk about only two types of attitudes, that is negative attitude and positive attitude. But frankly, I am telling you, today I am not going to talk about our negative attitude. It may be good one. Positive attitude is important. Negative attitude, okay. I am not going to say anything a lot about it. You don't like anything, you always say something negative about anything, okay, no problem. It is also useful. Neutral attitude. It is not very harmful. Negative is not very much harmful. Neutral is not very much harmful. Because, okay, it is not going to affect more. But in this pandemic, during this COVID-19 pandemic, what we have seen, we have experienced, that is the major one, second attitude.
That is the problem. I would like to give you an example here with the offices. In the offices, what happens? Suppose there is any kind of a increment. So what they start saying? Suppose somebody has got a less increment, somebody has got maximum one. What happens when they sit together? The person who gets less one, he starts saying, "अरे यार आपको भी तो ज़्यादा थोड़ी मिला है, आपको तो 5% मिला, मुझे तो 4 मिला, आपको 5 मिला यार." And last, so he may be happy with that 5%, but the person is going to make you feel, no, that 5% is also not good. So instead of, as we say, half full is half full and half empty, that is here, whatever full, he is going to make full also half. So this is one most dangerous attitude. That is what? Second attitude. I think if you want to write this, if you want to understand this, you can read also. The most dangerous, because it reflects the state of mind's negativity and possesses enough potential to destroy the image of every related thing coming in mind. Whatever comes to him, whatever comes to you also. Suppose I am of second attitude, whatever you say positive, I will make it negative. And at last, I will make such kind of imagery that you can be afraid of that one, or you can leave that. I have seen at my offices also. I have this kind of experience that people, such kind of people really, they are contagious, you can say. So Corona, COVID-19, really, whenever we go downstairs, we talk to the people, especially at the early time, they start talking about this. We don't talk, suppose somebody has used the mask, they start negative. Okay, that is good thing that people are wearing mask. If you are not wearing, okay, I'm not saying that, I'm not forcing you, I'm just requesting you to wear it. But if I say, why don't you wear it? Started. क्या होता है, कैसे होता है, अरे आपके पहने थोड़ी हुआ. So awareness is what? That people, those who are like this, we have to away from them. We have to be away from them because they are going to make us not only negative, but destructive also. So my focus is here mostly from second attitude to positive attitude. Negative, I don't have any more problem. Neutral, I don't have any more problem. I think nobody may wear, because these are the things we may have. We think positive, we think negative. But when we become second, really, it is going to harm not only the you only, not only the you only, but to the society also. So based on types of the attitudes, you can say, I think you may know this, I think you have met also. So there are people, they are divided into four, you can say 4 types. Number 1 is the sulk. I think you all have met such kind of people. Whenever they meet you, I am not okay, you are okay. Suppose you have scored maximum marks, or suppose you have topped the class, they will tell you, I have not topped because I was not topper, I have not scored well because I don't have all these things, but you have. आपकी तो क्या है, आपके पास तो सब कुछ है, आपके पास तो ऐसा है, आपके पास तो वैसा है, आप ही सब कुछ है. So मेरे पास कुछ नहीं, but आपके पास सब कुछ है. I am not okay, but you are okay. They are the people, those who are sulk, and very easily they become people of second attitude. Second, arrogant. I am okay and you are not okay. Mostly the superiors, they behave like this. I am okay, you are not okay. Sometimes to get work done, they behave like this. They are the people, those who are going to affect your work and life balance. Third one, I am not okay, you are not okay. As I told you, second attitude people. मेरे पास भी नहीं है, और अगर आपके पास थोड़ा है, मैं उसको भी नहीं के बराबर कर दूंगा. देखो ना, आजकल समाज में ऐसा चल रहा है, सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही, हम लोग को इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा तो हमें ये नहीं मिल रहा,
टीचर ऐसे हैं तो हमें मार्क्स नहीं दे रहे हैं, मीन्स दे आर द लूजर्स. एंड आई डोंट थिंक you, me, or anybody is going to become like this. We don't want to be a loser. I am not okay, you are not okay. So such kind of people, if you have, if they are surrounding you, you are amongst them, you have to be very careful. You have to be like this, the winners. I am okay and you are okay. And in this pandemic situation, in this particular situation, COVID-19, if you have this attitude, I say you are also Corona warrior. Really, I mean it. If you have winner attitude, I am okay and you are okay, you are not creating any kind of a negative feeling among the people. It may be with the help of your social media and so on. I feel and I really say that you people are also then Corona warriors, because you have created positivity among the people. You have said, okay, I am here, you can see me. You can look at me and then you can work accordingly. Don't worry. Just you have to take precautions. You have to wash your hands frequently. You have to use you have to wear your mask, use hand sanitizers. They are not very, you can say, great things, very simple things, and we can do it. So such kind of feeling, such kind of awareness, if you are creating, really you have such kind of attitude that is, I am okay and you are okay. And I do tell you, please, you are also a Corona warriors, because such kind of people accept themselves and others also. We change ourselves, we adapt, we respect each other, whatever you are. I think we all have heard, मजा तभी आता है जब आप सामने वाले को वैसे ही एक्सेप्ट करें जैसा वो है. ठीक है, जैसा हम एक्सेप्ट तो पहले कर रहे हैं. We are the teachers. Believe me, sometimes we get students, those who are really very poor, but we accept them. We accept them as a challenge also sometimes. We can't say that you are poor, you are just a stupid idiot. We can't teach you. Whosoever comes, that is the, you can say, nobility of the teachers, that they accept everybody and then they start taking that as a challenge, and then they do something for the sake of changing that person from 0 to 1, 1 to 2, 2 to 4, and so on. Think that life is worth living. Think life is worth living, really. I don't know how many participants are here like a parent. मैं एक parent हूँ और मैं कह सकता हूँ, with the help of my experience, it is very tough to look after or to raise a son or daughter. यदि आप सच में अच्छे से करना चाहते हैं, उनको रेज करना चाहते हैं, ग्रो अप करना चाहते हैं, इतना इजी काम भी नहीं है. So when you become a parent, then you can understand the worth of becoming a parent and what is the use of life, what is the worth of life. तब शायद आपको अच्छी तरह समझ में आता है कि सच में लाइफ कितनी वर्थ लिविंग है. लेकिन जो नहीं है, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, प्लीज डू टेक केयर ऑफ द पीपल एंड थिंक दैट दे हैव रियली वर्थ लिविंग. पॉजिटिव चीज़ें लेना और पॉजिटिव चीज़ें लेना. सुबह से हम सब क्या कर रहे हैं? आई वॉज लिसनिंग टू एवरीबॉडी एंड आई रियली, आई कैन से, बहुत अच्छा लग रहा था कि हम कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं, कुछ नई पॉजिटिव चीज़ें सीख रहे हैं. बिकॉज दैट मोटिवेट्स अस कि हम भी सही रास्ते पे हैं, या हम में जो कमियां हैं उसको, sometimes we can learn something, we can unlearn something. So when you are in the class, when you are in the webinar, in the seminar, in the conference or anywhere, we don't learn only, we unlearn also. Trimming of the trees are also important. चाहे घर में हो, चाहे गार्डन में हो, when you trim them, you get something what? Good kind of feeling, aesthetics. So these are the qualities of winners, and the people, those who are having such kind of thing that I am okay, and they make others also okay with the help of their inspiration, positive words, work, and the saying, "Main hoon na." So they lead to the positive attitude. And as I told you,
The most important thing is it brings strength, energy, motivation, and initiative. Sometimes people ask me, especially my students, how can you smile since morning to evening? Dr. Avadhesh is here, Avadhesh Sharma is here, and you can ask him. 4 years we were colleagues in MIT Mansoor. I think he never saw me in any kind of stress that what I am doing, what not doing. I think we worked together and it was just in good manner and happiest moments were there. Because of what? Only one attitude. I think Avadhesh Sharma sir can second it. Yes, sir? Yes, yes. Yeah. We were both alike. That's why we are here together today. आप दोनों की स्माइल बता रही है. Yes, sir. Thank you, sir. So that gives us what? Strength, energy, motivation, and initiative. It may be any situation. As I told you, COVID-19 से आगे जहाँ और भी है. So those who have positive attitude, really, they move forward with confidence, optimism. They remain happy and cheerful. I think you can see the faces of people sitting here as speakers, Dr. Ashish, Dr. Avadhesh, and Dr. Gupta also. When he was talking, his smile was on really, as you can say, as an inspiration. Because when you talk by heart, whenever you say something by heart, really whatever you are feeling, deeds and preaches both are the same. Really, positivity always brings, without saying anything, something most positive thing. Sincerity. I don't know how many of you have left in between. How many of participants are here just for the sake of attending it and started and left doing their own job. But those who are the sinceres, really those who are here for the sake of knowledge, for the sake of information, not for the sake of certificate. Very simply, I'm telling you. Yesterday, I was attending a webinar and really after 6 o'clock, about 2,000 messages were only, sir, please share the feedback link. Sir, please share the feedback link. Sir, please share the feedback link. I don't know whether they were attending other times also, but at that time, everybody was there. It was 700 something, and everybody was writing, sir, please share the feedback link, feedback link, feedback link, feedback link. I think we can imagine easily that it was not for the sake of what? Knowledge. It was for the sake of what? Just the certificates. After certain level, or you can say, certificates always never works. कहते हैं कि लाइब्रेरी में जो चीजें जरूरी नहीं कि आपके काम आए, जो यहाँ पे हैं वही काम आने वाली हैं. तो ये जो हम लेके जाएंगे वही काम आएगी, हम एक दूसरे सीख के जाएंगे, वो काम आएंगी. The way sir was talking, and I think Avadhesh sir is going to tell us something about Sudarshan Kriya also. वो किताबों में तो बहुत पढ़ा हुआ है, बट हो सकता है वो कोई ऐसी चीज देके जाए, ऐसे तरीके से देके जाए कि हमें वो अच्छी लगे, हमें इजी हो जाए. वही क्रिया जो बहुत टफ हो सकती है, it may be very easy to us with the help of one particular person. So here dealings with others is comprised of sincerity. और ये अगर नहीं है तो आप कहीं ना कहीं कुछ और सोच रहे हैं, पॉजिटिव तो नहीं है. सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. जैसा अवधेश जी ने पहले कहा कि अवधेश कुमार जी ने कि आशीष सर लगातार लगे रहते हैं, हमारे यहाँ भी जुड़े हैं और हमें मोटिवेट किया. क्यों न हम इस पर्टिकुलर सिनारियो में ऐसे काम करें जो लोगों के लिए हो. दैट इज व्हाट? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. हाँ, कुछ लोग सोच सकते हैं अरे यार वो उनका काम होगा इसलिए कर रहे होंगे. काम तो बहुत सारे लोगों का बहुत सा होता है, पर जरूरी है कि हर कोई वो काम को काम की तरह ही ले. ऑन पेपर इट मे सीम दैट यू आर जस्ट डूइंग फॉर द सेक ऑफ डूइंग, बट व्हेन यू कम फेस टू फेस वी कैन अंडरस्टैंड इट्स नॉट फॉर द सेक ऑफ जस्ट doing it, but for the sake of responsibility. And I thank you, sir, for your sincerity and responsibility towards the nation, towards the country, and towards the humanity. Ashish, sir, thank you. So, and really you are blessed. Remain flexible in your approach, no rigidity. जैसे हम अपने बच्चों के साथ करते हैं, अगर हम अपने बच्चों के साथ रिजिड हो जाते हैं तो कभी भी हम उनको उनकी तरह ग्रो नहीं होने देंगे.
हम हमेशा ट्रिम करते चलेंगे और इट इज पॉसिबल दैट आई कैन मेक देम ओनली बोनसाई। और अगर बोनसाई बनाना है किसी को तो ट्रिम कीजिए, लगातार ट्रिम करते जाइए, जैसा आप चाहते हैं रिसीज होने चाहिए, लेट देम ग्रो। हाँ, दिशा देना है तो इधर उधर कीजिए, हमेशा ट्रिम करना जरूरी थोड़ी है, पर ट्रिम ही करते रहे तो जंगल कभी अच्छे नहीं लगेंगे। When you go inside the woods, you find this is the serenity. This is really the place where you can feel spirituality. You can feel some inner energy. जैसे ही आपने उसको बिल्कुल ट्रिम कर दिया तरीके से ना, तो फिर नहीं मिलता। थोड़ा सा अनलन के स्थिति में रहने दीजिए उसको भी। So they remain flexible in their approach. Yeah, let them do. Come with. इसको मैं एक बहुत सिंपल तरीके से आपको कोशिश करूँगा बताने की कि once I gave my students here you can see only 4 dots. मैंने 4 डॉट बनाए। It was management class, MBA class. हमने 4 डॉट बनाए और उनको कहा कि इसमें आप कोई अच्छी सी तस्वीर बनाइए या कोई अच्छा सा इसमें कुछ ड्रॉ कीजिए with the help of these 4 dots. और पहले उनको दिया, फिर मैंने कहा 1 मिनट रुकना। मैंने उनको कहा कि ये देखो, ये ऐसे भी हो सकता है। मैंने एक दिशा दे दी उनको। 2 ग्रुप थे, तो जिनको मैंने दिशा दे दी वो उसी में घूमते रह गए। वो उनको या तो लीनियर या जैसा भी वही करते रह गए। बट अदर ग्रुप विच टू हुम आई टोल्ड गो एंड डू इट व्हाटएवर यू कैन मेक। बिलीव कीजिए, वो बड़ा अच्छा सोच के लाया। बिल्कुल अलग अलग डिजाइन थी। रीजन क्या था? हमारा जो माइंडसेट पहला था ना, अप्रोच फ्लेक्सिबल नहीं था। हमने काम दिया और काम के साथ एक दिशा ऐसी दे दी शुरुआत में ही। कई बार होता है मीटिंग्स में आते ही बॉक्स कह देते हैं, जो हमारे सुपीरियर्स हैं, कहते हैं वी हैव टू डू दिस लाइक दिस। अब आपकी क्या सोच है? जब आपने सोच ही लिया कि वी हैव टू डू लाइक दिस, तो फिर मेरे से आप क्या लेंगे? आप यू हैव पर्टिकुलर जस्ट यू कैन से सेट ऑफ माइंड। इफ यू कम विद दिस काइंड ऑफ थिंग, दिस इज सिचुएशन, व्हाट टू डू, you may have something in your mind, but what to do, I think then you can get something new. So here, as I told you, we have to be flexible in our approach. We have to think, yes, the people those who are sitting before us, they are really having some knowledge, innovative ideas. और मैं तो कहता अभी नई जनरेशन हमेशा हमसे बेहतर है, क्योंकि उसके पास जो रिसोर्सेज हैं उससे हमसे कई गुना अच्छे हैं। हाँ, हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास एक्सपीरियंस चिमनी से लेके अभी तक की चीज़ों का है। उनके पास वो नहीं है, बट दे हैव बेटर एक्सपीरियंसेस व्हाट एवर वी हैव, एंड रियली दे आर बेटर देन अस बिकॉज दे हैव गुड टेक्नोलॉजी। और मैं तो कहता हूँ कई बार कि वी शुड फील लकी दैट वी आर इन द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती ना, अभी जैसे अवधेश सर ने कुछ देर पहले दिया था मोबाइल फोन इन सब पे लेकर के, सर आपकी बात बिल्कुल सही है, पर सच तो ये अगर वो नहीं होता तो इस पैंडेमिक में हमारी हालत क्या होती हम सोच भी नहीं सकते थे। सही बात है सर। बिल्कुल, जैसे अभी गुप्ता सर ने कहा कि हम जितना वेबिनार की बात कर रहे हैं तो लंबा नंबर ऑफ वेबिनार्स इट में भी मोर एंड मोर एंड मोर, कोई बात नहीं, पर हम इंगेज तो है ना। कल अगर लास्ट वीक कोई आकर के 4 लाइन सुन लिया होगा, कुछ तो सुना होगा ना। नेगेटिव ठीक है आए लास्ट में, पर जब लास्ट में आधे घंटे अगर उन्होंने सुना है, आई होप कि कुछ तो सुना होगा। तो यूज पे हम मिस यूज पे बात कर सकते हैं, लेकिन उसको निगेट नहीं करेंगे कि नहीं यार वो यूजफुल नहीं है। वी आर वेरी लकी दैट वी आर इन द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी एंड वी हैव एवरीथिंग व्हेन वी थिंक वी कैन डू दैट। आप कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ, कहाँ है सब, बट वी आर गेटिंग एवरीथिंग, वी आर मीटिंग विद द पीपल एंड स्पेशली जैसा हम सब कहते हैं कि इस दौरान कनेक्ट रहना है। अगर डेटा खर्च नहीं करेंगे तो कनेक्ट कह सकते हैं कि पैंडेमिक हैज taught us really how to use technology. Not only us, those who are illiterate, those who are at home, those who are in the village area, they also know how, they came to know that how to use this technology. And that is the best part of this pandemic, best positive way of this pandemic. I hope so. I think you will be agree with me. They are the most reliable persons. I think we agree with this. And whatever may come, let's go and cope up with that. When I joined here in OPJU, earlier there was a person, he's recently at that time, he joined from Delhi. And
मेरे साथ ही बैठते थे, मेरा रूम शेयर कर रहे थे, तो जब भी वो बैठते, ही वाज HOD ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सो ऑलवेज ही वाज इन नेगेटिव माइंड, यहाँ पे ये नहीं है, इट वाज अ न्यू इंस्टीट्यूशन, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। अब एक दिन, अब कहते ना, मैंने कहा ना, सिकन एटीट्यूड, दैट इज अ प्रॉब्लम बेस। मैंने बड़े प्यार से सर से पूछा, सर एक सिविल इंजीनियर का काम क्या होता है? बनी हुई रोड पे चलना, बनी हुई रोड को बनाना, या नई रोड को अच्छी तरह से बनाना, नए रोड के लिए प्लान करना? उन्होंने कहा, यार उसका ऑब्वियसली उसका काम है नया रोड बनाना, नए रोड जगह नहीं बन सकती वहाँ ही बना। तो सर, यू आर एन इंजीनियर, दिस इज न्यू इंस्टीट्यूशन, and you have ample opportunity to create whatever you want here, because at the beginning you can create, you can make it of your own imagination, but afterwards when somebody else comes, and I think I got success also. So challenges hain, we all are human beings, and really we can say that this is the moment where we have to take the challenges. Pandemic किसी ने नहीं सोचा था, आया ना। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई लॉकडाउन पहले नहीं करना था, बाद में। यार ठीक है ना यार, इट हैपेंड, देयर वाज नो एनी प्रेसिडेंस, व्हाटएवर प्रेसिडेंस वाज देयर, वी डिड दैट, गवर्नमेंट डिड दैट ओनली। जब इसका कोई प्रेसिडेंस ही नहीं है तो हमारे तो नया नया प्रयोग करने पड़ेंगे ना। व्हाई डोंट टेक इट पॉजिटिव कि अच्छा ये हुआ, उससे कुछ तो फायदा हुआ, नहीं तो शायद बहुत नुकसान होता। सो दिस इज द वे वी हैव टू थिंक, वी हैव टू adapt according to the new challenges and situations, and thankful the technology that made us to be adapt to this pandemic situation also. ठीक है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो जुड़े रहेंगे एक दूसरे से। So dear friends, flush it and move on. When we talk about the, I'm coming to my own point. I think I'm not deviating from point. Yes sir? Very, very wonderful presentation. I think आपका ये last slide था सर? Yes sir? ये last slide था सर आपका? नहीं, I'm coming to 2-3 more points. अच्छा ठीक है, sorry. So now, positive attitude during COVID-19. I think आशीष सर को भी मैं एक स्लाइड दिखाऊंगा और फिर उस पर बात करूंगा, लेकिन उसके पहले ये, I do love Martin Luther King, and whatever he said, I think this is the best line we all should adapt. That is, everything that is done in the world is done by hope. जैसे मैंने कहा कि जब लॉकडाउन 22 मार्च का भी किया गया था, इट वाज विद द होप, आगे भी किया गया विद द होप, हम अनलॉक भी कर रहे हैं तो विद द होप, और ये चलते रहना चाहिए, प्रयोग चलते रहना चाहिए, इसमें कोई नेगेटिविटी आने की बात नहीं है। सर, आई थिंक हम सब ने ये देखा यार, आप तो कल भी देख के आए होंगे, आज भी देख के आए होंगे, पर मैं इसे थोड़ा दूसरे पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, पॉजिटिव एटीट्यूड से देख रहा हूँ। दिस इज द स्लाइड ऑफ स्क्रीनशॉट ऑफ यस्टरडेज डेटा। रात में मैंने ये डेटा लिया था। आई वुड लाइक टू ask you to pay the attention. Look at the data. First one, 509447 active. Second, 988029 discharged. Third, 34193 deaths. 1531669 total. The person who has designed it, I hats off and salute him. What a positive attitude is here. सबसे कम और एक्टिव डेटा सबसे पहला है जो पॉजिटिव में है कि ठीक है एक्टिव है लेकिन 5 लाख है। उससे बड़ा क्या दिख रहा है? डिस्चार्ज अबाउट 10 lakhs। तो लगभग दुगने लोग तो ठीक हुए हैं यार। I think you will appreciate sir the way I am trying to convey this message. और मोस्टली व्हाट वी डू, हम पहला और दूसरा डेटा देखते हैं, थर्ड में पहुंचते भी नहीं है। जनरली पीपल टॉक अबाउट अच्छा क्या कैसे हुआ, फर्स्ट 2, थर्ड में उन्होंने छुप के धीरे से डाल दिया कि हो सकता है लोग यहीं पे रह जाएं, तीसरे में पहुंचे नहीं। और सबसे बड़ा जो डेटा है उसको 4th में रखा है। ऑल द डेटा इज अवेलेबल हियर बट विथ थिंकिंग what to give first, what to give last. What a positive attitude. I think really
Even the choice of colors, sir. Colors choice also. Yes, eye catching green है देखिए. Yeah, बिल्कुल. Green है, everything is there. I don't know whether you have thought of it or not, but I'm yesterday when I'm making it, we are impressed. तो हर चीज से आप पॉजिटिव निकाल सकते हैं. या जब भी को आप मूवी देखते हैं, always try to find out the positive things. क्योंकि मूवी बनाने वाला कुछ पॉजिटिव के साथ बना रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है. इस स्लाइड्स को बनाने वाला, ये जो वेबसाइट है उसने सोचा होगा डिजाइन करने से पहले कई चीजें सोची होंगी. यार क्या पहले दूं? अरे 15 लाख तो पहले दे सकते थे ना. Why not to give total cases first? आदमी का हार्ट अटैक पहले होना शुरू हो जाए. 15 lakh 31,000. So instead of that, what? 5 lakh million active, 9 lakh 88,000 discharged. Hats off and for this positivity. Creating this kind of positivity, I think we all should go with this one. कि हर चीज को कैसे प्रेजेंट करना है, ये आपके माइंड सेट को दिखाता है. हर चीज डिपेंड करता है द पर्सन. कहते हैं ना कि इफ रियली यू वांट टू बी अ गुड कम्युनिकेटर, you should know the style of the communication. You may be the good communicator, but if you don't know the good style of the communication, then you can't be. आपको सामने वाले को समझना होगा, उसके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट और चेंज करना होगा. मैं बहुत अच्छी, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हम लोग सीखते हैं. अगर हमें पता होता कि ये जिसके अंदर मैंने काम किया है, मेरे साथी ने या मेरे सुपीरियर ने ऐसे काम किया है, हम उसके हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं. हमें पता होता कि इसको क्या चाहिए होगा. हमने MIT मंदसौर में जो चेयरमैन थे मिस्टर नाहटा, हमने उनके अंडर में काम किया. और उनके साथ क्या स्थिति थी सर कि लिटिल बिट, हम कहते हैं थोड़ा सा होता ना भाई, हम सुपीरियर हैं, ईगो रहता है. व्हाट, तो जब भी कोई चीज़ पूछते थे, सो व्हेन वी पुट द पेपर बिफोर हिम, अगर हमने ये कह दिया कि सर हमने कर दिया काम, तो निश्चित तौर पे उन्होंने हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव किया था. अच्छा इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है. और जैसे ही हमने उनको कहा सर हमने कर तो दिया, थोड़ा देख लीजिए. आई थिंक अवधेश सर विल बी एग्री विद दिस. सर हमने काम कर तो दिया, बट प्लीज लुक एट इट. जस्ट सुपरफिशियल है, ओके डोंट वरी, गो अहेड. यस सर. तो अब मैं जब यहाँ पे आया, तो यहाँ हमारे सुपीरियर भी जो थे, वो मुझे पता चला कि वो वहीं से आए हुए हैं, डॉक्टर स्थापक. तो हमने वही सेम, मुझे पता था कैसा होगा, इनके साथ कैसे डील करना है. तो जब भी ईमेल ले आता, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि अच्छा मैं कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से बहुत अच्छा करूँगा, सर आई हैव डन इट, प्लीज गो वंस इट, गो थ्रू इट वंस, जस्ट चेक इट. बिलीव मी, कभी भी उसमें रेड मार्क नहीं लगा. सो एज आई टोल्ड यू, वी शुड नो द स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन. अगर हमें नेगेटिव भी कहना है तो कैसे कहना है, वहाँ पे भी पॉजिटिविटी की सोच होनी चाहिए. लाइटनिंग है तो थोड़ा सा कहीं पॉजिटिविटी तो होगी भाई. सो दिस इज द वे वी कैन थिंक ऑफ. आई थिंक दिस इज द बेस्ट एग्जांपल आई ट्राई टू गिव यू, हाउ पीपल कैन थिंक पॉजिटिव ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक आल्सो. सो हाउ टू क्रिएट वेलनेस. Few things from my side which I have experienced, I have done. I think you all have seen it. आप पढ़ भी सकते हैं. That is, identify areas to change. The teachers, those who were not willing to change, to teach with the help of technology, during this period, they became positive and they find out at that time and they change themselves. So कहाँ चेंज होना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, वो सोचना है यार. चेंज नहीं हो सकता, सोचना ही नहीं है. We have to check ourselves. So first is focus on a positive thinking. अपने ऊपर जो हमारी पॉजिटिविटी कैसे इंक्रीज करनी है, फर्स्ट we have to think that how to increase our positive thinking. Be open to humor. हंसना भी बहुत जरूरी है. अभी आप देख रहे हैं, when I'm talking with a smile and laughing also in between, busting laughter into also. So healthy lifestyle. What I mean healthy lifestyle, it means three things: good food and good food of thoughts also. बहुत जरूरी है good food of thoughts. It may be with the help of these books or with the help of such kind of people, those who are sitting here. So, but we should follow healthy lifestyle. अच्छी सोच वाले लोगों के साथ चलना है, अच्छे थॉट्स को लेना है.
सराउंड योरसेल्फ और इंटरैक्ट। अब अभी तो हम बात नहीं करते कि सराउंड योरसेल्फ बिकॉज दिस इज अ पैंडेमिक सिचुएशन वेयर वी हैव टू गो विद फिजिकल डिस्टेंसिंग। आई वुड नॉट लाइक टू से सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड ये थोड़ा सा जब आया था तो किसी और वे में आया था, इसका मैसेज कुछ और था जो शायद हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रहा पहले भी, तो हम नहीं चाहेंगे कि मैं उस वर्ड को यूज़ करूं, बट या फिजिकल डिस्टेंसिंग की मैं बात कर सकता हूँ। सो उस वजह से मैं कह सकता हूँ, बट इंटरैक्ट विद पॉजिटिव थॉट्स एंड पॉजिटिव पीपल। अपने अंदर भी sometimes I teach that okay, if you are thinking something negative because of hormonal changes, something happens negative also. अभी आप सोचना शुरू किया आज तो मूड ठीक नहीं है, या दिन भर आप काम नहीं कर सकते। बट व्हेन यू थिंक इन द मॉर्निंग, आई थिंक मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर कमर की दर्द हो तो उसको आप थोड़ा सा अगर नॉर्मल है तो उसको ध्यान नहीं दें, अपने आप धीरे ठीक हो जाता है। एंड आई प्रैक्टिस इट। कई बार सिर दर्द हो या कमर दर्द हो, हल्के फुल्के जो दर्द होते हैं ना, आई डोंट टेक डैम, आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ इट, और धीरे धीरे लगता है 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। सो प्रैक्टिस पॉजिटिव टॉक, हाँ ठीक है यार, कोई बड़ी बात नहीं है, वी विल ओवरकम। एंड फ्यू मोर थिंग्स, पॉजिटिविटी तभी आएगी when you will be optimistic. And I have given a line, instead of I have to stay home, think I'm staying home to save lives. As I at the beginning told you, with the help of Batari box model, my behavior affects others' behavior also, others' life also. So I am staying home to save lives, not only mine, but lives of others also, because I may be a carrier. So this is the way I think we can be optimistic. Get dressed and try to follow routine. I don't know whether you believe it or not. I am what example I am giving you. हमारे यहाँ एक चांसलर थे, फाउंडर चांसलर डॉक्टर बेके स्थापक। Mostly what happens when people retire, they think okay there is no life afterwards. कुछ लोग कहते हैं ठीक है ये कर लेंगे वो कर लेंगे, but what he did, it is an inspiration to all of us. वो रिटायर हुए, यहाँ से जब अपने घर गए तो उन्होंने एक ऑफिस बनाया, अपना पर्सनल ऑफिस बनाया, एंड ही स्टार्टेड लिविंग द सेम रूटीन लाइफ। फिर चाहे वो सुबह 10 बजे ऑफिस में पहुंचना है, वापस आना है शाम को 6 बजे, बीच में चाय चाहिए, द सेम रूटीन लाइफ इज स्टार्टेड इन हिज ओन ऑफिस। बुक लिखना या जो भी करना करते रहे, बट इट वाज इन द सेम मैनर। सुबह 10 बजे तैयार होकर अपने ऑफिस में पहुंच गए, अपने ऊपर केबिन में, 6 बजे तक वहीं पे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वापस लौट के आ रहे हैं, इन बिटवीन टी एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। हाँ, जिस दिन छुट्टी है, संडे, अदर हॉलीडेज ही एंजॉयड एज इन हिज ऑफिस डेज। तो पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा, मैंने ही पूछा था सर ऐसा क्यों, उन्होंने कहा इट कीप्स मी फिट, मुझे कुछ और सोचने का मौका ही नहीं देता है। इट कीप्स मी फिट, दिस especially this routine life gives me particular energy that how to live. So I think this is an inspiration for all of us. Get dressed and try to follow. अभी अवधेश सर ने भी कहा, सभी लोग यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा सोशल मीडिया की बाउंड्रीज तो होनी चाहिए, और खासकर उन ग्रुप्स की। मैं ये नहीं कहता हूँ आप ग्रुप्स छोड़ दें, पर ग्रुप्स के वो सारे मैसेज ना पढ़ें। सारे मैसेज पढ़ने के लिए नहीं होते हैं जो आपके अंदर निगेटिविटी लाते हैं। इट मे बी फॉर द सेक ऑफ वन पर्सन, इट मे बी फॉर द सेक ऑफ वन पार्टी, इट मे बी फॉर द सेक ऑफ वन कंट्री, इट मे बी फॉर द सेक ऑफ एनीथिंग। अगर निगेटिविटी पैदा करने वाले मैसेजेस हैं, प्लीज डोंट रीड। सेट योर बाउंड्रीज। ठीक है, मैं ग्रुप में हूँ क्योंकि लोग हैं मेरे साथ, कभी अच्छी चीज भी मिल जाती है, जैसा आशीष सर ने भी कहा, समटाइम्स वी हैव टू पिक अप द बेस्ट थिंग, समटाइम्स वी हैव टू लीव द बैड थिंग्स। हर चीज में अच्छा बुरा होता है, हमारे वीसी सर ने भी यही कहा। So really, we have to set the boundaries. अगर कोई प्रॉब्लम है तो किसी से बात करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। We should accept, yeah, this is the thing which we have. But what we do, especially in India, in Indian scenario, what happens? We want to conceal everything. We want to hide everything. किसी को पता नहीं चलना चाहिए। Somewhere I have written, गरीब अपनी गरीबी छुपाने में और गरीब हो जाता है। गरीब अपनी गरीबी छुपाने में और गरीब हो जाता है, और मरीज अपनी मरीज जो उसका मर्ज है छुपाने में और बड़ा मरीज हो जाता है। सो
talking mental health should not be stigma. इसको problem ना ले, because when you talk, when you communicate, you get the real medicine or the cure. Be creative. जैसे सर लोग हैं यहाँ पे, अवधेश सर हैं, हम सब what we are trying to do. We are trying to become creative with the help of new ideas, new thoughts, and putting our own experience in a new way. So this is what being creative. It may make you positive. I can give you an example of my daughter. She's only 10 years old. But after studies, when she feels that I cannot go out, she comes out and she starts drawing the art, paintings, etc. without saying anything. She keeps herself busy with the help of her own hobbies. This is what being creative. And really, as you know, शुरुआत में टॉक भी हुआ कि बहुत सारे लोगों को फायर किया गया, कंपनीज बंद हुई, क्या क्या नहीं हो गया. तो ये सिचुएशन वो है जहाँ हमें जो हमारे अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है उनको थोड़ा सा कर्टेल करना होगा. वी हैव टू वाइज फॉर द सेक ऑफ पॉजिटिव थिंग्स. अभी सर आगे बताएंगे ही, पर मेरा ये कहना है कि इफ यू डोंट हैव टाइम, व्हेन यू से दैट यू डोंट हैव टाइम, प्लीज से लाइक दिस, आई हैव एट दिस टाइम फॉर द सेक ऑफ माई एक्सरसाइज. जैसे मैं सुबह नहीं कर सकता तो मैं क्या करता हूँ, शाम को करता हूँ. मेरा टारगेट क्या है, हाफ एन आवर या 1 आवर एक्सरसाइज या वॉक. एनी हाउ आई हैव टू डू इट. आई हैव नॉट put myself in a particular frame that only morning is the time for the sake of my exercise. Yeah, it may be at any time. उसके बाद मुझे नहाना ही तो है ना, थोड़ा सा काम और बढ़ जाता है. But I will do it. So सुबह दोपहर शाम इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरा तो ये मानना है कि whenever you want you can do it, but find out time for this one, especially in this pandemic situation. हंसना भी जरूरी है, मुस्कुराना बहुत जरूरी है, because it gives you positive energy. जुड़े रहें, जैसे अभी हम सब जुड़े हैं. मुझे पता है कि अभी हम जो 4 या 5 स्पीकर हैं ये तो जुड़े रहेंगे, बट अदर पार्टिसिपेंट्स, those who are emailing or something like that, giving their emails, I will be happy, or we will be happy, I think I should say like this, if you be in constant touch with us. अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तब तो बेहतर है. If it is for the sake of only certificates or showing your presence in that particular webinar, then I don't think that is good kind of relationship. Please be in touch in future also. We will learn something from you. Don't be in touch for the sake of only yes, we are going to give you something. It is possible that you can give us something. So I appeal from all the viewers, all the participants, please keep in touch with Ashish or Avadhesh, or maybe if I may be helpful, you can be in touch with me also. And everybody is saying personal hygiene. मैंने भी ये कहा कि बहुत छोटी चीज है, but impact बहुत बड़ा है. As I told you, attitude you cannot see. Coronavirus you cannot see. Here also, personal hygiene, there is no need to say that it is my work. I am doing it. We should do it. Thanks to Corona, thanks to COVID, that it has made it as a habit. इसने हमारे एक habit बनाने की कोशिश कर दी है. And I think that is the best part. So let's break the chain of negative mindset. I hope that whatever I have said, it is not for the sake of only saying. I do assure you, कुछ भी अगर कहने का होगा तो मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ या जिस तरह से स्पीकर्स बोलते हैं ऐसे नहीं बोलेंगे वो. We can talk only when we practice it. This is not for the sake of preaching. So life is about balance. Be kind, but don't let people abuse you. Trust, but don't be deceived. Be content, but never stop improving yourself. So with these words, I thank you once again, the organizers, Ashish and NIDM Invertis University, for giving me this opportunity. And I hope I have maintained, I think, up time also. I tried well. Thank you, sir. Thank you once again, everybody. All the participants also. Thank you to you. Thank you. सर बहुत बहुत धन्यवाद. अब तो मैं अपने आप को थैंक्स बोल रहा हूँ कि मैंने आपको अप्रोच किया इस प्रोग्राम के लिए. ओह थैंक यू सर. क्योंकि सर जो आपने बिगिन किया जी सर, कोविड से आगे भी जहाँ और है, आगे जहाँ और भी है, और दूसरा आपने जो कहा कि एक ही डिसेबिलिटी यदि ह्यूमन काइंड की है, बैड एटीट्यूड है,
वहीं से पता चल गया कि प्रेजेंटेशन कितना अच्छा होने वाला है। Oh God, thank you. सर आपने बहुत सारी बातें बताई कि ये जीवन जो है सिर्फ हमारे लिए नहीं है, सोसाइटी के लिए भी है ना। और पॉजिटिव एटीट्यूड और बिहेवियर साइकिल के बारे में आपने बताया, फिर पॉजिटिव एटीट्यूड के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और बेस्ड ऑन एटीट्यूड कितने किस्म के लोग हो सकते हैं, है ना। तो ये क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं ये आपने बताया और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब हम सुबह से जो इंतजार कर रहे हैं लेक्चर का सुदर्शन क्रिया और आर्ट ऑफ लिविंग। और now I will take this opportunity to invite Dr. Awdhesh ji. He is HOD Department of Education Invertis University to give his talk on this aspect of Sudarshan Kriya and basically the art of living. Dr. Avadhesh Sharma ji is physicist basically and also a renowned life coach. Dr. Sharma has an academic experience of more than 13 years. He has obtained his PhD in physics from Jodhpur University, Rajasthan, in the field of piezoelectric composites. He has published in many national and international journals and also a book with an international publisher besides his academic credentials. He is also involved in social causes through internationally acclaimed the Art of Living organization. He is a certified trainer for various programs of the organization such as happiness, wellness, corporate programs, etc. He started his journey with the Art of Living in year 2005 while working as JRF in a DRDO project at Jodhpur University, and within a year and a half became a trainer, certified trainer at a very young age. Since then, sir has trained hundreds of people, mainly across the states of UP, MP, and Rajasthan. We are so lucky, sir, to have you here. Kindly proceed for your presentation. Thank you, sir. Thank you, Ashish Pandaji, for such nice introduction, and thank you others, especially my Chancellor, Dr. Umesh Gautam. Because he is the inspiration. After my master, he is the second inspiration in my life for all these positive things. I thank Avdhesh also and other co-hosts and the executive director of NIDM, Major General Manoj ji also, and everyone else. So because it's quite late, so I will not go into much thanking. I will come to my presentation. Avdhesh, can I share my screen? Yes, sir. You can share, sir, please. Okay. Sir, is it visible? Visible, sir. Full screen. Yes. Okay. I think it's now visible. Full screen. Visible, sir. Okay. Yes, sir, it's visible. Okay. Thank you. So I think we have listened a lot about this situation, COVID situation. So ये तो है ही एक जैसे अभी जब संजय सर बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि अभी क्यों, तो अभी थोड़ा ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. It is always important to pay attention to your mental well-being. So my talk will be mostly focused on mental well-being, and I will address some technical issues because stress or anything related to our body mind is always technical. It's all physiology. So yoga, the science that is more than 5,000 years old, it works on that physiology. Because everything, if you say, एक कोई फिल्म का डायलॉग है ना, वो केमिकल लोचा हो जाता है तो दिक्कत हो जाता है, तो it's all chemical locha. So that chemical locha is triggered by maybe external things, but basically it comes down to your own body, your own mind. It trigger may be outside, but trigger, if you really ask me, trigger is also inside, because different people are triggered in different ways to different degrees. So I will also let you experience some moments of stillness, maybe in the last, if time permits. So this is all not very much important, but still you must know, because most of the time what is happening that people do not know they are under stress. Their behavior shows, so others may know that they are under stress, but people themselves perhaps may not be aware that they are under stress. बल्कि मैं तो एक फेमस डायलॉग सुनता हूँ ना, जब भी वर्क प्लेस पे बात करते हैं कि यार आप स्ट्रेस लग रहा है, नहीं मैं तो कोई स्ट्रेस लेता ही नहीं हूँ. It's a famous dialogue at workplace. मैं कोई स्ट्रेस नहीं लेता, मैं तो स्ट्रेस देता हूँ, ये आगे जोड़ देते हैं. तो it's very difficult to really recognize the stress. So you must know something. So people have defined it. For example,
this is the first definition by two famous psychologists, the way in which people realize and identify their problems, because different people might, you can say, act differently to the same problem. For example, if you are in a traffic jam, somebody maybe get panicked in 2 minutes, somebody maybe get panicked after 10 minutes, or somebody may not get panicked after all. Also, it depends on external factors. For example, you might be going to your job, you are getting late. So that time you will panic. However resilient you are, you will panic to some degree. So this is how the people realize their problem and how they interact with that and how they cope with that. That whole atmosphere makes the stress, the kind of stress or the level of stress. So stress is defined in other ways also, because the time is running out. I will not go into much details, but if you want to sum up, it is the way you interact with your external environment, but it depends on your internal environment. So the relation, the interaction between your internal environment and the external factors that may cause the stress, For example, जैसे कि कभी है कि आपको जॉब में कुछ ऐसा काम दे दिया गया जो आपके रीच के बियॉन्ड है, कैपेसिटी के बियॉन्ड है या टाइम के बियॉन्ड है, तो people may find it like exceeding their own abilities. So जब भी हम ऐसा कुछ करने जाते हैं या कुछ ऐसा हमें मिल जाए जो हमारे ability, जो हमारी perceived ability है उससे अगर ज़्यादा है तो we feel stressed out. That was the definition given by Folkman and Lazarus. Causes of stress are as varied as the people on the planet. So if there are 7 billion people, there may be 7 billion causes for the stress. So who can judge you are under stress? Okay, people can see, but the level of stress you are feeling, so you are the only judge. You are the best judge, I will say. You are the best judge of the stress of that you are feeling. Why? Because no two people are same cognitively. Cognitively means everybody has a glass. भले आप specs लगाएं या ना लगाएं, but everybody has a glass of their opinions, of their values, of their defined rights and wrongs. Everybody has a spec and they see the world with that specs. तो एक सिचुएशन को आप जो है वो सेम सिचुएशन को यू कैन सी इन अ डिफरेंट वे, आई कैन सी इन अ डिफरेंट वे, है ना. जैसे कि कहा गया ना कि ये टेस्ट होता है जब आप एसएसबी देने जाते हैं, मैंने एक बार दिया तो उसमें बहुत सारे पिक्चर्स दिखाते हैं. तो जैसे एक लड़का एक लड़की बैठा हुआ है और हाथ पकड़े हुए हैं, तो व्हेन people write their stories there, they write as many stories as people are there. No two people write the same story. So it depends on the glasses you have put on yourself, the ideas you have put in your mind that this should be like that should be like that you see the world. So cognitively we are very different, we are totally different, no two are same. So the level of stress, the cause of stress is also not same. So these causes are called stressors. अगर हम technically बोलें तो they are called stressors. So any stressor, जैसे अवधेश ने कहा अपने presentation में कि आप एक glass को अगर hold करें 10 मिनट hold करना है, it's not a problem. But if you hold it for an hour, it becomes a problem. If you hold it for a day, I think it will damage your tissues in the arms. So it's about the stressors and the duration of stressors. अगर वो बहुत ज्यादा देर तक, कोई छोटा स्ट्रेसर भी है अगर वो लेकिन बहुत देर तक रहता है, प्रोलॉन्ग्ड रहता है, जैसे कि यही जो वरी है, मान लीजिए कोविड का वरी है. सो इनिशियली ओके इट वाज ए वरी कि भाई हो रहा है ना, जब हम इसमें जाते जा रहे हैं अभी लग रहा है 6 महीने और रह सकता है, साल भर और रह सकता है, तो जब ये प्रोलॉन्ग हो रहा है तो इट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, लॉट ऑफ स्ट्रेसेस. सो प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेसर्स क्रिएट, वो छोटे स्ट्रेसर भी हो लेकिन अगर प्रोलॉन्ग है तो यू विल हैव टू आइडेंटिफाई दोस stressors in your life. कॉफी दे दे. हेलो, हाँ, ओके. तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन. जैसे अनिल गुप्ता सर ने शायद अपने टॉक में कहा था कि रेजिलियंस इज डिफरेंट. हर एक का रेजिलियंस जो डिफरेंट है. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिलियंस, कि हर एक का अपना कोपिंग मैकेनिज्म है स्ट्रेस से डील करने का. हर एक का कितना स्ट्रेस वो ले सकते हैं उसका एक
पैरामीटर है कि भाई इतना स्ट्रेस हम ले सकते हैं, इतना नहीं ले सकते हैं। तो अगर आप बात करेंगे तो देयर आर n number of causes for stress. You will have to identify from your own life. You will have to see your own life what is causing stress. It may be finances for somebody, it may be relationship issues for somebody, it may be job issues for somebody. Anything can cause stress. Okay, even the marriages cause stress. Any change causes stress. इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो सिमिलरली इफेक्ट्स आर वेरी वेरीड, लेकिन अगर हम एक इंडिविजुअल के ऊपर बात करें तो इफेक्ट्स कैन बी फिजियोलॉजिकल, मींस रिलेटेड टू फॉर एग्जांपल से any problem in the body, any disease in the body. Even if you go to NIMHANS, National Institute of Mental Health and Neurosurgery, they have done many wonderful surveys. You will find that more than 90% disease which are present today are psychosomatic diseases. They come in our psyche first, then they go into our body. Even back pain, for example, you relate back pain to the posture mostly, but I will tell you back pain in most of the cases is related to stress in your nervous system. Okay, so these are physiological, means they come into psyche but they then reflected in your body in forms of disease. Cognitive means when you are very much stressed, है ना। एक मैं लाइट एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि जैसे हम जब एग्जाम में होते हैं, सभी का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हमारे साथ हैं, मेरे डिपार्टमेंट के भी है बहुत सारे। सो व्हेन वी आर इन एग्जाम, कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जो लगता है अरे यार ये आ रहा है लेकिन नहीं आ रहा है याद, आ रहा है पता है मुझे आता है लेकिन ये याद नहीं आ रहा, अभी याद नहीं आ रहा। एंड व्हेन वी कम आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल इट बिकम्स वेरी क्लियर, अरे यार इसमें तो ये लिखना था। इट हैज बीन द एक्सपीरियंस ऑफ एवरीबॉडी। क्यों? बिकॉज यू वर इन द स्ट्रेस in the examination hall. When you came out, there was no reason to be under stress. So whenever you are stress free, your cognitive abilities enhances. When you are under stress, your cognitive abilities goes down. Emotional, you know, emotionally means you become, जैसे कि आप अपने आप से आप पैनिक हो जाते हैं या फियर में आ जाते हैं, ये सारे इमोशनल इश्यूज आपके साथ आ जाते हैं अगर स्ट्रेस लंबे टाइम तक रहता है। बिहेवियरल इश्यूज, दे आर, वो आप दूसरे लोग आपको आराम से देख के बता सकते हैं। जैसे कहा किसी के पास जाते हैं तो वो लगता है इनके पास और जाना चाहिए, और किसी के पास जाते हैं तो लगता है इसके पास दोबारा कभी आने का मौका ना मिले तो अच्छा है। तो it may be the behavior of that person, but that person is also a victim. हर एक कल्प्रिट के अंदर भी अगर आप देखेंगे there is a victim. वो victim is crying for help. Maybe he is very much under stress, that's why he is behaving in that way. Okay, so behavioral हो सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे कॉग्निटिव साइंस मैंने लिखा हुआ है, आप उनको और समझ सकते हैं, बट वी विल नॉट गो इनटू मच इनटू थ्योरी। हाँ, लास्ट वन इज इम्पॉर्टेंट। इफ दोज थॉट्स प्रोलॉन्ग्स, इफ ये जो बिहेवियरल चेंजेस हैं, इमोशनल चेंजेस हैं, कॉग्निटिव हैं, अगर उनको एड्रेस ना किया जाए, देन दे बिकम, दे ब्रिंग पैनिक, दे ब्रिंग होपलेसनेस, एंड दे इवन बिकम सुसाइडल थॉट्स, है ना। जो हम आजकल देख रहे हैं, जो हो रहा है, सभी लोग इतना ज्यादा बातें कर रहे हैं उसके बारे में, जो भी सुसाइडल टेंडेंसीज हैं, सुसाइडल थॉट्स हैं, जो लोग सुसाइड करते हैं, इट स्टार्ट्स विद सम स्ट्रेस. That is stress which is cumulative in nature. It starts accumulating in the system, and once it reaches beyond the capacity of the person, they commit such kind of acts. Or even violence. Violence is also a result of excess stress, not being able to cope with the stress. So this is some very basic, because I am also not from medical field, and most of you are also not from medical field, so I will not go much into very intricate things. But you should know the pattern, how the stress starts and how it goes on and on. Because if you know it, you will know the, you will try to see those signs, and you will know that you are under stress, and you will do something to get out of it. So whenever there is a stressful situation, it can be any very small situation also. Like for example, you are in a traffic jam, and I will tell you this system, this pathophysiology of stress, it was designed in our system
since the ancestry, since we used to be in the jungle, since our ancestors used to be in the jungle, in the cave, they were cave dwellers. So they will find two situations. They will find a situation, either they will have to fight or they will have to flee. So this response, stress response, is the same response. It's nothing new. It is in the system, but now those stimuli have changed. Those stimuli are no longer a tiger or darkness or thundering. Those stimulus are maybe your boss, maybe your job, maybe your wife, maybe the traffic jam. They can be anything, but the response of the body and the emotions remain same. So whenever there is a stressful situation, there is a part in the brain that is called the emotional processing. Whatever you see, whatever you hear, whatever you listen, that is first processed emotionally in the amygdala. And amygdala decides, for example, if you see a car speeding towards you, है ना, अचानक रोड पे जैसे कोई कार आ गया, आपको दिखता है, एकदम से दिखे भी ना, उसका आवाज भी सुनाई दे जाता है, तो एमिगडाला जो है वो रिएक्ट करता है एंड इट सेंड्स ए सिग्नल टू हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस आप में से बहुत सारे लोगों को पता है, इट कंट्रोल्स द ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम. ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जो कि हमारे जो ऑटोमेटिक प्रोसेस हैं, जैसे कि हार्ट बीट है, लंग्स का वर्किंग है, ये जो भी ऑटोमेटिक प्रोसेस है उनको कंट्रोल करता है. तो हाइपोथैलेमस सेंड्स अ सिग्नल टू SNS. SNS here stands for sympathetic nervous system. जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है, इट इज कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. सिंपैथेटिक इज लाइक एक्सीलेटर. जैसे कार में आपका एक्सीलेटर होता है, इट्स लाइक दैट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज लाइक द ब्रेक. जैसे कार में आप देखते हैं ब्रेक होता है, तो बोथ आर रिक्वायर्ड बट इन प्रोपोर्शन. सो एसएनएस जो है वो एक्टिवेट होता है जब भी हाइपोथैलेमस ऐसा कोई डिस्ट्रेस सिग्नल रिसीव करता है एमिगडाला से, और वो होने के बाद एड्रेनलिन, जो एड्रेनल ग्लैंड है, वो एक्टिवेट होती है. एड्रेनलिन आपने पढ़ा होगा, एक हार्मोन होता है, वो सीक्रेट होता है. वो हार्मोन का मेन काम क्या है? इट प्रिपेयर्स यू फॉर द फाइट और फ्लाइट. मींस इट फिल्स योर बॉडी विद द एनर्जी एंड माइंड विद द फोकस. तो जो एड्रेनलिन है उसके दो काम है, एक तो बॉडी को पंप अप कर देना, एनर्जी से भर देना. कैसे करता है? तो वो आपको पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर इन एंगर, एवरीबॉडी हैज एक्सपीरियंस्ड एंगर. तो आप एंगर में होते हैं तो आप देखते हैं कि आपका जो है ब्लड जो है वो फास्ट हो जाता है, हार्ट बीट फास्ट हो जाता है, आपका ब्रेथ जो है वो फास्ट हो जाता है. सो दीज आर ऑल साइंस ऑफ सीक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन. तो एड्रेनलिन जो है दैट secretes further. It activates axis that is called HPA axis. HPA axis is hypothalamus, pituitary gland and your adrenal glands. तो ये जो सिस्टम है वो एक्टिवेट होने के बाद जो इनिशियल सर्च है वो तो यहाँ से आता है कि जैसे एसएनएस एक्टिवेट हुआ और वो एड्रेनलिन पंप कर देता है, बट थोड़ी देर बाद जो एड्रेनलिन का लेवल है वो डाउन हो जाता है सिस्टम में, तो इट में गो बैक टू नॉन रेस्पॉन्सिव स्टेट. तो उसको हाई रखने के लिए एक और HPA एक्सिस है वो एक्टिवेट हो जाता है और पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट. तो पिट्यूटरी ग्लैंड अगर एक्टिवेट हो जाती है और वो परसिस्ट डेंजर को, इफ इट फील्स कि डेंजर इज परसिस्टिंग, तो वो एसएनएस को एक्टिवेट रखती है थ्रू द सीक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल. कॉर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन. तो कॉर्टिसोल से ये जो साइकिल है आप देख रहे हैं, आपने स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, दिस साइकिल कंटिन्यूज. यानी कि ऐसा है कि जैसे कि आप अपने कार को स्टार्ट रखते हैं और हाई एक्सीलेटर कर देते हैं लेकिन रुका हुआ रखते हैं, तो आइडलिंग ऑन ए हाई रेव, तो सिस्टम को एकदम तैयार रखता है ना. फिर अगर लगता है कि डेंजर नहीं है तो इट एक्टिवेट्स PNS, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एंड इट इज लाइक रेस्ट एंड डाइजेस्ट. यानी कि जो सिचुएशन चला गया उसके जो रिएक्शंस हैं उनको धीरे धीरे अपने आप में एसिमुलेट करना, एक्टिवेट करना. Now, what is the problem? The problem is that this continuous secretion of adrenaline, it causes a stress on your blood vessels. जैसे कि ब्लड को फास्ट रखना है, हार्ट को फास्ट रखना है, तो it creates problem in your respiratory system, in your cardiac system. तो जो आप देखते हैं कि लोग कार्डियक डिजीज से परेशान हैं, अगर उनके लाइफ को ध्यान से देखा जाएगा तो they might be suffering from a stressful situation for too long. कोई भी स्ट्रेस होगा उससे वो प्रोलॉन्ग होंगे. there is no cardiac problem without any stress, है ना.
अगर ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट. सो आप अपने लाइफ को देखिए, इफ यू आर बॉर्डरिंग टू दोज प्रॉब्लम्स मीन्स देयर इज सम स्ट्रेस. यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द कॉजेज एंड यू विल हैव टू रेमेडी दोज कॉजेज. दूसरी तरफ है कि जो कॉर्टिसोल हार्मोन है जो कि बॉडी को एनर्जी देता है. तो बॉडी को एनर्जी देने के लिए व्हाट इट डज कि कहीं पे जो बॉडी में फैट्स जमा है, स्टोरेज जो है बॉडी में एनर्जी का, उससे वो एनर्जी लेता है. तो वो जो एनर्जी लेता है, वो एनर्जी जो चैनल्स है वो डिप्लीट हो जाते हैं. तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए इट टेक्स मोर एनर्जी, मीन्स योर एपेटाइट इंक्रीजेस. तो आपने सुना भी होगा कि स्ट्रेस में लोग जो है वो ज्यादा खाने लग जाते हैं. Even when people are stressful and you give a bag full of chips, they will finish it earlier than the people who are not under stress. This is a very simple sign. You can observe in your close surroundings. तो एपेटाइट बढ़ता है, एपेटाइट बढ़ने से वेट गेन से जो भी हमारे नीचे के सिस्टम हैं, जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो सब हैं. इवन लंग्स पे भी प्रेशर पड़ता है. सो प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस कॉजेज ऑलमोस्ट ऑल डिजीज विच यू सी, whether it is heart, whether it means cardiac or respiratory or diabetes or weight gain, obesity, it's all has a root cause in stress. So this is the simple, very pathophysiology of the stress. Now the question is how to deal with it practically. Theoretically, we all know that stress is not good. We should be positive. We should be energetic and all that. But how to do it? The question is how. What we know, most of the people know what, but how? That is my point. So there are some simple facts which can keep you away from the stress. These are not for when you are stressful, they will work, I don't say, but they can keep you a little away from the stress. For example, avoiding coffee, alcohol, that Sanjay sir ne abhi kaha, jaise nicotine. One important factor, that is refined sugar. People generally don't realize it, but refined sugar works directly on your nervous system. In this situation, I will suggest that you take minimum amount of refined sugar because it weakens your immune system. So when your immune system is weak, the virus attack is more, you are more prone to virus attack. Okay, so refined sugar is one of the things you should avoid. Physical activity, you must take some physical activity. Everybody, I think nowadays is very sincere about these things. Quality of sleep, it doesn't matter how long you sleep. It also matters, okay, 6 hours, 8 hours. Everybody is different. Everybody's need is different. But the quality more matters. You may sleep for 10 hours, still you may woke up restless. If you may sleep for 4 hours, but you may be very restful. So it depends on the quality of sleep. Talking, communication, that is very much important. Stress mostly comes from the mismanagement of time, the routine stress. So generally what we do, we procrastinate the things. जो routine है, they becomes necessary. Necessary becomes important. Important becomes urgent. And this causes a lot of stress. So even routine things can become very urgent if you don't pay attention. So managing the time before things become urgent, doing them. On workplace, it is very important, learn to say no. You have a capacity, every individual has a capacity. Obviously, this is the job of the leader also to see the capacity of the people and give the work accordingly. But if they are not able to see, you should learn to say no. और संजय सर ने हमें इतना अच्छा तरीका भी बता दिया how to say no. So you should learn to say no sometime. And this is very important when you are at workplace. तो मुझे याद है अनिल सर कह रहे थे कि 8 घंटे जैसे काम करते हैं. लोगों ने कहा कि वो 8 घंटे इसलिए काम करते हैं कि बीच में आराम करते होंगे, चाय ब्रेक लेते होंगे, but these breaks are very important. So this intermittent rest, जैसे आप 1 घंटा 2 घंटे काम किए हैं, फिर आप 5 मिनट 10 मिनट वो सारा काम के अलावा कुछ नया कुछ भी करें, एक्स्ट्रा करें. वो don't do the same thing for too long. It causes the stress on our system. और जो मैं आपको बताना चाह रहा था, that is the sure short ways, and I will show you some slides of the researches done on that. It is the Sudarshan Kriya yoga and pranayam practices.
These practices are the part of the Art of Living programs. These programs are taught almost in 152 countries, and it has benefited millions of people around the world. So what it is, Sudarshan Kriya Yoga is a package. It's just Kriya is not there, it's a package. It includes some yoga, classical Hatha Yoga, prescribed in Patanjali Yoga Sutra, और हठ योग प्रदीपिका, जो भी हमारा 5000 साल पुराना ज्ञान है उसी का एक कॉम्बिनेशन, आसनास का कॉम्बिनेशन है. Then there is a breathing technique that is called Ujjayi breath. It's a deep breathing technique. And there is a pranayam, Bhastrika pranayam, which I think we will practice. Yes, yes. जी सर, मैं कह रहा हूँ सर एंड होने वाला है थोड़ी देर में आप. Okay, you was talking to somebody else. So it includes Bhastrika pranayam, bellow breathing, that we will do. Mostly we will do a bit. Sudarshan Kriya, this is the main component. Sudarshan Kriya is a breathing, rhythmic breathing technique. Rhythmic breathing, deep breathing technique. So you say that if I want to explain it, because it is taught only in the programs, we cannot teach it like that. So it is like you say that the nature is in rhythm. You like the nature because it is in rhythm. जब वो नेचर का रिदम अगर बिगड़ता है तो वो हमें पसंद नहीं आता है. Similarly, your whole system, because if you see the system, if I talk about the system, you are not just this body. Everybody realizes we have thoughts, we have ideas, so we have a mind. We take decisions means we have intellect. We remember things means we have memory. We are different individuals, so we have to some extent ego. So these are all parts of your system. These things come together, then there is a human being. So these all systems should be in the rhythm. If they are out of rhythm, then there is problem. Disharmony is problem. It's like that. I say in my programs. Suppose you have 7 instruments. You have tabla, guitar, sitar, etc. And हर एक अपना अपना rhythm में बजने लगे. If they follow different rhythm, कोई राग भोपाली में बज रहा है तो कोई राग मॉलकॉन्स में बज रहा है या कुछ और राग में बज रहा है, तो you will not have any music. But if they follow a particular rhythm, if they follow suppose one raga, then you will have very beautiful, wonderful music. So it's same with us. Our system means our body, breath, mind, intellect, memory, ego, self. If they are in a rhythm, then there is music in life. That is called harmony. There is no stress. This stress causes this disharmony. So Sudarshan Kriya is a proven way to establish that rhythm into the life. It 100% establishes the rhythm. Even the first time when you practice it, you will realize by yourself that it establishes the rhythm. It calms your mind, your body, and you become instantly happy. It's something like that. It is followed by Yog Nidra. It's a relaxation technique. As I said, it is followed almost all over the world. So what are the findings? It reduces the cortisol. Basically, cortisol, I told you, cortisol is a stress hormone. It keeps your sympathetic nervous system on and on and on and on. And if it is released many times or in a large quantity, it increases your appetite, and this may cause many other related ailments. Sudarshan Kriya benefits the immune system. I will show you some graphs of the research. It relieves you of anxiety and depression, enhances brain function. So brain function enhances by adrenaline also, but it is enhanced by the Sudarshan Kriya, practicing of breathing also. But that is inorganic increase. This is organic increase, you may say. It enhances health, obviously. Post-traumatic stress disorder. This is one of the very expertise of Art of Living. If you remember that tsunami was there in, I think, 2005 or 6, 4 or 5. So after that, even the fishermen who were very fond of the catching the fish and going to the sea, they lost their loved ones, and they didn't even want to see the sea. They did not even used to face the sea. They were so afraid and they were so in the shock. So Art of Living worked there. The volunteers worked there for more than a year with different groups, different age groups, and they helped
a lot, and many studies were done which showed that there was significant reduction in the PTSD symptoms. It affects the body on the molecular level. I will tell you that the latest research, I think Oslo University, you will find it on the net also. They are researching on the effects of Sudarshan Kriya yoga and pranayama practices on gene expression. So when we say every person is wired differently, that's why he responds differently for the stressor, same stressor. So there must be something in the genes. So Sudarshan Kriya even has the effect at the molecular level, at the gene level. It works on the gene expression also. That is the latest finding by the Oslo University, you will find it. So these are some effects which has been observed, like deep sleep increases the quality of sleep. I was telling you, it increased more than 218%, 218%. Well-being means this this what you call endocrine जो system है हमारा, hormonal system है, उसका balancing, that is actually responsible for well-being. It's all chemistry, no? So that increases by more than 50%. The stress hormone we are talking about, that cortisol, that decreases, depression decreases, and these are the real data from some papers. You will find the papers references below these data. So I will not go much into detail, but you can see broadly this cortisol level we are talking about. This is the control group. Control group means the group which are kept on some medication and some controlled environment. This is the result of those standard care or control group. And this is the result of Sudarshan Kriya Yoga. And I think it's a result of 2 weeks or 4 weeks of practice, just a 1 month practice. So you can see the reduction is very, very large and quite sharp. And this is the PTSD I was talking about, post-traumatic stress disorder. So this is not for some control group. It was like 1 week of Sudarshan Kriya Yoga, 1 week before they learned the Sudarshan Kriya Yoga. This is 1 week after, when they learn and they practice it for a week. So you can see the sharp decline in the this group. And this is 1 year after this. I was talking about that they worked there for 1 year with the tsunami victims. This is and the result which shows the healthier blood pressure, because whenever that I was talking about, whenever adrenaline is released in our system, it creates a lot of stress on our blood vessels, and this causes the blood pressure to fluctuate, and that is what is fight or flight response. But if it is continuous, for example, if in the day you feel you work in a stressful environment for 5 hours, 6 hours, 10 hours, then it creates a lot of problem. It permanently damages your blood vessels, and you can become the victim of blood pressure diseases, BP diseases. So these are the results of blood pressure and heart rates for Sudarshan Kriya Yoga. This is another optimism. Optimism, obviously, it was measured by psychological tests. So people experienced more optimistic. They felt more satisfying. Life satisfaction increased. So nothing changed in their environment. That's what I was talking about. That environment you cannot change. You cannot change your boss, for example. You cannot change your workplace too frequently. You cannot change, obviously, your wives or kids or relationships. So what can change is only yourself. What can change is your response to those stressors, those stimulus. So this helps in that. This is the effect on depression, both clinical, non-clinical depressions. And this is what I was talking about. This is very important these days. Immunity. So immunity depends on lymphocytes. So lymphocyte counts increases when you practice Sudarshan Kriya. It increases. So this is in a controlled group. On the left you see, and this is Sudarshan Kriya Yoga. After doing so control group, you can see the increase is very small. Lymphocyte count increase, and its percentage increase.
And in Sudarshan Kriya group, yoga group, you can see it's very large gap. So that lymphocyte count means your immune system strengthens, and that is very, very important now these days, because okay, you can keep track of having hygiene, you may not go outside, but these all limitations have their limitation themselves, because you do not remember कि जो डोर नॉब है वो कितने लोगों ने छुआ होगा. गलती से आप छू सकते हैं, इमरजेंसी में छू सकते हैं. अभी हम कहते हैं कि अपने चेहरे को नहीं छूना, लेकिन फिर भी कभी ना कभी वो हाथ चला जाता है. तो एक्सटर्नल थिंग्स यू कैन नॉट कंट्रोल टू मच, दैट उनको ध्यान रखना वो जरूरी है, बट उसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा पॉसिबल है. व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन इंक्रीज योर इम्यूनिटी. सो दैट इज व्हाट कि हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगा तो भी अच्छा हो जाएगा. And this is one thing that we all have experienced in our life. So this इसी पे हमारा पूरा जो based है सुदर्शन क्रिया योगा, that this rhythm of breath has a connection with the state of mind. Everybody has experienced, for example, if you are happy, suppose if this time you are happy, your incoming breath is high, means more. You are breathing in more and breathing out a little lesser than that. That is a happy state, sign of happy state. Angry everybody has experienced. अपने आप में एंगर ना दिखे, लेकिन सामने वाले में तो एंगर दिखता ही है. इवन हमारे यहाँ आप देखेंगे तो कहते हैं कि गुस्से में, अवधेश से देखिए किसी का माइक डिस्टर्ब कर रहा है. अच्छा, कुछ लोग ट्रैफिक में भी अटेंड कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है. Okay, so it might be great. So when somebody is angry, that breath becomes short and fast. और आप देखेंगे कि वो body temperature also changes, है ना. बोलते हैं ना गुस्से में तमतमा रहा है, लाल हो रहा है गुस्से में, तो it really is like that. When you are feared, the breath is shaky. जैसे एकदम कोई fearful, especially बच्चों में आपने देखा होगा ना, वो एकदम से सांस जैसे उखड़ जाता है. Even if there is some asthmatic patient, आप देखेंगे कि अगर कोई एकदम से fearful situation आ जाए तो they become तुरंत वो response करने लगता है उनका system. So that is when you are depressed, वो long face हो जाता है, body एकदम ऐसा हो जाता है, कुछ करने का मन नहीं है. So these are the emotions, but you see they are connected intimately with the breath, rhythm of breath. So what now is happening is that there is an emotion in our mind, emotion changes, your breath changes, and the changes are reflected in the body. So what we teach in our programs is that it can become opposite also. If the emotions can change breath, the breath can change the emotions. Breath has the power over emotions. Rather, I would say it is the only power that you have over emotions. Like for example, everybody knows what is wrong or right. छोटी सी चीज के लिए भी, फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी इज अ डायबिटिक पेशेंट, ही नोज व्हाट टू ईट व्हाट नॉट टू ईट, लेकिन कई बार इतना कंपेलिंग हो जाता है वो मेमोरी, जैसे रसगुल्ले का स्वाद होता है तो इतना कंपेलिंग हो जाता है कि वो कहता है यार एक खा लेते हैं, थोड़ा डोज बढ़ा लेंगे. सो एवरीबडी नोज व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, बट द क्वेश्चन इज हाउ. So this breath has the control over your mind, or I would say it is the only control that you can experience over your mind. You have over your mind. So Avdhesh sir and Ashish sir, I would request ki can we do some little pranayam? And for 10 minutes we will do some pranayam and a little meditation, because my program is never complete without any experiments. नहीं बिल्कुल सर, हम चाहते भी थे वो. सॉरी वो थोड़ा लेट हो गया प्रोग्राम हमारा. That's okay. So now I would request everybody who is attending, those who are attending sincerely, to please follow the instructions very carefully, because what we are going to do, if you do not follow and if you do not do it properly, that may damage your system. So anybody who is attending, and if they are attending sincerely, even I would request if they can switch on their videos, not the audio, only video, so I can watch from here and that you are doing it properly. So this is the first pranayam that also forms the part of Sudarshan Kriya yoga practices. It is called Bhastrika. So Bhastrika is English we call it bellows breathing. हिंदी में आप लोग ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. जैसे आप देखते हैं लोहार होते थे पहले, उनके पास एक वो
चमड़े का बना हुआ धौंकनी होता था। जी जी। तो वो धौंकनी को दबाते थे और जो है हवा निकलता था और आग तेज हो जाता था। सिमिलरली वी विल यूज आवर लंग्स। तो हम क्या करना है, हमें लंग्स से कि लंग्स को फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करना है और फोर्सफुली ही ब्रेथ को छोड़ना है। लेना भी फोर्सफुली है, छोड़ना भी फोर्सफुली। मैं एक बार डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगा, देन वी विल डू इट टुगेदर। सो इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो हमें मदद करती है, दैट इज पोजिशन ऑफ आवर हैंड्स। तो व्हाट वी कैन डू इज दैट, अगर आप चेयर पे हैं जिसमें दोनों तरफ हत्ते हैं तो थोड़ा सा आगे आ जाइए चेयर पे, अपने एज पे आ जाइए चेयर के, और उससे आपका कमर भी सीधा हो जाएगा। अगर आप पीछे बैठते हैं तो कमर झुक जाता है, थोड़ा एज पे रहेंगे तो कमर ठीक रहेगा, सीधा रहेगा। सर एक क्वेश्चन था, आप कह रहे हैं कि ऑफिस में भी जो ऑफिस चेयर है उसमें भी हम ये प्राणायाम कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं आप। थैंक यू, बिल्कुल कर सकते हैं आप ऑफिस में। मैं आई विल गिव यू सम टिप्स जो कि आप ऑफिस में फॉलो कर सकते हैं, बीच बीच में फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो आप जो है अपना चेयर के एज पे बस थोड़ा आ जाइए। तो एज पे आने से एक तो आपको वो जो हैंडल्स हैं चेयर के वो नहीं टकराएंगे, और दूसरा आपका कमर जो है वो स्ट्रेट हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली। अवधेश सर, जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट अगर हम पीपीटी का शेयर करना हम रोक देते हैं तो हमारे सारे पार्टनर हमें नजर आ जाएंगे सर। ओके। अच्छा, पीपीटी में बस आप ये दो पोजीशंस देख लीजिए, है ना। दो पोजीशंस आप देख रहे हैं, एक बार हैंड्स ऐसे हैं और एक बार ऊपर जाके खुले हुए हैं। दैट वी विल हैव टू डू। अब क्या करना है, मैं आपको आप स्क्रीन शेयर, अच्छा स्क्रीन शेयर रोक देता हूँ, मैं फुल पे हटा दीजिएगा। जी, ताकि पार्टिसिपेंट भी। ओके, सो टेक मी ऑन। मुझे आप चाहें तो स्पॉटलाइट में ले लीजिए जब तक मैं सिखा रहा हूँ। सर स्पॉटलाइट में हैं आप? ओके, दैट्स ओके। सो व्हाट वी नीड टू डू इज दैट, ये आप हाथों का एक पोजीशन बनाएंगे। दिस पोजीशन हेल्प्स इन ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, है ना। तो ऐसे एक पोजीशन, ये हल्की सी मुट्ठी बंद है, कद्दों के पास है एवरीबॉडी। और उसके बाद हाथों को ऊपर ले जाएंगे और मुट्ठी खोल देंगे, जो आपने अभी फिगर में देखा था। जितना आप स्ट्रेट रखेंगे उतना अच्छा है ना। और वापस आएंगे, मुट्ठी बंद। क्लियर? इट्स वेरी इजी। ऊपर जाएंगे, हाथ खोल देंगे, नीचे आएंगे, मुट्ठी बंद। इसमें आप ऑटोमेटिकली खुद ही देख सकते हैं, जब ऊपर जाते हैं तो सांस लेना आसान है, और जब नीचे आते हैं तो सांस छोड़ना आसान है। सो व्हाट वी विल डू, व्हेन आई से ब्रीथ इन, सो हैंड्स विल गो अप एंड यू विल ब्रीथ इन। व्हेन आई से ब्रीथ आउट, हैंड्स विल कम डाउन एंड वी ब्रीथ आउट। तो ऊपर जाते हुए सांस अंदर, नीचे जाते हुए बाहर, एंड फोर्सफुली। नाउ चूंकि यहाँ सभी एज ग्रुप के लोग हैं, तो मैं एक थोड़ा प्रिकॉशन देना चाहूंगा आपको कि इफ यू आर फीलिंग एनी एलिमेंट्स लाइक कार्डियक प्रॉब्लम अगर कोई है आपको पहले से, या अगर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, या फिर स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है, या अस्थमा, अगर ये चार चीजों में से कोई है तो आप इसको इजीली करेंगे। आपका पोजीशन भी इजीली जाना चाहिए और ब्रीदिंग भी इजी होना चाहिए। जिनको ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दे विल डू इट फोर्सफुली, ओके, बिकॉज अंटिल यू डू इट फोर्सफुली वो बहुत ज्यादा रिजल्ट विजिबल नहीं होगा, है ना। तो कैसे करना है इसको देख लीजिए। माय काउंट विल कम, ब्रीथ इन आउट, इन आउट, इन आउट, लाइक दैट। सो आपको क्या करना है, सिर्फ इन में आउट। हेलो जी सर। I think his video is stuck. No sir, that was temporary फिर से problem. बता दीजिए प्लीज। हेलो, आवाज आ रही सर? अवधेश जी? हाँ, अब आ रही है। काइंडली फिर से बता दीजिए, वो बीच हाँ, बीच में वो शायद इंटरनेट कनेक्शन को दिक्कत होगी। सो व्हाट वी नीड टू डू, जब हम ब्रीथ इन कहेंगे तो आपको सांस अंदर लेना है, हाथ ऊपर ले जाना है। जब हम ब्रीथ आउट कहेंगे तो सांस बाहर, हाथ नीचे, ठीक है। और फोर्सफुली करना है। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कार्डियक, ब्लड प्रेशर, अस्थमा एंड स्पॉन्डिलाइटिस, ओके, क्लियर। सो लेट्स डू इट। फर्स्ट राउंड हम आंखें खोल के कर सकते हैं, और उसके बाद आंखें बंद करके करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, फायदा रहेगा। सो लेट्स बी रेडी। हल्की मुट्ठी कंधों के पास, और एक नॉर्मल सांस ले बिना हाथों के मूवमेंट के, नॉर्मल डीप ब्रेथ, और छोड़ दें। और फिर हाथों के मूवमेंट के साथ ब्रीथ इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट,
in, out, 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 and relax. So whenever I say relax, just close your eyes, keep your hands on your lap, on your knees, wherever you feel comfortable. अपने हाथों को आराम से अपने जंघा में, गोद में, कहीं भी रख दे, and close your eyes, आंखें बंद कर लें, and observe your body or your breath. If you have done it correctly, you will feel a surge of energy, something rising up, you might feel. Absolutely right, sir. Keep your eyes closed, your hands relaxed, and your body is still. So now we will do one more round with your eyes closed. आंखें बंद करते हुए एक राउंड और करेंगे. तो बस मेरे इंस्ट्रक्शंस को सुनते जाएं, आंखें बंद रखें. बी रेडी. हल्की मुट्ठी कंधों के पास, हाथों को मोड़कर. कीप योर बैक स्ट्रेट. रीढ़ की हड्डी सीधी रखें. And keep a smile on the face. That is very important. And with the smile, take a normal breath without hands movement. हाथों को बिना हिलाए एक सामान्य गहरी सांस ले और छोड़ दे. और फिर हाथों के मूवमेंट के साथ फोर्सफुल ब्रेथ. ब्रीथ इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, in, out, 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 and relax. विश्राम करें. आंखें बंद कर लें पूरी तरह से. Keep the body still. Hands on your lap, on your knees, wherever you feel comfortable. So we will do one more last round. Take the position. फिर से एक बार ये हम आखिरी राउंड करेंगे बस. फिर से तैयार हो जाएं. हल्की मुट्ठी कंधों के पास, रीढ़ की हड्डी सीधी, और मुस्कुराते मुस्कुराते एक सामान्य सांस लें बिना हाथों को हिलाए और छोड़ दें. और फिर हाथों के मूवमेंट के साथ फोर्सफुली ब्रीथ इन, आउट, in, out, 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 and relax. आंखें बंद कर लें और अभी आराम से बैठ जाएं. अगर सीट पर आगे खिसक के बैठे हुए थे तो पीछे टिक कर आराम से बैठ जाएं. Keep your eyes closed, hands and body relaxed.
Take a normal deep breath in, एक सामान्य सांस लें और धीरे धीरे छोड़ दें. Breathe out slowly. Now we will do a short meditation, just 5 minutes. But you must understand that meditation is not concentration. It is deconcentration. This art of letting go is meditation. So let your mind go wherever it wants. You just simply listen to the instructions with a light mind. Do not try to focus or concentrate. So remember your weight, whatever it may be, 50 kgs or 60 kgs or 70 kgs. Remember your weight, the weight of your body, and place the entire weight on the seat you are sitting. पूरे वजन को जिस जगह में आप बैठे हैं, जिस सीट पर आप बैठे हैं, उस पर रख दें. Anyway, the seat is carrying the weight. Now just become aware of your surroundings. आपके आसपास जो भी हो रहा हो, आंखें बंद करे उसके प्रति थोड़ा सजग हो जाए. जैसे आपके सराउंडिंग्स में कोई आवाज़ें हो रही होंगी. There might be some noises from the surroundings or from the headphone. Just listen to those noises with a light mind. धीरे से उन आवाज़ों को सुनते जाएं. कोई ट्रैफिक का आवाज़ हो सकता है, कोई बात करने का आवाज़ हो सकता है, एसी या फैन का आवाज़ हो सकता है. Just listen very light-mindedly to all those noises. And accept all those noises. Let it be there. Just let these noises be there. Now you are one with the environment. Take a deep breath in. एक सामान्य गहरी सांस लें. And breathe out slowly. धीरे धीरे सांस छोड़ दें. And become aware of your body. अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं. Take your attention to your feet. मन ही मन आंखें बंद ही रखते रखते अपने पैरों पर ध्यान ले जाएं. On your knees, घुटनों पर, on your thighs and hips, जंघाओं पर, कूलों पर. Stomach, chest, shoulders and hands, neck and throat, back of the head, top of the head, and face. Just become aware of your whole body. पूरे शरीर के प्रति सजग हो जाएं. This body is a beautiful gift from Mother Nature, from God. Love it and honor it. इसको प्रेम करें, इसका सम्मान करें.
It's a beautiful tool in your hands. Take another deep breath in. एक सामान्य गहरी सांस ले. And breathe out slowly. और धीरे धीरे छोड़ दे. And become aware of your mind. Become aware of your thoughts. मन में जो भी विचार आ रहे हो उनके प्रति सजग हो जाएं. कोई विचार अच्छा है या बुरा है, let it be. Just be aware. Do not resist any thought, whether good, whether bad, or neutral. Just observe it. Thoughts may be of future or past. Just observe. Take another deep breath in. एक और गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ दें. Breathe out slowly and become aware of your feelings. What you are feeling right now. अपनी भावनाओं के प्रति सजग हो जाएं. कैसी भी हो, वो सुखद हो, असुखद हो, pleasant feelings or unpleasant, just be aware. Let it be. Just become aware. बस उन्हें देखते जाएं. Take another deep breath in. एक और सामान्य गहरी सांस लें and breathe out slowly और धीरे धीरे छोड़ दें. And observe that you are peace, you are bliss. आप शांति हैं, आप आनंद हैं. इसको देखते जाएं. Take another deep breath in. एक और गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ दें. Again, become aware of your feelings, if any. कोई भावनाएं हो तो उनके प्रति सजग हो जाएं. कोई विचार हो तो उनके प्रति सजग हो जाएं. Become aware of your body and surroundings. अपने शरीर और आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं. And take a normal deep breath with the smile. मुस्कुराते हुए एक सामान्य गहरी सांस ले और मुस्कुराते हुए छोड़ दें. Don't be a miser. इतना कंजूस ना बने. थोड़ा सा मुस्कुराहट बढ़ा सकते हैं. With the increased smile, take another deep breath in and breathe out with the bigger smile. और इसी बड़ी मुस्कुराहट के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोल सकते हैं. And with this smile,
Slowly and gradually, whenever you feel like, you may open your eyes. बहुत आनंद आया। तो कहते बहुत हैं बहुत कि धन्यवाद। ये छोटे छोटे पलों का जो ये जैसे आपने जो करवाया अभी, कहते हैं घंटों घंटों की नींद पूरी करवा सकते So that is what I suggest. I suggest that you must do these things more often, because talking is different. तो टॉक करना ठीक है अपने आप में, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली कुछ करेंगे देन आई थिंक देयर विल बी सम चेंजेस। सो जैसे आप पीस के ऊपर घंटों तक भाषण दे सकते हैं, हैं। बट पीस यू कैन एक्सपीरियंस ओनली बाय silence. When you go into deep into yourself, you can experience. So meditation में मैं आपको, because these things you can do by yourself. I was planning another pranayam, but चूंकि लेट हो रहा है इसलिए हम नहीं कर रहे हैं उसको. But we can do in some other session जब भी हम करेंगे तो. We even have desktop yoga. That yoga you can do in the office. So in some other program we can do that. But for meditation, I would like to say something that please understand that it is not concentration. Most of the people, even people teaching meditation, sometimes say concentrate. But concentration is a little lower at the level when we talk about the Patanjali Yoga Sutras. So Patanjali Yoga Sutra में धारणा जो है, that is almost similar to concentration. So धारणा के ऊपर ध्यान है, फिर समाधि. So never concentrate. क्योंकि मेडिटेशन क्या होना चाहिए, which relaxes you. Concentration does not relax you. It makes you restless. So deconcentration, let the mind go. Just sit with your eyes closed for 10 minutes, 15 minutes and let the mind go. हमने 5 मिनट कहा था, लेकिन आपको बताऊंगा मैं 10-12 मिनट हो गया, but still we can do it. And these are the some golden keys. So what meditation we did is called Panchkosha meditation. It's like 5 sheets on ourselves. First sheath is our body, that is Annamaya Kosh, which is made up of grains, foods, etc. Then there is Pranamaya Kosh. So there is something subtler than the body, that is Prana. Prana is related to breath, but it is different than breath. There are 5 major pranas, 5 up pranas. Then there is Manomaya Kosh, means this body of your mind, means your thoughts, your ideas, and all those. That is Manomaya Kosh. Then there is Vijnanamaya Kosh. Vijnanamaya Kosh is the intellect, where your intellect resides. That is Vijnanamaya Kosh. And last is Anandamaya Kosh. So we need to pierce these sheets. These are the sheets. And these sheets, you will be surprised to know, they become more effective with the stress. For example, somebody in the stress, they reside in Manomaya Kosh mostly. They even don't remember their body. People harm their own bodies. So it's very much related to stress. It's a whole science that we can discuss for years and years, but I think that's all from my side. Thank you everyone for giving me this opportunity. I just pray stay healthy, stay happy, the whole world and you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thanks, Dr. Avdhesh, for your wonderful talk today. You spoke about stress, causes of stress, prolonged stresses, stress coping mechanism, pathophysiology of the stress, how to handle stress, then Sudarshan Kriya Yoga, the most important. Its benefits for harmony in life, immune system, deep sleep, well-being, stress and depression management, and also other health benefits as well. And you also spoke about the rhythm of breath and state of mind, the Panchakosha meditation, etc. But the best part of it was, sir, the real-time exercising deep breathing. That was just wonderful. That took us away from this, horizon, and took to somewhere, some deep within and divine space. Sir. Thank you so much for your wonderful session. So from my side, I would just suggest that whenever you have time, if people have time, anybody who is attending, just attend some articling program. Avdhesh has done, many others have done. I have done. One information, sir, I want to share it. Yes. Just before, you just started your session, I went to Dr. Gupta's room. He's just sitting in the next room. Yes. He suggested that the subject that we have covered today, they are so prominent, so important in even day-to-day lives. And this small webinar, see, our program was supposed to be done, to be covered in 2 hours.
or Yes, yes. 2 hours and 30 minutes. Now it is more than 4 hours, sir. So what Yes. sir is Five, suggesting, sir, five. 5 hours. So what sir is suggesting, then we can carry on with such programs to be converted into FDPs. A 5 Yes, days, 5-day program we will organize, sir, in future, and on one particular aspect, one full day can be devoted, kind of a thing. So we will do that. Sure, sure, sure. So my sincere thanks to all the esteemed speakers for their well-articulated presentation today on various important aspects of mental well-being during the time of COVID-19. Now, due to paucity of time, I will request Avdhesh to take 2-3 questions with esteemed speakers, and thereafter we will sum up today's program. Avdhesh. Sure, sir. Sure. Yeah, yeah. Thank you, sir. And वैसे एक बात कहना पड़ेगी क्वेश्चन लेने से पहले कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और अगर 1/4 देखें तो 6 बनते हैं और हमारे पास 5 घंटे और 6 मिनट हो गए हैं। और स्ट्रेस जो मैनेजमेंट का एक है ना कि हम बोर नहीं हुए, इसमें सभी लोग जुड़े रहे और इन्होंने मेडिटेट किया। मैं देख रहा बहुत सारे पार्टिसिपेंट वीडियो ओपन किए हुए थे उस टाइम पे। नहीं, बिल्कुल, और प्लस पार्टिसिपेंट्स की संख्या सर बहुत ज्यादा कम नहीं हुई है। हाँ, और तो हमें इन्हें भी थैंक्स कहना चाहिए। मतलब मैं पार्टिसिपेंट का व्यक्तिगत रूप से इसलिए थैंक्स कहना चाहता हूँ कि कई तो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं और लेकिन आज जो जुड़े हैं तो उनको इसलिए थैंक्स बनता है कि ना सिर्फ पार्टिसिपेट किया बल्कि उन्होंने वीडियो ऑन करके योगा किया। और मुझे लगता है बोलने की बातें काफ़ी सारी होती हैं, लेकिन जो आज करने की इस वेबिनार में हुई है एक बड़ी यूनिक थिंग थी मेरे लिए भी, एज ए ऑर्गेनाइजर भी, एज ए प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मेरे लिए बड़ी यूनिक बात थी आज ये। मेरे लिए भी ये प्रथम अनुभव रहा सर ये सर। और अपने दिन का सब मतलब जिंदगी का सबसे जो कहते हैं ना कि मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है, पैसा भी नहीं होता इतना इम्पोर्टेंट, आप पैसा दे सकते हो ले भी सकते हो, लेकिन जो समय आप लोगों ने हमें दे दिया वो शायद कभी रिटर्न तो कभी होता नहीं है, समय उल्टा नहीं चलता है, तो वो मिल गया हमको, ये बहुत अच्छी बात है। और 1/4 डे आपने हमें दे दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी इसी के साथ में क्वेश्चंस लेता हूं मैं कुछ। तो हमारे पास एक क्वेश्चन हमारे संजय सर के लिए आया हुआ है, तो जिसको मैं पढ़ना चाहूँगा सर। पार्टिसिपेंट आस्क क्वेश्चन दैट काइंडली डिफरेंशिएट बिटवीन नेगेटिव एटीट्यूड्स एंड सिकन एटीट्यूड with example if possible, please. Negative attitude, very simply, when you don't like something, suppose I don't like a person, okay, it's over, that is negative attitude. But I don't like, and when somebody likes, I try to make him also negative, that you also don't like him. मतलब मैं तो पसंद नहीं करता हूँ पर दूसरों को भी उसको पसंद नहीं करने दो। मतलब अगर मुझे कुछ खाने को नहीं मिला और किसी दूसरे को मिल रहा तो मैं उसको बोलूँ यार ये तो बेकार है, ऐसा होना नहीं चाहिए, बेकार बकवास बनाता है, ऐसा करता है वैसा करता है। मतलब हमने अपनी तो जिंदगी बर्बाद करी थी और दूसरों को ही बर्बाद करने के तैयार रहते हैं। That's why it was so much dangerous. As I told you, it is too dangerous more than the first one, that is negative. Negative ठीक है, वो हमारे तक सीमित रहता है, पर सेकंड जो है ना वो दूसरों को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, पर इसलिए हमें उससे बचना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि जो हर सेकंड एटीट्यूड है, हाँ, वो नेगेटिव तो है ही, नेगेटिव तो है ही है, लेकिन हर आगे चढ़ के हर नेगेटिव एटीट्यूड सेकंड नहीं होगा। बिल्कुल, थैंक यू सर। हर नेगेटिव सेकंड नहीं होगा, लेकिन जैसे वो दूसरों के पहुंचाना शुरू कर देता है ना, क्या जैसे आपने कहा ना कि ये बहुत अच्छा वेबिनार है, मैं भी इसका पार्ट हूँ, मैं कहूँ अरे ठीक है यार होता रहता है, फिर अरे ये तो ठीक है यार लोग ऐसा होता रहा वेबिनार, मतलब ये क्या हो गया, हमें पसंद आया नहीं आया बात, मुझे पसंद नहीं आया, मुझे नहीं पसंद आया, लेकिन अरे ये तो हमेशा ऐसे करते रहते हैं, ये मतलब उसकी एक ऐसी इमेज बनाना शुरू करूँ कि दैट will become very much negative to others also. You are coming here with positive attitude, but positive thinking, and I am making it negative. I am negative and I am making you also negative. Means I am not okay and you are also not okay. Right, sir. This is the way. Thank you, sir. Second question हमारे प्रोफेसर अनिल सर के लिए है, और प्रोफेसर अनिल सर से पूछा है, सर you showed 8 right ways of life. How to make a balance between them? The मध्यम मार्ग. गुप्ता सर, गुप्ता सर, अनिल सर, अवधेश जी मैं उन्हें जाके देखता हूँ, आप काइंडली okay, I am taking a second. अवधेश जी से क्वेश्चन, I am taking another question. On physiology level, I can tell. This, on physiology, this balancing is balancing of hormones. This state is called homeostasis. This state is called homeostasis.
and it is disturbed by stress. So homeostasis means when all the hormones are secreting in the amount they are needed. So that is on physiology level. हाँ सर, एक ये क्वेश्चन है, जैसे मेरे लिए ही आया, ये तो मेरे लिए ही लग रहा है। अवधेश जी, अभी डिफाइन नहीं हो पा रहा किसके लिए। अच्छा, टेक्नोलॉजी है तो मेरे लिए, ठीक है ठीक है ठीक है। Technology driven stress are taking a huge toll on our mental balance during COVID-19 new normals. Tech use for education has become must. How to save kids from excess use of mobile and gadgets during this time? देखिए, ये क्वेश्चन जो है इसमें पूछा ये गया है बेसिकली कि जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन एरा चल रहा है, इसके अंदर कैसे हम किड्स को रोक सकते हैं एक्सेस मोबाइल एंड गैजेट्स का यूज़ करने से। तो मुझे लगता है कि किसी को, एक महात्मा गांधी की कहानी मुझे याद आती है कि उनके पास जब एक महिला एक बच्चे को लेके गई तो उन्होंने कहा कि ये चीनी बहुत खाती है, तो महात्मा गांधी ने कहा कि हाँ गुड़ बहुत खाता है, तो उसने कहा कि ऐसा है, इसको एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद मेरे पास लेके आना। तो वो ठीक है, उन्होंने कहा हो सकता है कुछ उपाय सोच रहे हो महात्मा जी। तो बाद में वो एक महीने बाद आती है लेडीज़, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम चीनी मत खाया करो बेटा। वो बच्चा समझ गया, तो बोले अगर आपको यही कहना था तो आप उस दिन भी कह सकते थे। तो बात यह है कि उन्होंने कहा कि उस दिन बात दरअसल ये थी कि मैं खुद चीनी खा रहा था, कि मैं खुद गुड़ खा रहा था, तो मैं उसे मना कहाँ से करता। तो यही मुझे लगता है, अगर किड्स को, बच्चों को अगर हमें रोकना है तो हमें अपने को भी रोकना पड़ेगा। अगर आप बैठे कहीं पर सोफे पर या फिर कहीं पर खड़े होकर मोबाइल चलाएंगे तो बच्चा वही देखेगा कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसका क्यूरियोसिटी जागना स्वाभाविक है और वो उसको चलाना चाहेगा, मांगना चाहेगा। और अभी तो बच्चे बड़े ट्रेंड हो रहे हैं, मैंने देखा कि बच्चे छोटे छोटे होते हैं वो मोबाइल ऑपरेट कर लेते हैं, स्मार्टफोन टच बेस्ड है बिकॉज। तो ये चीज़ है, बट दे डोंट नो अबाउट द रेडिएशन दैट आर इमिटिंग फ्रॉम दिस डिवाइसेस. They don't know about what the content, even I am not only discussing about the children who are 5 to 6 years. I am also discussing the issues of the teenagers. Teenagers are also very addicted to these devices or video games. PUBG, the PUBG, and there is another game that was very much famous, and people did suicide for that game. So how these games are affecting the population, specifically the younger ones, it is a matter of worry, and we have to set the example before teaching anyone. इसका एग्जांपल मैं दूं क्या सर? एक छोटा सा एग्जांपल मेरे पास, if you don't mind. Oh sure, why man sir? It's an honor to hear such a experience. सर नहीं सर, जैसे घर पे क्या होता है ना, हम लोग बड़े भी क्या करते हैं, फ्रिज खोला, पानी निकाला, बोतल निकाला और पी लिया। बॉटल से ही पानी पीना शुरू कर देते हैं कि आप पीते ही हैं। पर हम बच्चों को क्या बोलते हैं, ग्लास में लो। जब तक हम नहीं छोड़ेंगे तो बच्चा कैसे छोड़ेगा? अगर मैं बॉटल में पीऊंगा तो मैं उसको कैसे बोलूँगा आप ग्लास में लो? तो एक मुझे तो छोड़ना पड़ेगा, तभी मुझे दिखाना पड़ेगा कि हाँ ग्लास में लेके मैं पी रहा हूँ, तभी वो पीना शुरू करेगा। I hope so. I would like to add one thing. That people don't listen to dictates. Yeah. Second, they have a lot of energy. They cannot sit idle. बिल्कुल आप 2 घंटे सोफे पे पड़े रह सकते हैं बिना मोबाइल देखे, but they cannot be still. So you will have to give them some alternatives. Channelize करना पड़ेगा, energy channelize करना पड़ेगा. Some alternatives. Okay, now Professor Gupta sir is with us, and now I am again asking the question that is asked by the participant. Professor Anil sir. Hello. Anil sir. Hello. Yes, I am listening. Okay, sir. Sir, here is a question. One participant asked that, sir, you showed 8 right ways of life. How to make a balance between them, the Madhyam mark? See, today I think we had 5 the important discussions from 5 speakers, and all of them referred to, even though they did not all did not use the word Madhyam marg, but I think that is the real mantra, not only now but from the time ancient times also. And as I began my discussion, that today we can say that we are the best stage of technology, but on the other hand our miseries and sufferings are also increasing.
सो दैट मेक्स ए क्वेश्चन कि गड़बड़ क्या है, कहीं ना कहीं कोई नट बोल्ट कुछ गड़बड़ होगा ना, जो फाइन ट्यूनिंग है वो कुछ गड़बड़ है। एंड वो फाइन ट्यूनिंग करने के लिए बेसिकली यू हैव टू अडॉप्ट एन अप्रोच वेयर यू बैलेंस योर सोशल एंड मेंटल लाइफ एंड ऑन द अदर हैंड यू बैलेंस योर प्रोडक्टिविटी। अगर आप हाई प्रोडक्टिविटी में इतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी चाहेंगे, दैट अफेक्ट्स योर सोशल लाइफ, योर पर्सनल वेलबींग, your human well-being, your relations with nature, then maybe for some time your productivity will increase. जैसे मैं सिंपल एग्जांपल लूं, या आप सोचें कि मैं 14 घंटे 18 घंटे काम करूंगा जी, सोऊंगा कम। एक दिन आप काम कर लेंगे, शायद दूसरे दिन आपको स्ट्रेस नहीं होगा। अगर सेकेंड डे भी उतना करते हैं तो थोड़ा स्ट्रेस होगा। 4, 5, 6 दिन करेंगे, ठीक है। सो बट this is not a sustainable approach. This can be done only once a while. जो हमने बात किया था कि ग्राफ खींचते हैं तो उसमें कुछ पॉइंट्स ऊपर होते हैं, कुछ पॉइंट्स नीचे होते हैं, लेकिन ट्रेंड आपका कैसा है, ग्रोथ वाला है या नहीं है, तो उस चीज को देखना है कि आपकी खुद की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। नंबर 2, मध्यम मार्ग इज एन अप्रोच विच वी कैन ओनली टेल दैट द मध्यम मार्ग कैन हेल्प अस, बट जो सिस्टम है उसको खुद इवॉल्व करना पड़ेगा कि व्हाट इज द मध्यम मार्ग फॉर दैट पर्सन, है ना। बिकॉज द मध्यम मार्ग मे नॉट बी द सेम थिंग एवरीवेयर. मध्यम मार्ग मे बी फॉर मी, मे बी लिटिल डिफरेंट फॉर मध्यम मार्ग फॉर यू, because it will depend on first thing your personal aspiration, second thing is social aspiration. ठीक है, सोशल. अब इसको अगर मैं टेक्निकल डायरेक्शन में बात करूं, टेक्निकल डायमेंशन में, तो मैंने पिछले लेक्चर में भी एक बार बात करी थी कि हमारा एक नेशनल एस्पिरेशन है कि हम सबको सफिशिएंट ड्रिंकिंग वाटर और बेदिंग वाटर, डोमेस्टिक वाटर मुहैया कराएं. बहुत जरूरी है. स्वच्छ भारत अभियान है, सबको पानी चाहिए जी. और पर कैपिटा जो वाटर सप्लाई है दैट शुड इंक्रीज, सबके पास पाइप्ड वाटर सप्लाई आ जाए. और दूसरी तरफ हमारे जो ग्राउंड वाटर बोर्ड वाले हैं वो अपने मैप में ज्यादा जगह लाल 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 दिखाते जाते हैं कि साहब यहाँ भी रेड हो गया, यहाँ भी रेड हो गया, यहाँ भी रेड हो गया, पानी है ही नहीं है, ग्राउंड वाटर इज गोइंग इन क्रिटिकल जोन. ऊपर से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले कह रहे हैं अरे साहब ये जो हाँ पानी दिखा रहे हैं वो भी पोल्यूटेड है. सो आपको क्या करना पड़ेगा, आप आज की डेट में ऐसा भी नहीं कर सकते कि सारा पानी कह नहीं हम पूरे जगह को सप्लाई कर देंगे और जितना पानी चाहिए उतना कर देंगे, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. बट दूसरी तरफ ये बोले कि नहीं हम आज से वाटर का डेवलपमेंट बंद कर देंगे, हम ग्राउंड वाटर से एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल बंद कर देंगे, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. सो व्हाट यू विल डू, यू विल कम आउट विद सम काइंड ऑफ ए वाटर रैशनिंग या वाटर प्राइसिंग एंड वाटर ऑप्टिमाइजिंग. तो वो जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है हम उसमें बात करते हैं कि आप जितना वाटर यूज करें उसको मैक्सिमम रिसाइकल करें, ईच एंड एवरी वाटर ड्रॉप ऑफ वाटर को कंजर्व करें. हम ड्रिप इरिगेशन की बात करें, हम पानी को कम यूज करें और जितना यूज करें उसको रीयूज करें, रिसाइकल करें, कोई भी वेस्ट न जाने करें. तो ये मैंने टेक्निकल डायमेंशन में बात करी, वही शायद अपनी लाइफ में भी लानी होगी कि एक बैलेंस कैसे करना है. और वो जो मिडिल पाथ है, जैसे वो ग्राफ खींचते हैं, तो मैंने बोला कि वो ग्राफ खींचते हैं तो कुछ पॉइंट ऊपर होते हैं, कुछ पॉइंट नीचे होते हैं. तो नीचे वाले पॉइंट को अगर ले लें हम कि डिप्रेशन के पॉइंट हैं, और ऊपर वाले पॉइंट अगर हम ले लें तो उसको आहा पॉइंट जैसे कहते हैं ना, कहते हैं वाह मजा आ गया, है ना, या वो सफेद रसगुल्ले 2 खाए आत्मा तृप्त हो गई. तो वो दोनों मूवमेंट्स लाइफ में देखिए, एक नीचे वाले पॉइंट इनएविटेबल है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप डिप्रेस नहीं होंगे, है ना. लाइफ है, लाइफ बहुत बार बहुत चीजों से डिप्रेस होती है. कई बार आपकी शर्ट बहुत अच्छी है, आप खुश होते हैं, लेकिन बगल वाले की शर्ट आपसे ज्यादा अच्छी है, आप डिप्रेस हो जाते हैं साहब. ठीक है, उसकी शर्ट मेरे शर्ट से सफेद कैसी है, एक आता है ना वो. तो डिप्रेशन के कई रीजंस हो सकते हैं. तो लाइफ में डिप्रेशन आएगा, इनएविटेबल है, शॉक्स आएंगे, इनएविटेबल है. लेकिन वो आहा पॉइंट्स जो है जिसमें आप कहते हैं कि हम अरे मेरे पास जितनी एनर्जी मेरी गई थी मैं तो डबल उससे, साहब क्या बात बताइए, आज दिल बाग बाग हो गया. तो वो जो दिल बाग बाग वाले होने वाले इंसिडेंसेस अगर वो बढ़ेंगे तो आपका जो ग्राफ है, जो कर्व ऐसे है ना, वो कर्व थोड़ा ऊपर की तरफ हो जाएगा, लॉग फेज में चला जाएगा. और बेसिकली ग्रोथ के लिए हम यही चाहते हैं कि वो हैप्पीनेस कर्व है वो ग्रोथ की तरफ बढ़े, वो लॉग में रहे, लैग में नहीं जाए. दैट इज इंपॉर्टेंट. तो नीचे वाले पॉइंट कम होने चाहिए, ऊपर वाले पॉइंट ज्यादा होने चाहिए. दैट इज इंपॉर्टेंट. और वो जो लाइन खींचेंगे बेसिकली वो मध्यम मार्ग है.
तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि मिजरीज हमारी खत्म हो जाए। भगवान राम को भी कष्ट उठाने पड़े थे, भगवान बुद्ध को भी उठाने पड़े थे, ईसा को भी उठाने पड़े थे, और पैगंबर को भी उठाने पड़े थे। कष्ट तो अगर आप कुछ बड़ा काम करते हैं तो उठाने तो पड़ेंगे ही, है ना। लेकिन उसके बाद वो जो उनके आहा पॉइंट्स थे, जहां पे उन्होंने वर्ल्ड को ऐसी चीजें दी, दुनिया को, सोसाइटी को ऐसी चीजें दी कि उनका कर्व ऊपर चला गया, है ना। तो अब हम उनकी सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें दिखती है दुनिया में। तो बेसिकली वो मॉडल हमको अपने हिसाब से नया, हर एक को अपना मॉडल सोचना पड़ेगा कि मुझे कैसे करना है ना। तो बेसिकली दैट इज मध्यम मार्ग जो महात्मा। और दूसरी बात ये भी बोलूं कि मैं पूरा बुद्ध जी का फिलॉसफी बता पाऊं, इतनी सामर्थ्य तो शायद मुझ में भी नहीं होगी, क्योंकि वो तो भगवान थे, तो नेचुरली। बट हम सबको रिसर्च करना पड़ेगा, हम सबको सोचना पड़ेगा कि जो हमारे बड़े लोगों ने, जो हमारे फिलोसफर्स ने बताया है, उस नॉलेज को हम टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करें। सिर्फ टेक्नोलॉजी की रेस नहीं होनी चाहिए, है ना। तो मैं अभी क्वेश्चंस को सुन रहा था, अभी मोबाइल वाली बात भी हो रही थी, है ना। तो अभी बीच में कुछ लोग जोक भी कर रहे थे कि जिस मोबाइल को धक्का देके स्कूलों से बाहर निकाला था, अब सारे स्कूल उसी मोबाइल पे चल रहे हैं। तो लेकिन हमें देखना है कि ज्यादा दिन तक चलेगा, नहीं चलेगा, व्हाट इज द अल्टरनेटिव अप्रोच, है ना। जैसे वो काइंडल आता है कि जिसमें आप ऐसे स्क्रीन हो कि भाई पढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो। तो क्या तरीके निकल सकते हैं। टेक्नोलॉजी को भी इनोवेशंस लाना होगा, बट ह्यूमन बिहेवियर भी चेंज करना पड़ेगा। अभी एजुकेशन पॉलिसी की भी चर्चा हुई थी। एक्चुअली मैं कल से ढूंढ रहा था कि एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या चीजें आया है, उसमें अध्ययन करने की जरूरत है, देखना है, क्योंकि बहुत जरूरत हिंदुस्तान की एजुकेशन में लोड को कम करने की थी। वो हुआ है नहीं हुआ है वो देखने की जरूरत है कि हमने अपने बच्चों की कमर तोड़ डाली है और हम सब कुछ पढ़ाने पे लगे रहते हैं। साहब सब पढ़ा दो इसे, पता नहीं मतलब उसको हम कुछ नहीं करें, सारा वो स्कूल का बच्चा ही कर देगा, पूरा सोसाइटी चेंज, है ना। कहते हैं कि भाई आपदाएं ज्यादा बढ़ रही हैं, इट शुड बी टॉट इन द स्कूल्स। फिर कहते हैं जेंडर इशू, इट शुड बी टॉट इन द स्कूल्स। फिर कहते हैं हाथ साफ करना, इट शुड बी टॉट इन द स्कूल। अरे हम कुछ सीखेंगे या सब टॉट इन द स्कूल ही करते रहेंगे। तो वो जरूरी है कि बच्चे को, अगर कोई बच्चा तय करता है कि भाई मेरे पिताजी की दुकान है, मेरे पिताजी का जैन की दुकान है उनकी, और मैंने तो जैन की दुकान में ही बैठना है बाद में, तो हम क्यों से पूरी दुनिया भर का इतिहास, ज्योग्राफी, ये वो दुनिया भर का पढ़ा रहे हैं। उसे तो बेसिक अकाउंटेंसी आनी चाहिए, थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल आना चाहिए। आप सब सहमत है इस बात से। तो क्यों हम उसे इतना सब करा रहे हैं। अगर किसी के फादर का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है बहुत बड़ा, हम उसे पढ़ा रहे हैं बाबर अकबर से लेकर के दुनिया भर का, काहे के लिए इतना सब जबरदस्ती उसको ठोस रहे हैं। उसे तो जो कर, तो हम अगर एजुकेशन का लोड कम करने वाली बात भी होनी चाहिए, तो उसी तरीके से मध्यम मार्ग को ये सोचना है कि हम स्ट्रेस को कैसे कम करें और प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा लें। बिल्कुल, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होगी। पेड़ को कितना भी पानी डालें, उसकी ग्रोथ अनलिमिटेड नहीं हो जाएगी। एक पेड़ की ग्रोथ की एक लिमिट होती है। आदमी को कितना अच्छा खाना दे दो, 6.5 फीट 7 फीट, इससे ज्यादा लंबा नहीं होगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आशीष सर। हाँ जी, तो प्रोग्राम के एंड की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इट वाज रियली प्रिविलेज एंड ऑनर टू होल्ड such a wonderful knowledge sharing webinar for such an important aspect of stress management and mental well-being during COVID-19. I sincerely thank our honorable patrons, esteemed speakers, distinguished participants for taking time out of their busy schedules to participate in today's program and make this webinar successful. Now we are coming to the end of this webinar, and I invite Honorable VC Sir for his concluding remarks for today's program. VC Sir. Thank you, Panda ji. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, great. sir. Very good. Actually, I joined last, minutes of Dr. Avadhesh's lecture. I know he is a very seasoned speaker, and he takes classes for Chinmay Mission or something like that. And really, basically, this is not a webinar. This becomes a workshop, because he was asking you do this way, do that way. Actually, even nowadays, it is advised that while you are in office, you do it in between your job, because you have to relax your body. It is very important. Actually, I take very simple steps, and not like that, but otherwise also that I always take my shoes off, and I keep chappals in in my lower drawer, because it appears when I'm with socks and shoes, is I'm, what great duty. If I am not, nobody seeing my shoes, why should I unnecessarily have a stress of those? And now it has become a habit. By the way, I am wearing shoes for last half an hour. I am feeling, when should I get it off? So that way, actually, you can always make things which put you in relax. You should not unnecessary
really take something and unnecessary have stress of that, because these small things create stress. When you're sitting in a flight for 3 hours, so it's good that after 1 hour you move. Sometimes we go in the aisle and air hostess just watches. Sir, do you want to go to toilet? I don't want to go to. I just want to put around, right? So you can always develop weight. What puts you relaxed? The problem is if you don't think, बैठ गए तो बैठ गए, भाई क्यों बैठ गए, आप खड़े हो जाइए। तो मेरे ख्याल में ये जो एक्सरसाइजेज है, जैसे अवधेश जी ने बताया होगा और लोगों ने, ये हमको बिल्कुल एक 2 घंटे पे करते रहना चाहिए, राइट? कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, कुछ हाथ पैर चलाने वाली हैं। मैं तो आई अटेंडेड ए कॉन्फ्रेंस इन 92 इन न्यू ऑर्लियंस अमेरिका। तो की नोट स्पीकर साहब आए, काफी वो बेचारे लेट हो गए, संभव वहां लोग लेट तो नहीं होते, और आते ही उन्होंने जो हमारा पीटी कराई 10 मिनट उसने पीटी करा दी बड़े हॉल में। मैं कहता हूँ लोगों को जरूरत ही नहीं रही कि इन्हें कुछ बोलना भी है क्या, बड़े खुश हो गए सब। काफी देर से नाश्ता वास्ता करके बैठे थे, शांत से परेशान थे, 10 मिनट उसने खड़े हो जाइए, बैठ जाइए, हाथ ऐसे करिए वैसे करिए, इतना अच्छा लगा। इट वर्क लाइक दैट ओनली। फिर उन्होंने क्या की नोट बोला वो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है कि उन्होंने 10 मिनट में हमको बिल्कुल खुश कर दिया, राइट? तो इस तरह के आप ही को डेवलप करने होंगे। तो मेरे ख्याल में दिस इज पॉजिटिव एटीट्यूड। देखिए कोई नेगेटिव पॉजिटिव कोई दुनिया में चीज होती नहीं है। आप अपने हिसाब से जिस एनवायरनमेंट को कंजीनियल बना लें, आप उसको खुशगवार बना लें, वही है। मैं कह रहा हूँ जैसे जाम लग जाता है, अब तो थोड़ा जैसे दिल्ली वाला रोड बहुत अच्छा हो गया, लेकिन मैंने तो इस पूरे रोड को बनते हुए देखा है। ये रोड बना है आपका जो आई डोंट नो कितने लोगों को बरेली टू दिल्ली रोड का एक्सपीरियंस है, आपको पंडा जी है कि नहीं आई डोंट नो। ये डेवलप हुआ, बनते समय हमारे यहाँ रोड भी चलती है और काम भी होता है। जितनी तो मैंने ऐसा अच्छा किताबें ले जाते, जाम लग गया ठीक है, आराम से किताब पढ़ने लगे, वरना क्या होता है जाम लगा नहीं, आप सोचने लगते हैं ये गवर्नमेंट बहुत बेकार है, इस कंट्री में कुछ नहीं हो सकता, हमको ये कंट्री छोड़ देना चाहिए, यहाँ जॉब करने का कोई मतलब नहीं। अरे भाई कहीं मैं कहता हूँ यूएस में ऐसा होता है, एक भी एक्सीडेंट हो जाए तो रोड डाइवर्ट कर देते हैं, उसमें 1 घंटे का रास्ता बढ़ जाता है आपका, वो भी तो प्रॉब्लम ही है। लेकिन ये वो प्रॉब्लम थोड़ा उन्होंने दूसरे तरह से बना लिए। हमारे यहाँ बिल्कुल पुलिस वाले के बताएगा और नहीं, सुनिए सुना नहीं आपने, खड़े हो जाइए, हमारे ये और प्रॉब्लम है। वो ये भी नहीं बताएगा कब खुलेगी, वो कहेगा गाड़ी इधर तो लगाइए आप, वो आप जब आप कहेंगे कब खुलेगी तो चला जाएगा वो, ही विल नॉट टॉक टू यू। लेकिन आपको क्या, क्योंकि आप जानते हो आप इंडिया में हो, ऐसी सिचुएशन आ सकती है, तो उसके लिए बढ़िया सी किताब ले जाइए और बड़े खुश होइए कि अभी कार हिल नहीं रही है, कोई ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, तसल्ली से पढ़ूंगा इसको वो। और मैं तो कई बार सर आप ताज्जुब करेंगे कि मैं तो जब मेरी पढ़ाई होती थी, खासकर मुझे एमटेक का ध्यान है, मैं हमेशा अपनी टेक्स्ट बुक लेके चलता था, क्योंकि मैंने कहा नोवेल पढ़ने से टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा। और एक आध बार तो मैं क्वेश्चन निकालता था, लोग देखिए तब उस समय स्लीपर में ही जाते थे, वो एसी वैसी वैसे होते भी नहीं थे और हमारी इतनी औकात भी नहीं थी, तो वो लोग बड़े भीड़ है और मैं सवाल निकाल रहा हूँ तो बड़ा ताज्जुब करते थे कि सर सवाल में क्यों ना निकालूं इसमें प्रॉब्लम क्या है, ट्रेन में तो बहुत ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती है। तो मैं उस टाइम को यूज कर लेता था, उस समय में क्वेश्चन कर लेता था, असाइनमेंट कर लेता था, और बाकी लोग देखते थे भाई कमाल है ये ट्रेन में ऐसा कर रहा है। तो मतलब एक एटीट्यूड बनाइए, तो वो भीड़ में भी आप कर, और फिर और लोग आपको कोऑपरेट करते हैं और इम्प्रेस तो नेसेसरी हो ही जाते हैं आपसे कि बड़ा कायदे का आदमी है कि वो नहीं कर पाते ये कर रहा है, राइट? तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि हर जगह यू कैन टेक एडवांटेज, बस ये थोड़ा सा आप दुखी ना हो, मतलब अपने को ये ना समझे कि बड़ा गजब हो गया आपका, नहीं नहीं बहुत अच्छा है, एंड यू कैन मेक इट स्टिल बेटर, राइट? अब जैसे कुछ लोग कहते हैं, अवधेश जी जानते हैं मैं ज्यादा मतलब भगवान जी के चक्कर में नहीं रहता हूँ, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान ने जो कुछ अच्छा किया, तो मेरा ये मॉडिफाइड वर्जन है, भगवान ने किसी ने मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जो भी है मैं इसको अच्छा बना लूंगा, मेरा ये कहना है। मैं नहीं कहता भगवान जी ने, भाई भगवान मानो किसी को मार दिया, मैं तो आपके फादर को मार दिया, भगवान जी ने अच्छा किया, तो वो भी नाराज हो जाएगा और बात भी सही नहीं है। पर मैं तो ये कहूंगा देखिए अभी जो भी हो गया, बट स्टिल दुनिया खत्म नहीं होगी, अभी भी आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। तो मुझे इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आपके भगवान ने कर दिया, लेकिन इतना तो कह ही सकते हो कि जो भी मेरे साथ सिचुएशन हुई है मैं इसको अच्छा बनाऊंगा, और मैं इसे चैलेंज करके लेता हूँ, और बनेगा कैसे नहीं। मैं तो कहता हूँ जो भी पावर, मैं तो उसे चैलेंज करता हूँ कि तुम करके दिखा दो, अच्छा तुम मुझे बोर करके दिखा दो, आप ऐसा इसका मजा लेके देखिए आप। मैं तो कहता हूँ बल्कि कई बार जब आपको सहारा लगता है तो आप डिपेंड करते हैं, आप बिल्कुल सहारा छोड़ दीजिए कि ये लेट मी सी, देखे क्या करते हो, तो आपको बड़ी हिम्मत आती। मुझे तो आती है भाई, मुझे मैं नहीं कहता भगवान दुश्मन हो जाओ, पर मैं कह रहा हूँ आप इसे कहे क्यों, आप कहिए कि लेट मी सी व्हाट मोर यू कैन डू, तब फिर आप में ऐसी एक क्षमता आती है, एक इनर आपको शक्ति मिलती है कि आप जो है मतलब लड़ने में मजा आता है आपको। मैं कहता हूँ अपोनेंट अच्छा ना हो तो लड़ने की मजा क्या है, और यदि भगवान है तो उससे अच्छा और अपोनेंट क्या मिलेगा आपको।
आप ये कि भगवान के पीछे लगे हो कि प्लीज थोड़ा सा मेरा कुछ जुगाड़ लगा दो, इसे कहीं हाँ करिए भाई साहब, यदि मैंने गलती करिए, गलत है मैं देखता हूँ ठीक करता हूँ। तो यदि भगवान होगा तो वो भी ये कहेगा आदमी तो कुछ काम करने वाला लग रहा है, मेरा ऐसा मानना, राइट। तो ये है कि आप यदि वाकई आप में ऐसा है कि नहीं मैं हूं ना, मैं कर सकता हूँ। जी अवधेश जी 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 मैं म्यूट हो गया सर। हाँ हाँ अनम्यूट करता हूँ, एक सेकंड। हेलो श्रवण सर। हेलो, अच्छा कट गया, हेलो। हाँ सर, इट्स ऑनगोइंग सर, ऑनगोइंग। कितनी देर कट वी गया? कैन हियर यू। तो ये NIDM का हम लोगों के साथ बहुत अच्छा कोऑपरेशन चल रहा है और हम लोग तो 2 in 1 हो गए हैं और हम ये चाहते हैं कि सब लोग अपने ही लगते हैं। पंडा जी, गुप्ता जी, अब देखिए गुप्ता जी ने वो क्वेश्चन का आंसर ही कितना लंबा चौड़ा दिया, तो ये और इसका मतलब लोग सुन भी रहे हैं और हमारे जो स्पीकर है वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। दैट इज वेरी, बहुत अच्छा है ये। मैं तो यही कहता हूँ कोई भी आदमी काम करे मन से करे बस, तो वो काम अच्छा ही होना है। चाहे आप लेक्चर सुने तो मन से सुनिए, लेक्चर दें तो मन से दीजिए, सवाल का आंसर दें तो मन से करिए, तो आपको भी आनंद प्राप्त होगा और दूसरे को भी आनंद प्राप्त होगा, राइट। और मेरे ख्याल में ये काफी कुछ इस अवधेश वाले प्रोग्राम में, पंडित जी वाले प्रोग्राम में हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब अगले की तैयारी करिए भाई साहब, नेक्स्ट कब हो रहा है, हम ये सुनना चाहेंगे। अरे साहब एक चीज बताऊं आपको, आज तो हो गए। गुप्ता साहब ने आज कहा कि इतना बढ़िया सब्जेक्ट है, इतना बढ़िया 3 घंटे के प्रोग्राम को, 2.5 घंटे के प्रोग्राम को आप लोग 5 घंटे तक लेके गए हैं, आप इसको 5 दिन के FDP में कन्वर्ट करिए। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तो बहुत जल्दी हम लेके आएंगे सर जी, बहुत बहुत जरूरी है सर जी। जी, लेकिन एक 5 दिन का पर इंटरेस्ट कम नहीं होना चाहिए सर, इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 5 होना चाहिए, तब मजा है, मिलेगा सर। सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जिस तरीके का लोग, जी सर बताएं, बोले सर। इसमें कुछ प्रैक्टिकल सेशंस भी हम छोटे छोटे कर सकते हैं, योगा उससे इंटरेस्ट बढ़ता है, उससे इंटरेस्ट बढ़ता है, उससे बड़ा अच्छा हो जाएगा और बहुत अच्छा कर सकते हैं। मुझे लगता है बहुत सारे लोग इसमें लाभान्वित होंगे, ये भी बड़ी बात है। इंटरेस्टिंग रहेगा सर, मेन बात ये इंटरेस्टिंग रहेगा। जब कोई 5 दिन का अटेंड करता है तो उसको पर्सनली भी बड़ा बेनिफिट होगा, मतलब नॉलेज के अलावा भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी जी करना चाहिए। बहुत अच्छा, जी बहुत ही अच्छा सर रहा। और आज का वेबिनार तो मैंने जैसे जो देखा है लोगों का इंटरेस्ट इसके अंदर, क्योंकि खास तौर से जो सेशंस हुए हमारे, उसमें प्रैक्टिकल भी आज हम लोगों ने किए अवधेश शर्मा सर के द्वारा। और जब अनिल सर बोलते हैं तो बस ये है कि ऐसा लगता है कि एक वर्ड स्ट्राइक करता जा रहा है, जैसे टाइपराइटर नहीं है, एक कहीं पर स्ट्राइक करता है वहाँ वर्ड इम्प्रिंट हो जाता है, ऐसे करते करते पूरी स्टोरी लिख जाती है। तो ये कुछ इसी तरीके की एक हमारे लिए बहुत यूज़फुल स्टोरी आज हम लोगों को यहाँ पर एक बहुत बढ़िया शिक्षा मिली कि यहाँ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऐसा है और रियलिटीज़ जो हैं वो क्या हैं, हमारी चुनौतियाँ असल में क्या हैं, और हम हाइपोथेसिस पे तो नहीं चल रहे हैं केवल, और हम रियल लोगों के लिए योजनाएं बना रहे हैं, बट चल हाइपोथेसिस पे रहे हैं। तो ये जो सर ने आज बताया ये बहुत ही एक अच्छा हम लोगों के लिए सबक एक रहा। और अब हम कार्यक्रम को, क्योंकि अब मैं भी देख रहा हूँ, असल में मैंने भी जितने भी अभी तक ऑनलाइन सर मैं बताना चाहूँगा जो ऑर्गेनाइज किए हैं, ये 5.5 पूरा हम आज, मैं ये कहना चाहूँगी हमने एक नहीं आज 2 वेबिनार कर दिए मुझे लग रहा है। तो चल आशीष सर, तो ईडी सर को इनवाइट करते हैं हम। सर नाउ आई वुड लाइक चाहूंगा, ये आज हमारे नए NIDM के नए कैंपस में ट्री प्लांटेशन का एक प्रोग्राम चल रहा है। ओके, तो उसमें ईडी सर को जाना पड़ा है। ओके तो ओके हम रिक्वेस्ट करेंगे प्रोफेसर गुप्ता साहब से। जी सर बिल्कुल, बहुत बहुत कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें और प्रोग्राम का समापन। गुप्ता सर प्लीज conclude the program. It's a really very successful program today. थैंक यू। मैं वैसे इतनी बातें कर चुका हूं कि अब मुझे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो मैं अंत में सिर्फ यही बातें बोलूंगा कि आज का जो कार्यक्रम था वो, उसकी महत्ता बड़ी विशिष्ट है कि जैसे घर में सब कुछ जब आपके पास आ जाता है, मान लीजिए किचन में जब आप काम करते हैं तो आपके पास बहुत सारे सामान होते हैं, लैब में काम करते हैं तो आपके पास बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, रिएजेंट्स होते हैं, लेकिन उससे उस सब सारे रिएजेंट्स को मिला के उस प्रोसेस को एक सही दिशा में जाने की जो कला है और उस कला के पीछे जो विज्ञान है, वही है स्पिरिचुअलिटी। बेसिकली हमारे जीवन के जो तरह तरह के पहलू हैं,
हमारे जीवन में जो हमारा जो शरीर है उसके अंदर क्या है और बाहर क्या है, दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाना, जिसको हम कहते हैं आंतरिक वातावरण और बाहरी वातावरण, इनके बीच में जो सामंजस्य बिठाने वाली बात है, वही बेसिकली मैं स्पिरिचुअलिटी को रिलीजन से जोड़ के नहीं देखता और रिलीजन से जोड़ के बात नहीं करता। मैं उदाहरण भले उसमें लेके आऊं जो विभिन्न धर्मों के, धर्म ग्रंथों के या हमारे महापुरुषों के हों, लेकिन मैं स्पिरिचुअलिटी को एक विज्ञान मानता हूं और स्पिरिचुअलिटी एक विज्ञान है भी। और उसी को देखते हैं कि हम जब बात करते हैं, अगर हम जीव जगत की बात करें तो हमारा जो इवोल्यूशन है उसमें भी हम कहते हैं कि पहले जड़ होता है, जो निर्जीव चीजें होती हैं, निर्जीव चीजों के बाद जैसे ही कुछ लाइफ आती है लेकिन वो मूव नहीं कर सकती, तो वो हम कहते हैं कि वो जड़ है ना। जड़ और चेतन में अंतर करते हैं हम। तो कुछ एनिमल, कुछ जैसे प्लांट्स मूव नहीं कर सकते और एनिमल्स मूव करते हैं, तो वो एक इवोल्यूशन होता है। और चेतन के बाद होता है कि ठीक है, जो प्लांट्स या जो एनिमल्स मूव करते हैं उसमें भी सारे एक जैसे नहीं होते, वो कुछ होते हैं, लेकिन कुछ के अंदर एक थिंकिंग आ जाती है या मन जिसको कहते हैं। जो गाय होती है, मैमल्स होते हैं, फिशेस होते हैं, जो हमारा एवियन फ्लोरा फना होता है, जो पक्षी होते हैं, इनके अंदर मन भी आ जाता है। और मन के ऊपर फिर आता है आपका जो इंटेलेक्ट। तो ह्यूमन बीइंग सिर्फ अलग इसीलिए है कि ये निर्जीव, जड़, चेतन, मन और इसके ऊपर बुद्धि, ये बुद्धि तक हम पहुंच गए हैं, वो बड़ी बात है। तो बुद्धि तक पहुंचने का हमारा जो तात्पर्य है वो ये है कि अंदर के जो मनुष्य के अंदर क्या है और मनुष्य के बाहर क्या है, इन दोनों वातावरण के बीच में हम एक सही सामंजस्य बिठा लें, और वही मिडिल पाथ भी है, वही जो मध्यम मार्ग भी है। तो आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और मैं खुद बहुत कुछ सीख रहा था, बहुत कुछ सुन रहा था, एंड आई माई सेल्फ लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस प्रोग्राम। और बहुत अच्छे वक्तव्य हुए। और मैं अभी भी कहूंगा कि आप सोचिए इसको एक पूरा एक एफडीपी करने के लिए और अच्छे से इसको डिजाइन कर सकते हैं, एंड इट विल बी रियली ए ग्रेट सक्सेस। इसको और एडवर्टाइज करेंगे ताकि पूरे देश के लोग, बल्कि और कंटिनेंट के लोग, हमारे देश के बाहर के भी जो ज्वाइन कर सकते हैं वो भी ज्वाइन करें, एंड इट विल बी रियली वेरी ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी एंड आशीष पांडा जी। तो थैंक यू वेरी मच एंड माय कांग्रेचुलेशंस। वाइस चांसलर साहब का जो आपके जो इतना जो आपको गाइडेंस और पॉजिटिविटी है, दैट एक्चुअली ऑलवेज एनरिचेस मी। वो अगर 2 मिनट बोलें या 10 मिनट बोलें, दैट फ्यूल्स ऑल ऑफ अस विद एनर्जी। वो बहुत अच्छा लगता है मुझे सुन करके। बिल्कुल ही इज लाइक माय टीचर ऑल्सो। अब तो इतने दिनों से उनको सुन रहा हूँ, सो वी ऑलवेज गेट मोटिवेटेड बाय हिज थॉट्स। So thanks to all the senior officials of Invertis University also, and thanks to all the organizers, and thanks to all the participants who have shown patience, because अभी भी 75 से ज्यादा इसमें लोग दिख रहे हैं और 5 घंटे किसी को बोलेंगे कि 1.5 घंटे आना था, और 1.5 घंटे के बाद अगर कोई बहुत अच्छा पार्टी भी आप दे रहे हो तो इतनी देर कोई नहीं रुकता है ना। तो लोग इतनी देर रुके हैं, तो दैट शोज देयर पेशेंस एंड इंटरेस्ट इन दिस। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा अटेंड करके सर, कुछ सीखने को मिला। वी हैव गेन आवर नॉलेज सर, एंड स्पेशल थैंक्स फॉर ऑल सीनियर्स एंड ऑल रिस्पेक्टेड गाइस। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। हाँ बिल्कुल, हम लोगों को जो जिस तरीके का इसका रिस्पांस हमको मिला है, और 5 नहीं बल्कि 5 घंटे 40 मिनट हो गया, तो 20 ही मिनट बचा है 6 घंटे होने का, जो कि पूरे दिन का 1/4 होता है, तो 24 ही घंटे होता है इसमें। तो हम लोगों का जो रिस्पॉन्स है ना, हम एफडीपी बिल्कुल प्लान करेंगे। और आपने जो हमें सपोर्ट और गाइडेंस दिया है सर, और उससे हम लोगों ने जो सीखा है वो हम उसको अनवरत जारी रखना चाहेंगे। और नेट एंड लास्ट, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू our honorable chancellor sir, Dr. Umesh Gautam sir, and VC Avadhesh Sharma sir, and the inspiration executive director NIDM Manoj Kumar Bindal sir, who unfortunately is not with us at this moment, and hearing him and inspiring from him is always a great opportunity for all of us. And at last, I would like to thanks our program chair Anil Kumar Gupta sir, and our Dean Engineering Dr. R K Shukla sir, who always continuously motivate and also guide us in the difficult times. And many thanks to our invited esteemed speakers,
for providing such a thought-provoking session. We have Sanjay sir still with us, and he is not only participating and provide a very insightful session, but he also attended the full session for continuously. He provide us the inputs that he have gained through his vast experience, and also our distinguished participant for sparing their valuable time to participate and make this webinar सक्सेसफुल एंड अब एक ऐसी चीज़ बोलना जा रहा हूँ जिसका शायद बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं काफ़ी लोग, तो जो आपका ऑथराइज ई सर्टिफिकेशन है तो वो मैं आपको जो है फीडबैक फॉर्म जो है अभी आपको प्रोवाइड करूँगा, आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पर आपको फीडबैक मिल जाएगा एंड यू हैव टू फिल दैट फीडबैक फॉर्म एंड यू विल रिसीव द ऑथराइज ई सर्टिफिकेशन फॉर दैट. और एक और चीज़ है, ये चीज़ हमारे लास्ट एफडीपी का आउटकम है. जो हमने लास्ट एफडीपी बेसिक डिजास्टर मैनेजमेंट में किया था, तो उसमें हमारे पार्टिसिपेंट ने ही एक ऐसा हमें आइडिया दिया था कि हमने एक ग्रुप बनाना है जिसका नाम हमने रखा है डिजास्टर मैनेजमेंट कॉमरेड्स एंड चैम्पियंस, DMCC ग्रुप. तो ये एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसके अंदर सभी पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं हमारे से लास्ट वेबिनार के, और आज बहुत सारे लोग उनमें से अटेंड भी कर रहे हैं. और मैं जितने आज नए पार्टिसिपेंट हमारे साथ और डेलीगेट्स अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी वो लिंक भेजूंगा. मैं चाहूँगा कि वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उसका पार्ट बने, ताकि हम लगातार इस फील्ड में काम कर सकें. और इसी के साथ में अब इसको समाप्त करता हूँ और थैंक यू सो मच सभी का. आशीष सर. थैंक यू आशीष सर. थैंक यू संजय सर. थैंक यू सर. थैंक यू गुप्ता सर. सर. थैंक यू वेरी मच. अनिल सर बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत अच्छा बहुत लगा. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत अच्छा लगा. थैंक यू टू ऑल. और संजय सर. यस सर. थैंक यू. जी जी बहुत अच्छा आपका सेशन था. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू फॉर कमिंग. अवधेश सर थैंक यू. थैंक यू. I'm ending this session. Okay. Okay. Ashish sir, namaskar. Namaskar everyone.